jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Oh, why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to run. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, be faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking
but my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty. You've reached the police department's voicemail. Pay close attention as we update choices often as new and unusual circumstances arrive. Please select one of the following options. To whine about us not doing anything to solve a problem that you created, press 1. On the highest peaks I found the wind. Now, I let it clear my path. Welcome everyone to ROG Showdown series for Rainbow Six Siege. Today, ladies and gentlemen, today is the day of the grand finals. I cannot be more ecstatic for it. I am really happy. We've got the grand finals right up, and so far, looking at yesterday's matches and how they went, those were just the precursor. Today is the day where everything is decided. The team who takes home the cash prize, the team who goes home with the bragging rights, everything is going to be decided right here. I'm CCV, joined alongside Jax, but looks like unfortunately he's had some technical issue, so he won't be joining us for just a short while. But don't worry, for the match he'll be there. Everything is set. The entire stage is set for the grand finals of the Showdown series. We'll introduce the teams, we'll talk about the players as if we already don't know the players who played and gave an immense performance yesterday. But for now, let's take things slowly. Let's slowly and steadily introduce you to the entire tournament, to the entire series, if you don't already know about it. Starting off with the prize pool. That is a very luxurious prize pool that these players are playing for. We'll bring it up on screen as soon as possible. But yeah, a prize pool of 75,000 rupees. The winner right now, either, it's going to be high five or it's going to be a Katsuki. One of them taking home the first place prize of 50,000 rupees, and the runners up, because these teams have played so many matches. We'll go over through their matches as well later on, but because they've played so many matches in the grand finals, these teams have a bit of safety net. Even if whichever one of the teams loses, the good thing is they won't go home empty-handed. वो खाली हाथ घर नहीं जाएंगे. They'll still be taking home a cash prize of 25,000 rupees. And yeah, the journey to the grand finals, well, either one of these teams, both of them deserve 50,000 or 25,000. Now, एक ही सवाल है, which of the teams is going to be better? Which of the teams is going to be taking the major share pool out of this entire prize pool of 75k? I am really excited for it. Looking at the teams, Akatsuki high five, looking at their matches right now. What a journey it has been. Very, very quickly, I think we'll be able to have a look at the brackets as well. As if, yesterday, we didn't have a look at the brackets. We went over semifinals 1, semifinals 2, and it was a best of 3. Even though there were 3 maps, it could have gone to the deciders. The teams, they finished it pretty quickly. So in that best of 3, with the brackets being up as soon as possible, we can have a look. And the matches yesterday, man, both high five and Akatsuki,
they felt like they could not be stopped, and they certainly could not be stopped, I had to say. I mean, what an amazing four maps we saw yesterday. But overall, in the brackets, high five, they had faced off against Shattered Dreams. And unfortunately, well, as poetic as their name is, that was the thing that happened to them. Their dreams of moving into the championship finals and potentially winning the Showdown series, well, those dreams were shattered. Moving on to later on in yesterday, where in our second semi-final between Cohesion and Akatsuki, Cohesion as well, they had similar dreams of going into the championship finals, but unfortunately for their side, well, they could not make it. वो वापस से Akatsuki की side से हार गए and they were out of the tournament. So unfortunate for Shattered Dreams and Cohesion. We talked loads and loads about those teams yesterday. काफी हमने उनके बारे में बात की थी about their journey, what they can improve on, and hopefully we can see them better the next time we see them. And look who's better now that we can see him. Jax, how are you, my friend? Yep. No words, sorry. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे and today is the grand final. So as we were talking about the yesterday's match, both of the matches were मतलब इतना ज़्यादा action भरा नहीं था, but still on the second match between Cohesion and Akatsuki, we got to see some action on Villa. Still, I thought Cohesion would be back with some guns, but still Akatsuki was way better than them and they were a step ahead of them every time. So yeah, I think I'm just looking forward to कि आज का match कैसा होगा, क्या होगा, and कितने कैसे मैप्स होंगे, एंड आज कैफे चाहिए, आज कैफे बैंक सब चाहिए. वी नीड कोस्टलाइन, वी नीड कैफे, वी नीड बैंक, वी नीड एवरीथिंग टुडे, जस्ट बिकॉज यू नो ग्रैंड फाइनल्स, वी ऑल डिजर्व सम काइंड ऑफ एक्शन. ओके, एक्शन थोड़ा भी हो, ज्यादा भी हो, एक्शन चाहिए. that's what matters. Okay, so that's the match. बिल्कुल होगा because the amount, see, as we have always talked earlier, that दोनों टीम्स के प्लेयर्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, दे हैव प्लेड टुगेदर, दे हैव प्लेड विद ईच अदर, दे हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर, तो उनको सब, आई मीन, दे हैव एन आइडिया ऑफ हु एंड हाउ दे आर डीलिंग विद. सो या, आई थिंक इट वुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट सो फार. हाई फाइव वर्सेस Akatsuki, and yeah, I just can't believe we are starting the grand finals just today. Yeah, grand finals will be starting today. They will be ending today as well. One day, 5 maps for these teams to decide who is the winner and कौन हारेगा. Speaking of the teams की introduction कर लेते हैं. Let's introduce the high five lineup that we saw yesterday. All 5 of those players and you know their performances and all that. So let's go over them. So here it is in front of our screens. We've got the high five lineup. You know, like we had mentioned yesterday, Hussein, an amazing day he had. You know, he had tons of kills. I still remember the final round of the second map that High Five played against Shattered Dreams. Hussein had like a 4K or something, and then Taha stole it. So he could have had an ace, but overall, you know, ignoring that, Hussein had an amazing day, and all of these players in front of our screens as well. Avidvi next up, you know, being the MVP of the first map, that was of Chalet, even though he was playing support operators like Thermite and Frost, etc. He had an amazing play, tons of clutches from his side. I think we all still remember the 1v2 pistol clutch जो उन्होंने किया था बार गेमिंग के बॉम्ब साइड पे. Shinra, Vortex, these guys as well, consistent performances overall. No matter, you know, they were playing a lot of like in attack, they were playing Finca, they were playing Lion, you know, they had their nades, their utility usage was great as well, and all over good performance. And then obviously to our extreme right, we've got Taha, who switched up from multiple teams, and just like other players as well, switched off, you know, went to some other team. Now they've ended up in high five, and Taha as well. What an explosive day he had. I think he was semi-final 1's MVP in total, and semi-final 1 के अलावा भी बहुत ज़्यादा games खेले हैं high five ने. You know, they had previous matches they've played as well, and Jax, take us through, you know, their journey before the semi-finals as well. उससे पहले उन्होंने कौन-कौन से maps किन के against खेले हैं? Yep, absolutely. और फर्स्ट मैप दे प्लेड अगेंस्ट टीम विलियंस, वो भी ओरेगन पे. तो एक डिफरेंस है कि शैटर्ड ड्रीम्स के अगेंस्ट 7-1 विक्ट्री थी, टीम विलियंस के अगेंस्ट 7-4. तो कहीं ना कहीं वी आर सीइंग दैट दे हैड अ फाइट. सामने वाली टीम, आई मीन टीम विलियंस भी बहुत, वी ऑल नो हाउ टीम विलियंस आर, बहुत टाइम से खेल रहे हैं कॉम्पिटिटिव, वी नो हाउ द प्लेयर्स आर. सो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हुई, बट स्टिल 7-4 आउट ऑफ द विक्ट्री ऑन द ओरेगन. सेकंड क्वालिफायर्स दे प्लेड अगेंस्ट सेज एम्पायर, जो कि क्लब हाउस पे था. सो क्लब हाउस बहुत फेवरेट मैप कह सकते हैं शिनरा का, स्पेसिफिकली बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले ऑन दैट. मौजी खेलते हैं अच्छा, आई मीन ही प्लेज अ कपल ऑफ ऑपरेटर्स ऑन दैट मैप, एंड स्टिल
with that 7-4 victory same as Team Valiance. तो कल के जो जितने भी दोनों फाइनल मैच थे, that were against Shattered Dreams. जो पहला मैच था शैले पे था 7-1 and second was on Oregon 7-1. So I think Shattered Dreams भी काफी हद तक फाइट दे सकती थी, but still we all pointed out a number of mistakes from them. But again देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि they are मतलब उनका गन फाइट बहुत decent था. It was a decent gunfight, not too good, not too bad, but still they were somewhere along the lines of hi-fi. So I think we could have argued a lot of number of times for that matter, but still it's hi-fi who has came the winner out of that right now. Yeah, but today will High Five come out as the winner? That is the question to be asked. And the people who will play against them, that's going to be Akatsuki. Well, एक बार उनकी तरफ भी नजर डालते हैं. Let's have a look at their lineup and all the players in Akatsuki who perform magnificently, just like their opponents right now today. You know, every single player, Invi as well, Invi rhymes with Buck. You know, the operators they were playing, it was all too good. You know, their performances were looking quite well. Amar as well, I think he was the MVP of the first map. I think that map was also Chalet that Akatsuki had played against Cohesion. Wahan pe Amar just completely popped off. I mean, with the Iana, entry frag after entry frag, and no one could stop him. And then towards the right, you know, we've got Atharv and Suyu. Suyu always, you know, he was playing a lot of Twitch, and he managed to get a lot of, you know, gun power out of that. First of all, gun power out of the F2, and also great utility usage out of Twitch's ultimate, which is her drone, which now has the added ability, jo buff hua hai, that the Twitch drone can jump as well. So I'm sure Suyu will be able to find more use cases out of that today against their opponent's high five. But yeah, Akatsuki's roster, really looking forward to seeing them. MVP versus MVP ki jo fight ho sakti hai, which may be like Amar versus Starham, that certainly is going to be very interesting to see. But right now, looking at Akatsuki's previous matches, you know, in the seeding, they were seeded directly into the round of 8s. They didn't have to play their first match as a high five ne Valiants ke against khela tha. And so far, their matches have been quite consistent as well. 7-2's results all around. Villa pe do baar khela hai un logon ne, and dono baar Villa pe jeete hain. Now, if we have a look at high five, they have played twice on Oregon, and dono ke dono baar wo Oregon pe jeete hain. So if we do see the map of Villa and the map of Oregon, I think we can confidently say कि कौन सी team, you know, statistically वहाँ advantage पे है. But then again, Chalet is going to be like the main map जहाँ पे सब कुछ decide हो सकता है. कल हमने इन दोनों टीम्स को शाले पे खेलते हुए देखा, इन दोनों टीम्स को शाले पे जीतते हुए भी देखा. सो नाउ ऑनेस्टली आई होप इफ शाले इज द डिसाइडर मैप, अगर बेस्ट ऑफ 5 का डिसाइडर मैप हुआ, आई मीन दैट वुड बी द परफेक्ट एंड. बट या बिफोर द मैप्स एज वेल, वी कैन स्टिल गो ऑन एंड टॉक अबाउट द प्लेयर्स एंड द परफॉर्मेंसेस दे हैव हैड. आई मीन कल क्या केडीआर हो रही थी, देयर वाज अ केडी मेंटेनिंग ऑफ 8-3, yeah, double digits में जा रहे थे. Every single player had like really good KD, and now it's a matter of कि ये KD consistent रहेगी या नहीं. Will it stay consistent against new opponents, and will it stay consistent across so many maps? क्योंकि 5 maps हैं बेस्ट ऑफ 5 में, हमेशा एक फिजिकल फटीक का भी वही आ जाता है नजरिया कि 5 मैप खेलने के बाद how tired these players must get. But then again, they have to play it. They have been grinding for it, and they have to keep on grinding. So now let's see which will be the maps that they'll be playing. Jax map veto के बारे में हम देख ही लेते हैं कि कौन से maps खेले जाएंगे. Oof, the first pick from Hi-Fi would be Clubhouse. बैन यहाँ पे विला किया है. कोस्ट लाइन एज यू नो, देखो जब मैंने बोला तो कोस्ट लाइन आ गया, ठीक है, और जब मैंने बोला तो बैंक भी आ गया. ओके, दैट्स फाइन. नो कैफे. ओके, सो इट्स अ बैड डे फॉर मी फॉर नाउ. Akatsuki ने कैफे बैन किया, but they picked up coastline. Then again, Hi-Fi picked up Oregon as their favorite map. They all like to play on that. डिसाइडर जाता है Hi-Fi के पास जो है, सॉरी, Hi-Fi अटैक लेगी वहां पे बैंक. सो या वी वोंट बी एबल टू सी Chalet नाउ. Oh no, okay. My bad. It's totally my bad. The fourth map would be Chalet. मेरे दिमाग में इतना चल रहा है कि इतना Chalet देख लिया कि नहीं चाहिए, और Chalet नहीं चाहिए. Please make it cafe, but it cannot happen right now. Yeah. So yeah, map selection के बारे में I think Clubhouse could be going into the favor of Hi-Fi just because Shinra, Taha, everyone they have a very good record on this map for now. अगर आप उनकी टीम अगर आप पहले की टीम्स देखें जिनमें वो खेले हैं, चाहे वो अभी में भी देखें, कोई भी टूर्नामेंट में देख लीजिए, क्लब हाउस में उनका स्टार्ट अच्छा है.
अकात्सुकी का भी अच्छा है बट बहुत क्लोज जाके कभी कभी कॉन्टेस्ट हो जाता है. अगेन ऑन द सेकंड मैप आई बिलीव ताहा एंड शिंरा will might be able to make it happen, but still we all know how Invi likes to go aggressive out of the hookah balcony, out of the aqua balcony Yeah. in coastline. So yeah, I think it would be a really tough showdown on the map of coastline particularly. चाहे क्लब हाउस में मे बी आई थिंक हाईफाई का थोड़ा अपर हैंड होगा मे बी, बट स्टिल आई बिलीव क्लब जो कोर्स लाइन है वो अकासुकी के फेवर में जा सकता है. एंड अबाउट ओरेगन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट ओरेगन बिकॉज बोथ ऑफ द टीम्स हैव परफॉर्म वेल. हाईफाई की 7-1 विक्ट्री हुई है, कोहिजन आई एम सॉरी अकासुकी आई बिलीव 7-2 विक्ट्री हुई है ओरेगन पे. सो आई थिंक बहुत क्लोज कंपटीशन रहने वाला है खास करके ओरेगन पे. आई डोंट नो अबाउट क्लब हाउस बट द लास्ट मैप वुड बी आई एम सॉरी वन मोर मैप वुड बी शैले. सो शैले पे भी द सेम सिचुएशन, 7-1 ही जीते हैं दोनों के दोनों. तो शैले एंड ओरेगन वुड बी वन टफ हेल ऑफ अ कंपटीशन. बट या बैंक जिसका सीसीवी का पूरा दिल पूरा बैंक में आ चुका है. सो आई थिंक बैंक वुड बी वन मोर मैप. आई थिंक मैंने इन दोनों टीम्स के बीच में बैंक बहुत टाइम से नहीं देखा है. इफ यू आस्क मी, आई डोंट नो अबाउट सीसीवी बट स्टिल बैंक बहुत टाइम से आई हैव इसीलिए नहीं नॉट देखा. ऑब्जर्व बोथ ऑफ द टीम प्लेयर. या ओके, किसी ने भी नहीं देखा. ओके, लेट्स मेक दैट क्लियर टू. सो या आई थिंक बैंक के बारे में हम कोई ऐसे प्रेडिक्टिविटी नहीं दे सकते. शैले ओरेगन के बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि शायद ओवरटाइम में जाए. कोस्ट लाइन में आई एम फेवर्ड, आई विल फेवर अकात्सुकी अ बिट, बट आई थिंक ऑन क्लब हाउस इफ यू आस्क मी इट वुड बी हाई-फाई फॉर श्योर. Yeah, Clubhouse में I mean like early on जब हम map ban phase देखें cards it's high five जिनके थोड़ी सी like I can see a bit of advantage क्योंकि pick की बात नहीं है, in my eyes ban की बात है. उन्होंने directly विला का map ban कर दिया है. And हम अभी यही बात कर रहे थे कि अकात्सुकी 2 बार उन्होंने अभी विला खेला है ROG Showdown series में. Both of the times it was a comfortable 7-2 win. बट नाउ दैट्स गॉन आउट ऑफ द विंडो. वो जो विला का एक स्ट्रॉन्ग सूट उनका मैप हो सकता था अकात्सुकी का, वी वोंट बी सीइंग इट एट ऑल. उसकी जगह पहला मैप क्लब हाउस होने वाला है जहां पे येट अगेन काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, लाइक बार एंड स्टेज नाउ द बॉम्ब साइड एज इट इज कॉल्ड. काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है. आई डोंट थिंक अभी के लिए वहां पे लोग जाएंगे. आई स्टिल थिंक दैट राइट नाउ टीम्स विल स्टिल प्रेफर, अभी बहुत अर्ली है, जस्ट लाइक बैंक, जस्ट लाइक कोस्टलाइन में जो भी चेंजेस आए हैं, इट इज स्टिल अ लिटिल टू अर्ली टू कॉल कि टीम्स अभी से चेंजेस अडेप्ट कर लेंगे. इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल मोर टाइम बिफोर वी कैन सी दीज न्यू बॉम्ब साइट्स. बट ऑनेस्टली अगर मेरा इन जनरल ओपिनियन जानो, आई एम लविंग कोस्टलाइन एंड क्लब हाउस चेंजेस. व्हाट यूबीसॉफ्ट हैव डन हियर इज दैट जो 2 बॉम्ब साइट्स इन मैप्स पे बिल्कुल नहीं होती थी, मतलब और लगभग 0% पिक रेट इन competitive, they have tried to improve the bomb site so that defenders have more free range, and they can go for those more advanced strategies and those unpredictable plays कि kitchen जाने की जगह coastline पे penthouse जा सकते हैं with the DJ room extension. Yep. And then clubhouse पे भी instead of going to gym and bedroom we can go to first floor, and first floor में there's the hard floor as well, वो जो नीचे surface पे होता है. Yep. तो vertical play भी मुश्किल हो I सकता think- है, and that's what I love. But yeah. Yeah, I think Clubhouse का ये second time rework हो चुका है because first it used to be a different space. पहले cash अलग होता था and the bedroom used to be too different. So it's the second time it has been reworked. ठीक है, that's completely fine by me. But coastline का जो rework है वो that is one of the most good reworks. जो Windows है वो patch up की गई है. So I think coastline Velvet Shell से है, and after that I don't think any rework या कुछ displacement या कुछ हुआ गया उस map पे. So I think coastline would be way better favoring Akatsuki, but who knows, क्या बंदूक लेके आ जाए हाई-फाई किसी को पता नहीं है. एंड वी ऑल नो both of the teams play really unpredictable, खास करके हाई-फाई, because that unorthodox operator selections I don't really buy that, but still it makes them win every round as we saw in front of Shattered Dreams. अगर अकात्सुकी की बात करें तो चलो अनऑर्थोडॉक्स पिक भी नहीं करते, बट स्टिल इफ यू पिक दोस वनीला ऑपरेटर्स year 1 year 2 anything, they still manage to show up with that operators. So that's one of the best things from Akatsuki's side there.
Yeah, Akatsuki, high five. Both of these teams, I think they are ready. But before that, I'm hearing that the teams are unfortunately going through a bit of technical issue right now. कल भी हमने थोड़े बहुत देखे थे. I mean, दोनों Akatsuki and high five की तरफ से, there were a few player disconnections. So I think something similar is happening, because of which, unfortunately, we have to take a very, very short break. Again, I know everyone is excited for the grand finals. Trust me, I am just as much, if not more, excited than all of you, seeing these teams battle for the 75,000 cash prize. But for now, we have to take a short break. Don't worry, keep watching. There are plenty of amazing Asus Republic of Gamers and Asus Stuff Gaming products in store for us Yep. during the ad break. So if you're on the lookout for those, make sure you stick around, and obviously make sure you stick around for the matches as well. But till then, we'll be right back. Got him. Let's go. Got him. Let's go.
Let's go. Got him. Let's go. So, ladies and gentlemen, welcome back to Asus ROG Showdown Series for Rainbow Six Siege, जिसका आज है ग्रैंड फाइनल्स और हमारे साथ है हमेशा की तरह रियल सीसीबी भाई साहब। एंड ब्रेक में जो ROG का एड है वो एकदम टॉप नॉच है। आई लव दैट। Yeah. And the products, I have to say. वही, but another thing I love, Jax, products के अलावा ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के अलावा एसिस के अलावा
the matches, the teams, and the maps right in front of us. The stage is set. The players, they were going through some technical issues. I thank all of you for bearing with us right now. I'm sure you guys want to support your team. So if you're watching this on the Facebook stream right now, spam some hearts on the YouTube stream as well. Show some love for your teams, because we will be starting off this in any time possible. Within a matter of seconds, we should be live with map number 1 जो Clubhouse का होने वाला है. But just as a precursor to this map, I have to say, Jax, that इस map में I know these teams are neck and neck. हम यही बात करते आए हैं कि इससे पहले के जो भी matches High Five और Akatsuki ने खेले हैं, they've been a bit here and there. ये teams the comfortable wins हुई हैं, कभी-कभी 7-4, 7-5 scores गए हैं, but that's about it. Other than that, 7-1 कल High Five जीती थी दोनों के दोनों maps. Akatsuki भी 7-2 जीती थी. So by no margin were those close maps. आज के, however, are going to be anything but the same. They are going to be close. You will not be able to predict क्या हो सकता है. I am expecting at least एक बार तो हम overtime में जाएंगे. कौन से मैप में जाएंगे मैं नहीं जानता, but I can surely predict that overtime is a very, very real possibility, and it cannot be ignored. And these teams, these players cannot be ignored as well. So Clubhouse में जाने से पहले, Jax, I know changes के बारे में हमने बात की है मैप के. Plenty of stuff has gone down in that map. तो एक बार ऑपरेटर बैंस की बात करें. थैचर तो हो गई, वो तो अब तो 3 ऑपरेटर बैंस होते हैं रेनबो 6 में, 4 तो होते ही नहीं अब. थैचर चौथा खत्म. बट अदर देन थैचर, जिस तरीके से हमने इन टीम्स को देखा है, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? मे बी थैचर ना हो, मे बी मैवरिक हो जाए, just for the sake of not देखो bandit tricking at some extent you can prevent, you can evade the bandit tricking, लेकिन see you have Kali as your attacker. Kali भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि साउथ एशियन रीजन में काली का यूज बहुत होता है. आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव प्लेस. काली यूज होती है, मतलब इट्स नॉट लाइक कंसिस्टेंटली होती है, बट स्टिल वो ऊपर नीचे वो थोड़ा बहुत होता रहता है कि इट्स टोटली सिचुएशनल. व्हेन यू हैव थैचर एंड यू नीड वन मोर person to evade that bandit trick, that's Kali, of course. If Maverick is banned, अगर Maverick banned नहीं है तो Thatcher banned होगा, या तो Kali banned होगा, या तो Ace banned होगा. Because एक बार अगर थर्माइट का कैसा होता है, यू आर नॉट दैट मोबाइल व्हेन यू आर यूजिंग एस सरमा चार्जेस. आप एस के सरमा चार्जेस वजह से टुक फेंकते हो जस्ट लाइक अ बास्केटबॉल इन द रिंग, बट नो, लाइक थर्माइट चार्जेस आपको जाके प्लेस करना पड़ता है. यू आर वेरी वल्नरेबल इन केस अगर कोई रन आउट कर देगा, कुछ भी कर देगा, यू विल रियली वल्नरेबल. तो यहाँ पे थर्माइट बैन भी देखने मिल सकता है, एज भी देखने मिल सकता है, थैचर व्हाट नॉट. अगर जैकल बैन हुआ तो आई वुड बी रियली रियली सरप्राइज एट दैट सेकेंडरी अटैकर, बिकॉज नोमैड भी बैन करते हैं लोग. क्लब हाउस में जस्ट प्लेयर्स से कि नोमैड जैब्स लगाने के लिए बहुत जगह है, लेकिन एज अगर आप बात कर लें कि चलो you are protecting a flank coming from the bedroom and the kitchen if you are attacking the 2F cast side. So नीचे अगर आपको flank cover करना है तो बहुत सारी जगह है, because स्टेज के पास वाली जो सॉफ्ट वॉल है वो भी है. if defenders have an impact net, वो नीचे से घूम के जाके फिर से ऊपर आके स्टेज से आपको flank कर सकते हैं. you cannot just prevent each and every flank with air jab or claymores or anything for that matter. So I think attackers में यही होगा. डिफेंडर में would be the main thing, because अगर आप अटैक में हो तो आपको स्मोक बैन करना पड़ेगा, बिकॉज कल हमने आई थिंक 2 बार नहीं, एक ही बार स्मोक बैन देखा, वो भी आई थिंक शैले के मैप में स्मोक बैन देखा हमने अकात्सुकी की तरफ से. सो या not a very surprising thing, just because past के 3-4 महीने में लताम बहुत ज़्यादा स्मोक बैन कर रही थी after the 6th invitation, as we discussed earlier. We earlier had that conversation about that. So smoke बैन करना efficient होगा अगर आप अटैक कर रहे हो, क्योंकि you don't want that आपको वो प्लान देने वाला नहीं चाहिए, चाहे वो गोयो हो. फर्स्ट थिंग मेरे को एक और याद आ रही है कि क्लब हाउस में हमेशा आई थिंक क्वांटम G1 टीम थी पहले, बट अभी मंकी हंटर्स है. सो दे यूज्ड टू बैन गोयो ईच एंड एवरी टाइम they used to ban Goyo, because they know कितना इफेक्टिव होता है गोयो का शील्ड while planting और while anything. आपको एरिया डिनाइल करना है. अरुणी कैन ऑल्सो बी वन ऑपरेटर, बट उतना बैन रेट हमको देखने नहीं मिलता है. प्ले रेट उतना ज्यादा है, अरुणी का ज्यादा है, बिकॉज आपको एमओ वेस्ट नहीं करनी पड़ती. दैट वन पंच मेक्स इनफ रोटेशंस फॉर यू. सो या आई थिंक म्यूट भी बैन हो सकता है. कैसल आई डोंट थिंक बैन होगा, क्योंकि एक ही साइट है जहाँ पे वो एक्सटेंसिवली यूज होता है फॉर दैट SSG स्टार्ट. सो आई थिंक मीरा भी नहीं, मीरा बहुत
मीरा का चांस बहुत कम है. So yeah, I think these are the so far इतने ही बैंड्स बच सकते हैं. दूसरा बैन I cannot expect. शायद बैंडेड हो सकता है, केद भी हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. बैंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ऑपरेटर्स, एक लाइन लग जाती है डिफेंस में, अटैक में, कि कौन बैन होगा, हु विल बी बैन, हु विल नॉट बी बैन, हु विल प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सो आई थिंक सो फार दैट्स माय कमेंट अबाउट दैट. I have to agree with you. Anti-breachers and hard breach. I mean, Clubhouse is the one map जहाँ पे बहुत ज़्यादा hard breach होता है. And teams, they have their entire compositions, bans, everything revolving around hard breach. कभी-कभी Rainbow Six में होता है that hard breach सिर्फ एक supportive role होते हैं. एक overall composition में उन्हें equal हिस्सा मिलता है. It's like a 20% split. But mostly in Clubhouse we have seen triple hard breach attacks. Defense में mute, bandit दोनों देखने को मिलते हैं. अगर Cade unbanned है तो मतलब सारे के सारे राउंड्स में केड खेला जाएगा. देयर इज नो डिनाइंग दैट व्हाटसोएवर. देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस एंड सो मेनी वेरिएशंस ऑफ हार्ड ब्रीच. इम्पैक्ट ट्रिगिंग के बारे में भी हमने बात की. मैवरिक ऑब्वियसली इज देयर. यू हैव हार्ड ब्रीच सपोर्ट ऑपरेटर्स लाइक थैचर एंड काली, जिनके बारे में हम काफी कुछ कह रहे थे. सो इन क्लब हाउस इट ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड दैट. जो भी चेंजेस आए हैं क्लब हाउस में, I mean, एक change होने वाला था, which was going to be the construction wall change, which I believe has been reverted back. Construction wall पहले पूरी solid हुई थी थोड़े से time के लिए, but now it's back to how it was, and जो reinforce हो सकती है वापस से. So I have to say that yeah, all those changes, everything still revolves around hard breach. So let's have a look at which operators will be banned, and let's have a look at Clubhouse. Kafi time ho chuka hai, Jax. We will be jumping into the game. High five up against Akatsuki. Let's start the show. Let us start the grand finals. विद दैट लगता है एक प्रथा है कि जैसे ही एक मैच शुरू होता है एक प्लेयर लीव होना ही चाहिए, उसके बजाय मैच नहीं शुरू होगा. सो आई थिंक अनफॉर्चुनेट डिस्कनेक्ट, बट आई थिंक ही विल बी बैक रियली सून. सो या फर्स्ट बैन जैकल. सो आई एम सरप्राइज्ड राइट नाउ कि जैकल बैन हुआ है, वो भी अकात्सुकी की तरफ से. बट आई डोंट गेट दैट. आप डिफेंस में हो, आपको मैवरिक या थैचर उड़ाने की ज्यादा जरूरत है, बट यही काम हाईफाई ने कर दिया while they're on attack. So I don't know थैचर क्यों. थैचर के पास इतनी अच्छी यूटिलिटी, माना कि अभी गैजेट्स डिसेबल होते हैं आफ्टर ही हैज बीन नर्व्ड, बट स्टिल थैचर कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड आल्सो. Why eliminate him? And yeah, one more ban coming out from Hi-Fi, that will be Valkyrie. So Invi plays Valkyrie a lot. अथर्वा खेलते हैं यहाँ पे अकात्सुकी में. I think डॉक्टर भी बहुत खेलते हैं. So I think he is back for the match today. So yeah, maybe Valkyrie ban करके बहुत अच्छा किया. किचन में कैंप्स होते हैं, बाहर कैंप्स. So those black eyed camps can be really gambly. So yeah, and smoke as we all talked about. So हमने जितने भी बैंड डिस्कस किए उसमें से सिर्फ स्मोक, थैचर और जैकल हुआ. Valkyrie we did not discuss just because कि अभी इतना वायबल नहीं, Valkyrie इतनी भी वायबल नहीं है अभी के लिए. I'm just talking about this particular tournament, the way they have been playing. So yeah, I think मैप भी पहली बार आया. So yeah, Valkyrie makes a lot of sense, but what not makes sense is Jackal ban. मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, just because you could have banned Maverick. If you would have banned Maverick, but एक चीज थी, अगर वो Maverick बैन कर देते तो फिर शायद थैचर ना बैन होता. दैट वुड बी वन मोर थिंग. अगर जैकल भी बैन ना होता, अगर एस बैन होता, तो शायद थिंग्स और डिफिकल्ट हो जाती हाईफाई के लिए. बट स्टिल let's just head to the game and head to round one. For that, Hussein will switch that Ying into the Hibana, and Ash तहा लेंगे. Finally Ash देखने मिल रही है हमें. फिर से Ace पे लेंगे Vortex on the Sledge, Avid on the Thermite, Shin on Maverick, and yeah. So far for the attacking lineup. और defense की lineup की अगर हम बात करें तो Rhymes with Buck will take Vigil, my personal favorite on defense. Melusi वो भी favorite है. Atharva will be on the Kite. Doctor will be on the Mozzie. I love to see this man play because he has a lot of experience. बहुत अच्छा गन प्ले है इनका. Positioning अच्छी है. अगर ये IGL करें भी तो बहुत अच्छा करेंगे. Deathamar will be always the IGL, and he's playing mute. So yeah, I think बहुत अच्छा composition है यहाँ पे. So there's no Vamai, there's no Jaeger. So I don't think how will you be able to deal with those projectiles which will be coming from Maverick, from Sledge, from Ash, yeah, from Thermite for that matter. So yeah. I'm really looking forward to that. How will they counter that?
वही एक चीज़ है यहाँ पे that they have no utility denial of sorts. Area denial है, hard breach denial, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं Akatsuki के पास, but looks like right now that it's going to be high five who can start the process of hard breaching. And जैसा हम अभी कह रहे थे, hard breaching your compositions on Clubhouse they revolve around this. High five को example ले लेते हैं. 5 अटैकर्स में से 3 अटैकर्स उनके हार्ड ब्रीचर्स हैं. That's going to be Maverick, Thermite and Ace. Sledge and Ash as well, they can make those reinforced walls soft in case of that. So all of that is just showing how much High Five are prepared to breach any walls, breach hatches, walls, etc. etc. And hatches, walls की बात करें, अभी dirt की wall नहीं breach होगी. Rather, High Five are going for the entire map clear and the roam clear starting from second floor. So already, कुछ 50 सेकंड हो गए हैं एक्शन फेज में. We do see Mute being played by Amar on the second floor. अभी भी roam कर रहे हैं. And here you go. That is the opening kill from Doctor, getting rid of one of the 3 hard breachers. Hussein is gone and Doctor takes the first kill of this grand finals. So already High Five are down 1 person. Shinra looking to take a gunfight. Mozzie knows कि ज़्यादा aggressive नहीं होना है. डॉक्टर फिर भी वहीं पे है एंड नाउ ही फॉल्स बैक टू रेड हॉलवे बिकॉज डॉक्टर नोज मैन एडवांटेज है अकात्सुकी के पास. उन्होंने आधा एक्शन फेज यहाँ बर्बाद कर दिया हाई फाइव का एंड हाई फाइव डोंट हैव अ लॉट ऑफ मैप कंट्रोल. मैप कंट्रोल के नाम पे हाई फाइव वेल दे आर इन किचन, दे आर प्लानिंग द स्टार्ट ऑफ द किचन हैच एज वेल, बट स्टिल सो मच टाइम रिमेनिंग एंड सारे डिफेंडर्स भी सेकंड फ्लोर के आसपास है. सो ये जो प्लान है हाई फाइव का कि हम सीधा फर्स्ट फ्लोर को अटैक करेंगे थोड़ा सा डेंजरस एंड रिस्की हो सकता है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट लाइज अबव देम. नाउ वॉटेक्स इज रियली पिकिंग अप द पेस. ऑलरेडी वो आ चुके हैं सेकंड फ्लोर बेडरूम में. इज क्लियरिंग आउट द बार एंगल्स, क्लियरिंग आउट मेन हॉलवे. द डिफेंडर्स आर नॉट budging. Akatsuki बहुत smartly खेल रहे हैं. They know they've got the man advantage and that man advantage improves even further because the second hard breach is gone. Doctor with yet another headshot and look at Akatsuki. Look at how smartly they're playing. सारे के सारे वापस बॉम्ब साइट में आ गए हैं. रोटेशंस बॉम्ब साइट में बन गए हैं. They don't care. अब जो ब्रीच होना है हो जाए, जिसको आना है आ जाए क्योंकि अब बॉम्ब साइट में पांचों के पांचों डिफेंडर हैं एंड टाइम सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं हाई फाइव के पास. Akatsuki are taking it very smartly. Doctor gets a bit too aggressive after his first 2 kills, has to pay the price, but his teammates are there to cover for him. Buck and Invi get headshots each and आखिरी kill भी Rhymes with Buck को मिलेगा. Akatsuki take it very nicely and end up winning the round. Oh, what a play and what a power position from Rhymes with Buck there. हमने देखा changes में that the room of Moto has been expanded a little bit and with the vigil with the K1A beautiful headshots from his side and a beautiful round from Akatsuki. I really liked how strategically they were playing. सारे kills उनके favor में गए. जो opening 2 kill डॉक्टर ने लिए उसके बाद क्योंकि सारे के सारे defenders bomb site में rotate कर गए. I mean there was no stopping the defenders. A beautiful round overall and I'm really looking forward to seeing more of that. Right, so starting off with round number 2, now Akatsuki are going for a change. Instead of going to CCTV and cache, इस map की कह सकते हैं सबसे prominent bomb site है, arguably one of the 2 most big bomb sites in competition with Church and Arsenal. Instead of choosing that, they've gone for gym and bedroom. So yet again, they're trying something new, and I'm liking this from Akatsuki. Pre-match presentation में हम कह रहे थे how Akatsuki, they've I mean, all in general, we were seeing how Mira doesn't have that much of a play rate, and Castle का भी इस bomb site में and इस map में play rate आता है. So Invi is on the Mira, Atharv is on the Castle. पिछली बार कोई भी यूटिलिटी डिनाइल नहीं था Akatsuki का, इस बार डबल है. They've got Vamai and they've got Jaeger and finally Doctors on the Melusi. So again a well-rounded setup. Attack के setup की तरफ से कुछ change नहीं होगा. They've yet again got the same 3 hard breachers and the support players. I mean it's all the same for the side of High Five. बस Akatsuki ने यहाँ पे changes किए हैं and now let's see if there is any change in the results या वापस से Akatsuki एक और win लेंगे यहाँ पे. Right, so still Akatsuki are finishing up with their defenses and यहाँ पे Thermite
ब्रीच हो चुका है सीसीटीवी. डॉक्टर वाज जस्ट पीकिंग द एंगल, नाउ ही फॉल्स बैक एंड कैश में यहाँ पे रहना अब थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है. कैश हैज बीन दैट वन सिग्निफिकेंट एरिया जो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बट हाई फाइव आर स्टिल लुकिंग टू गो फॉर द रोम क्लियर्स. अभी भी वो सीसीटीवी की तरफ उनकी नज़र है. ब्रीच ऑब्वियसली उन्होंने किया है, थर्माइट का एक एक्सोथर्मिक चार्ज यूज़ किया है. एस का सेल्मा भी हम देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया इन ऑर्डर टू ट्राई एंड गेट अ लाइन ऑफ साइट इनसाइड ऑफ construction. In logistics office they are droning a lot, so a lot is going on from high five. Now we just need to see this information turn into kills. We just need to see this info getting in action. उन्होंने ड्रोन्स अपने इस्तेमाल कर लिए हैं, मैप कंट्रोल लिए जा रहे हैं वो, लेकिन इस सारे मैप कंट्रोल के बाद वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ प्ले. या नाउ दे हैव ब्रीच्ड जकूजी एज वेल. जकूजी खोल लिया, सीसीटीवी खोल लिया, बट नन ऑफ द डिफेंडर्स हैज डाइड एज ऑफ येट. अभी भी गन फाइट्स ज़्यादा नहीं हुई हैं. हाफ ऑफ द एक्शन फेज इज नाउ ओवर एंड अब जाके ओपनिंग गन फाइट होगी एंड इट्स गोइंग टू बी इन वी फ्रॉम Akatsuki ripping the head of Vidvi. So yet again High Five find themselves in the same position as they did in the previous round. दो man down हो गए हैं, Taha and Vidvi. Both of them have been eliminated and the same problems are rising right now. Time ज़्यादा नहीं बचा है. Vortex also falls and this feels like yet another round that Akatsuki will be taking for themselves. Here is a bit of fire back from High Five as Hussein enters the bomb site alongside Shinra. 2 kills उन्हें मिलेंगे but at the cost of Shinra falling to the hands of Rhymes with Buck, and the round now may be coming to an end as Hussein is the only person alive. यार मुझे ये पता था कि डॉक्टर मरीजों को ठीक कर देते, लेकिन इतना जल्दी ठीक नहीं करते जैसे फर्स्ट राउंड में डॉक्टर डिड दैट. बट स्टिल हुसैन इज द ओनली वन रिमेनिंग फॉर दिस राउंड इन अ 1 वर्सेस 3. टाइम इज रनिंग आउट, 30 सेकंड्स बचे हैं यहाँ पे एंड राइन्स विद बक अपने नाम के यहाँ पे ये करते हुए, लेकिन स्टिल ही माइट बी एबल टू गेट इट बट नो, डॉक्टर मिसेस इट. हुसैन की एचपी बहुत ज्यादा कम है एंड ही इज थ्रोइंग वन सलमा चार्ज ऑफ इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट वे, in order to get into the bathroom, but still Rhymes with Buck के पास है luck और उसके साथ हुसैन को खत्म किया है and they're asking for a pause right now. Still a very good round coming out from Akatsuki. Yeah, Akatsuki so far बहुत अच्छे से खेल रहे हैं. I mean nothing going wrong for their side. जो भी डिफेंस के लिए Akatsuki जा रहे हैं, they seem unstoppable right here. Like हमने चर्च आर्सेनल देख लिया, हमने जिम बेडरूम देख लिया and nothing has changed. It's the same way that they are attacking. High Five same तरीके से attack कर रहे हैं. They're going for the entire roam clear and they try to attack from so many angles. अभी जिम का अगर हम एग्जांपल ले, उन्होंने सीसीटीवी की मेन वॉल ब्रीच की, लॉजिस्टिक्स का हैच खोला, लॉजिस्टिक्स में ड्रोन भेजे उन्होंने, जकूजी वॉल ओपन की, फिर वो जकूजी के आगे जो मीरा वॉल होती है वो भी खोलने की कोशिश की. All of that happened, but unfortunately they still failed a little bit and that is the unfortunate thing right here that High Five gun fights उनकी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है. So that's the only thing we can say that High Five strategically दोनों teams बहुत sound है. I am still very impressed कि किस तरीके से Akatsuki ने round number 1 खेला था Church and Arsenal वाला, and now we see it. I didn't even notice. We see it. Cash and CCTV की जगह. Oh my God, the new meta है भाई. New meta है guys. Bar and stage. Oh. Okay, so this is going to be like this round in my eyes will be a VOD review. ये round I think all of us, it doesn't matter if you're a beginner or an advanced player, pay a lot of attention to this round and how the teams are playing right here. So ऊपर वाले floor में we can see that the pool room hatch has been opened. Jacuzzi alongside a bit of bathroom has been reinforced. So vertical extension हमें देखने को मिल सकता है. Thunderbird को भी introduce किया है. Deathhammer is playing a Thunderbird right now. So now It's just a matter of कि कैसे यहाँ पे डिफेंस होगा हाई फाइव का. वर्टिकली जब स्टॉक रूम की बॉम्ब साइट होती थी, हम लाउंज में भी एक्सटेंशन देख सकते थे, लाउंज गैराज की तरफ, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा शट ऑफ कर दिया है. अगर हम ये वुल्फ वाली एंट्रेंस देखें, लाउंज को देखें, अकात्सुकी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन भी बस यहाँ पे ऐसी फ्री रोम कर रहे हैं, यूटिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है. एंड इन भी गोज बैक टू द बॉम्ब साइट राइट नाउ. सो इट इज अप टू हाई फाइव एंड हाउ दे वांट टू अटैक राइट हियर. Yup. You can attack. Okay. I did not get this because it was a softball and Vortex could have taken care of it. वहाँ पे अपना एक सेल्मा चार्ज यूज करने की जरूरत नहीं थी, but maybe the attackers know that बार वाले साइट में ब्रीच करने लायक मतलब क्या ही हो सकता है.
I think there is nothing possibly एक या दो वॉल उससे ज्यादा नहीं हो सकती शर्मा के लिए बट ये वर्टेक्स के ड्रोन से निकल चुका है कि अथर्वा इज ऑन दैट बार एंड ही माइट बी एबल टू गेट ऑन टू थ्रो दैट ड्रोन लाइन का ही वनडी आते हुए अ नाइस स्ट्रेट कमिंग आउट फ्रॉम शिनरा एंड डॉक्टर और डॉक्टर ने तहा को मार दिया है जिसके तहत सो नो लायन स्कैन्स अवेलेबल टू यू एंड नो मोर मोजी पेस्ट फॉर यू सो दैट जो ड्रोन है वो आगे तो नहीं आ सकते वहाँ पे थंडरबर्ड का एक अच्छा सा हेल्थ स्टिम यही तो फायदा है लाइक यू डोंट हैव टू प्रैक्टिकली गो टुवर्ड्स द प्लेयर टू हेल्प हिम लाइक वेट करना पड़ता है कि वो कब आपको सिम शॉट देगा थंडरबर्ड की यूटिलिटी है ही ऐसी कि इफ यू जस्ट गो बियॉन्ड इफ यू जस्ट गो नियर दैट विल बी हील प्रीटी इजीली एंड एक कैसल बैरिकेड तोड़ने के लिए नेट्स डाला जा रहा है बहुत अच्छा है बिकॉज यू डोंट नीड टू जस्ट गो अप क्लोज क्योंकि वो नीचे जो छोटा गैप है उसकी मदद से दे कैन इजीली हिट यू एंड दैट्स एन ऑल्टरकेशन गोइंग ऑन बिटवीन कैसल एंड अभी भी आई बिलीव इट्स अ थर्माइट ऑन थंडरबर्ड का एक हेल्थ स्टेशन बर्बाद हो चुका है इट हैज बीन टोर्ड डाउन बट स्टिल बहुत प्रीफायर्स हो रही है टाइम कम है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इश्यू है हाईफाई का लेकिन अकात्सुकी ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे अथर्वा थोड़ा सा हेवी हेड पॉप हो जाता तो वो मर जाते हैं या ऐसे सिचुएशन में you don't need an ump if you are against the sledge. Fire at boss royal again. Hussein will take care of Invi. With that, Abhidvi misses slightly the head of someone. I believe it was Atharva. And Shinra एक अच्छा kill लेते हुए अथर्वा के ऊपर. Yet he was really low. But still, Shinra getting that kill. 35 सेकंड बचे यहाँ पे. Rhymes with Buck. यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा किल लेंगे हुसैन के ऊपर सो या नो मोर सलमा चार्जेस फॉर यू नो मोर स्मोक्स फॉर यू एंड नो मोर एके फॉर यू सो एक अच्छी गन आपने अटैक के साइड से निकाल दी है अभी भी दे नीड टू गो फॉर अ प्लान राइट अभी भी विल टेक डाउन डेथ अमर एंड अगेन वर्टेक्स विल टेक डाउन वन विद पक स्टिल विद दैट फर्स्ट रन कमिंग आउट इन द हैंड्स ऑफ हाई-फाई और हाई-फाई यहाँ पे आई थिंक मेन चीज़ क्या हो गलत हुई अकात्सुकी के लिए वाज दैट दे प्रिडिक्टेड वर्टिकल एक्सटेंशन हम राइम्स विद बक को म्यूट खेलते हुए देख सकते थे कंस्ट्रक्शन एंड कैश रूम के एरिया एंड ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट म्यूट जैमर्स थे अदर यूटिलिटी भी थी उनके साथ ही हैड द शॉटगन क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में काफ़ी अच्छा कर सकते थे बट हाई फाइव कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट जैसा पहले हाई फाइव खेल रहे थे रोम क्लियर के लिए हाई फाइव ने वैसा कुछ भी नहीं किया दे ट्राइड टू अटैक द बॉम्ब साइड डायरेक्टली वो वुल्फ में एंटर किए स्लेज ओपन दैट वुल्फ डोरवे उसके बाद स्टॉक रूम में घुसे स्टॉक रूम वाली वो जो वॉल होती है स्टेज को कनेक्ट करते हुए दैट वाज आल्सो ब्लोन अपार्ट शैटर्ड इनटू पीसेस एंड देन बॉम्ब साइट में पूरा का पूरा लाइन ऑफ साइट था हाई फाइव के पास एंड देयर वाज नॉट अ लॉट अकात्सुकी कैन डू अकात्सुकी के मेंबर्स एक बहुत ज्यादा वन डायरेक्शन में पुश हुए जा रहे थे एंड कोई भी फ्लैंक का जरिया नहीं था यू कैन नॉट फ्लैंक मेंबर्स हु आर इन स्टॉक रूम एंड लाउंज क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन नहीं है गैराज से नहीं भेज सकते राइम्स विद बक जैसे प्लेयर को बिकॉज दैट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज गन फाइट एंड इट्स नॉट एन आइडियल गन फाइट तो क्योंकि कोई फ्लैंक वहां पे पॉसिबल नहीं था अकात्सुकी वाज जस्ट बीइंग पुश्ड इनटू द बॉम्ब साइड मेंबर्स डायरेक्ट गन फाइट में जैक्स जैसा हाईलाइट किया यूएमपी नॉट दैट गुड व्हेन यू अगेंस्ट राइफल्स एंड एकेस एंड ऑल दैट नहीं काम की तब यूएमपी it also failed in a way and that meant that Akatsuki had to face their first defeat so थोड़ा सा experimental गए यहाँ पे they went for the new bomb side unfortunately for them it did not work out अभी भी क्लब हाउस जैसे मैप पे defender sided कह सकते हैं statistically Akatsuki are playing by that एक राउंड ही हारे हैं it's not that bad of a deal we are going back to the bomb site where we started on वापस से हम लोग चर्च एंड आर्सेनल में आ गए हैं जहाँ पे म्यूट एंड मॉजी सेम कॉम्बिनेशन आया है and I believe roughly same composition आया the only thing is Atharv right now is playing the castle instead of जो Cade खेल रहे थे पहले but yeah other than that everything looks the same and yet again Hi-Fi will also be doing the same thing of going for that roam clear Yep, the roam clear would be very efficient for now but यहाँ पे Thermite will be advancing off to open that jacuzzi wall over there and yeah Vigil knows that there is someone there और यहाँ पे mute jammer का फायदा okay there was a mute jammer there so how did that wall get open I have no idea about that but still one EE1D coming into action one EE1D has been expended कोई स्कैन नहीं होता यहाँ पे because the defenders have been saved still ends with Buck will get Shinra so no more आप कारीगिरी नहीं कर सकते अपनी टॉर्च से so yeah one breacher is off the board two nades are also off the board so you only have vertex leave left with that nades अथर्वा यहाँ पे UMP के साथ on that castle so I don't
particularly advise UMP on a very long range fight, but still, थोड़ा बहुत आप chance ले सकते. You can hide in a cheeky position, and Lion knows that there is someone. He knows that the vigil has rotated on to that bar, but still, Mozzie has done a really good job of warning that he's still there. You know, he's just playing like मैं आ सकता हूँ वहाँ पे, but मैं नहीं आ रहा हूँ. Lions with Buck will get his second kill onto Taha, और यहाँ पे easy kill ले लेंगे Lion पे. Death Hamar will be taking a kill onto Vortex. So Sledge is off the board. Avidwi and Hussein, they are the two guys who can make it happen for Hi-Fi. Still now 1 minute 2 seconds on the board. Avidwi will be dropping onto the hatch, but he still knows that it's not safe to drop on the hatch on that bar door. So yeah, I think they will be taking a lot of time for this. But 50 seconds में आप 2 versus 5 हैं. I don't think it can much can happen at this time. और यहाँ पे अपनी pre-fire देके अपनी position दे दी है कि he is in that cash room. So 35 seconds on the board still now. Death Hammer slightly risking his life, but he knows that there is thermite यहाँ पे construction में है, और ये गलत C4 and he gave away his position, but still somehow time waste कर रहे हैं. That's one of the most important things, and for a second I thought that was Death Hammer, and Avidwi will take a kill onto Death Hammer, जिसके मदद से 2 versus 4 हो जाता है. But 10 seconds में कुछ नहीं होगा. They just can go into the site and be crippled right now, and one more kill could be handed out, but still, is looking in the wrong direction. With the triple kill, and he might be able to get it with the quad kill, but still, NV यहाँ पे unfortunate team kill करेंगे, but still, Thermite ये round नहीं कर पाएंगे क्योंकि Akatsuki ने बहुत अच्छे से ये round को निकाला है. You know, we always talk about that trigger discipline which comes out from most of the teams that we saw with now Doctor. I think he could have taken a kill onto Taha, but he knew अगर ताहा पे किल मिल जाता तो शायद कहीं से कैसे या ऊपर से वो फ्लैंक हो जाते. So that's one of the most good things about Doctor and every other player like him who just chooses to be patience over time. Yeah, I have to say, काफी अच्छा round था. Trigger discipline was then. Trigger discipline then led to more and more time being wasted. I mean, एक यहाँ example अमर का ही होगा. How he was just there on the second floor, being contested left, right and center. हर कोई ने ढूंढना चाहता था SMG11 के साथ. वो CCTV में जा रहे थे, cash में जा रहे थे. Yes, towards the end he died. You know, he did not survive the round. लेकिन कितना ज़्यादा time waste किया. By the time High Five के सिर्फ 2 members alive थे, they only had 15 seconds and वो cash वाले room में थे. आप अगर if you're attacking the church and hostel bomb site with 15 seconds remaining in the round, you go and you are still in cash in CCTV. I mean, that is so much. And उसके बाद कुछ भी time नहीं बचा था. So Akatsuki are really liking this play of waste as much time as possible. अगर एक बंदा भी मर जाए काफी, I don't think they'll try to risk like 2 or 3 members. Max to max एक member को जाने देंगे, and that's the thing. That they are just very adamant on wasting time. उन्हें पता है कि हाई फाइव रोम क्लियर के लिए जाते हैं तो जितना ज़्यादा रोम क्लियर हो सके कर दो. डज नॉट मैटर मरे लोग ना मरे. स्पीकिंग ऑफ लोग मरने के बारे में, 13 सेकंड हुए हैं एक्शन फेज में. अथर्व ने शिनरा को मार दिया है. Maverick is gone, breaching the bomb site against a Cade will be very very difficult. अब नीचे से किसी को भेजना पड़ेगा CCTV की वॉल खोलने के लिए, because yeah, this is such an important kill. बहुत ही influential kill था यहाँ पे अथर्व की तरफ से, and yeah, his team and him would be very glad that kill has paid off for their side. काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छी साइट रिमॉडलिंग भी चल रही है. I mean, तब से हम मीरा की शॉटगन सुने जा रहे हैं. And yeah, it looks like now Akatsuki are ready to play this round. Now they're ready with their guns. High Five are also ready. Garage उन्होंने खोल के रखा है, but still not a lot of information right now. अभी भी cash की तरफ देख रहे हैं, सारे angles check कर रहे हैं. We can see where the defenders are, all the angles that they are holding, and yet High Five are not looking to attack it anytime soon. Yep. With that, execute यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है. And did you see that Ash जो यहाँ पे था खेल रहे, उन्होंने G360 लिए. So you can understand that छोटा nerf प्लेस को कितना ऐसा अंदर से ऐसा ये कर देता है कि they cannot use that R4C, which is the favorite gun of Ash Mace over there. Thermite will be putting his exothermic charge in order to get that wall open. और यहाँ पे अमर बस वेट कर रहे हैं कि वो कैनिस्टर कब नॉर्मल होगा, and he will be able to shoot it again and activate the. Ooh. Okay. Try it. You can do it. कर सकते हैं. एक और बार. But still,
in just making that happen, he did not realize that Sledge यहाँ पे अंदर आ चुके थे. Envy is spraying all of his mag onto someone who is into the cache, and it's only Jaeger who is into the side right now. Vidvi यहाँ पे रेड सेस पे जाते हुए गराज में आ चुके हैं. Vidvi will take down Noise with fuck. हुसैन यहाँ पे रेतमार को ले लेंगे और यहाँ पे साइड में आ चुके हैं. एक्सिक्यूशन की बारी आएगी, बट स्टिल जिसके पास डिफ्यूजर है उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है. एंड यहाँ पे C4 भी है. इट्स अ प्री प्लेस C4 आई बिलीव, एंड आई थिंक इन वीक का होगा या तो. ओह, ही न्यू दैट इट वाज गोइंग टू हैपन, एंड it's only a VP remaining in a 1 versus 2. I don't think it can happen just because, but still he will get Envy. तो यहाँ पे एक गैम्बल जरूर खेला है, लेकिन फ्री फायर देके क्यों बताना है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे आके मारो. बट अविद्वी की एचपी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है. 20 एचपी आई थिंक, बिलो देन 20 रिमेनिंग फॉर देम. डॉक्टर यहाँ पे 100 पे है, एंड वी ऑल नो हाउ डॉक्टर हिट्स हिज शॉट्स वेरी परफेक्टली. तो यहाँ पे शायद कैश में ही प्लान करना पड़ सकता है. आई एम सॉरी, सीसीटीवी में प्लान करना बन सकता है. और यहाँ पे देख लिया है कि वो प्लान के लिए जाएंगे. 10 सेकंड है. ही विल जस्ट बेट इट आउट द प्लान, बट नो, ही इज टेकिंग इट. 2 सेकंड बचे हैं. 1 सेकंड will he able to make it? He makes it. 45 seconds to the defuse, and it's a cat and mouse gameplay right now. But still, डॉक्टर बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे पंच मार दिया है. One punch man, डॉक्टर, and he will get that diffuser with ease. That makes it 1-4 on the board for Akatsuki. कात्सुकी बहुत क्लोज राउंड था. आई थिंक हाई फाइव रियली कॉट देम ऑफ गार्ड, जो उन्होंने एकदम बॉम्ब साइट रश कर दिया. सून एज थर्माइट ने सीसीटीवी की वॉल ब्रीच की, सारे के सारे लोग घुस गए. एक जो हमारी तरफ से डिस्ट्रैक्शन था वो आई थिंक दैट वाज वॉटेक्स स्लेज, जो सीसीटीवी विंडो से एंटर किए थे, एंड हम देख रहे थे पर्सपेक्टिव डेथ मार का जो वो गन फाइट ले रहे थे उनके अगेंस्ट. लेकिन उस गन फाइट के चक्कर में एवरी अदर अटैकर एंटर्ड फ्रॉम द मेन ब्रीच. दे टुक साइड कंट्रोल. जो भी साइड के आसपास डिफेंडर्स थे सबको मार दिया. एक स्मार्ट प्ले किया था इनवी ने. ही रियलाइज कि कंस्ट्रक्शन में 2 मेंबर्स हैं. वो खुद तो थे ही, बट देन अगेन देयर वाज आई बिलीव राइम्स विद बक एज वेल, हु वाज प्लेइंग द मेलूसी, हु वाज आल्सो देयर. तो उन्हें पता था कि 2 लोग कंस्ट्रक्शन में बैठ के देयर वाज नो पॉइंट, सो ही रोटेटेड. ही ड्रॉप डाउन द कंस्ट्रक्शन हैच, लाउंज में गए, C4 प्री प्लेस किया, एंड देन लाउंज में ही खेलते रहे. एंड देन जिस भी तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन कॉल मिला था दैट वन ऑफ द मेंबर्स वाज राइट नेक्स्ट टू द C4, वेदर इट वाज फ्रॉम अ कैम या फुटस्टेप्स आ गए और जो भी हुआ, दैट वाज अ ग्रेट कॉल. I think एक चीज I really I don't know what handed out that कि C4 वहाँ पे प्लेस था. ये बात I think वर्टेक्स को पता थी. वर्टेक्स या हुसैन, I don't know who was that. I think it was Hussein. तो हुसैन को पता था. Maybe he suspected that मीरा का C4 हो सकता है वो, या किसी और का हो सकता है जो मर गया हो. So maybe ये एक तरह का बेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी वहाँ पे, जिसकी वजह से हुसैन का किल मिल गया. बट स्टिल अ नाइस ट्राई कमिंग आउट फ्रॉम अवीरवी राइट देयर. वो एक किल जो इनवी पे निकाला वो बहुत अच्छा था, क्योंकि इनवी डॉक्टर दे आल्सो हैव प्लेड टुगेदर, प्लेड अगेंस्ट ईच अदर. तो यहाँ पे अभी तो साथ में खेल रहे, तो उनको पता है क्रॉस फायर्स कैसे होनी चाहिए, व्हाट द कम्युनिकेशन शुड बी, कहाँ क्या करना चाहिए. दे इजीली नो दैट. सो या आई थिंक दैट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट. बट स्टिल अ वेरी नाइस ट्राई कमिंग आउट फ्रॉम अवीदवी. और यहाँ पे बेडरूम और जिम डिफेंस है. सो या वी आर सीइंग दैट मीरा अगेन. आई थिंक एक टाइम था जब मीरा यहाँ पे बहुत यूज की जाती थी, बहुत. आई थिंक इट वाज way before a year, but still यहाँ पे फ्री फायर्स हो रही है. 1 साल पहले मीरा यहाँ पे बहुत यूज होती थी. बीच में उसका पिक रेट बहुत ज्यादा कम हो गया था. आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल again on the bedroom gym defense people tend to use Mira and Castle more just because आपको एक easy way मिल जाता है जिसके तहत आप easily देख सकते हो यहाँ से वहाँ. So you don't need to practically go and peek onto that half, but still 2 minutes 12 seconds, still no body coming out from either of the teams. Exothermic charge placed in place, and the wall has been broken now. But Surya get डॉक्टर यहाँ पे बहुत अच्छी दवाई दे दी है डॉक्टर ने अवीरवी भैया को. एंड आई थिंक एक और अल्टरकेशन हुआ जिसकी वजह से शिनरा हैज लॉस्ट हिज एचपी. लॉर्ड डॉक्टर ने भी थोड़ा बहुत सहा है, लेकिन शिनरा के साइड पे डैमेज ज्यादा हुआ है. या C4 भी क्रॉस किया जाएगा. Doesn't damage anyone, just blast. तो अभी के लिए इनवी इज गेटिंग प्रीटी अग्रेसिव. अथर्व एज वेल फ्रॉम द कॉरिडोर यूएमपी के साथ शॉट्स लेंगे एंड 2 शॉट्स कनेक्ट. सो एक और बार हम देख सकते हैं हाई फाइव की सेम प्रॉब्लम वापस से उभरते हुए, दैट दे हैव लॉस्ट फार टू मेनी पीपल फार टू अर्ली. लुक एट डॉक्टर with the P10 Ronnie. He does not have any issues going against an Ash with a G36, going up against his ex-teammate Taha, just in a free
like in a free gunfight without any consequences whatsoever. Kyunki Akatsuki ko pata hai that they're at the advantage right here. No one can defeat them in this round because of the sheer man advantage and the positional advantage that they have. Shinra and Vortex की बात करें, Shinra is all alone in the Jacuzzi breach. 25 HP hai, and Invi just pops out of the doorway. He peeks, pre-fire, shoots, and gets the kill very easily. Vortex, however, has been having a silent day, and I'm not just saying silent day because वो crouch कर रहे हैं. I'm also saying that because so far in 5 rounds only has 1 kill right now, so not the best in terms of the amount of kills he has. But look at what is Akatsuki doing? They're just pushing him. And one trade, they get it. Yes, he gets the headshot onto Deathhammer, but Akatsuki don't care. They end this half 5-1 lead. बहुत ज़्यादा यहाँ पे Akatsuki के फेवर में जा रहा है. High 5 at the moment, struggling a little bit. Hopefully, क्योंकि अब हम इसमें आएंगे, क्योंकि अब हम आएंगे Akatsuki के attack में, and High 5 will start defending, then things may be good. But the one thing that needs to happen is High 5 को early gunfight लेनी पड़ेगी. 6 rounds हुए हैं Jax. In all 6 of the rounds, the team who got the opening kill has been Akatsuki. Does not matter if it is Doctor, Invi, rhymes with Bakyat Thar. That the player does not matter. What matters is trades bhi ho rahe hain, but Akatsuki is going for those early frags, and that is the thing High 5 need to change. हमारी पहली बॉम्ब साइट होने वाली है जिम इन बेडरूम की, एंड लेट्स जंप इन लुकिंग एट द कॉम्पोजिशन ऑफ मीरा, वमाई, अरुणी एंड येगर्स. प्रीटी बैलेंस्ड आउट. अटैक के साइड में भी 2 हार्ड ब्रीचर्स ही हैं, नो थर्माइट, नो एस. रादर इट्स गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ हैचेस हिबाना alongside Maverick for the hard breaching. Yep. With that prep phase यहाँ पे शुरू हो चुका है. They are prepping up everything. I think एक चीज CCV ने जो मैच के पहले बोला था कि construction wall was hard for some time. I think it was a really good balance बोल सकते हैं. nerf bug आपको जो बोलना बोल सकते हैं. But I think कंस्ट्रक्शन की जो एक वॉल है वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप बैंडेड ट्रिक करने भी जाओगे तो शायद जिम कंस्ट्रक्शन की जो विंडो है वहां से पिट सकते हो, या अगर आपका बेडरूम का कोई फ्लैंक नहीं देखा है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल कैश एंड सीसीटीवी डिफेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बेडरूम डिफेंस. सो आई एम जस्ट सेइंग जनरली कि वो बैलेंस थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे पुल्ड इट बैक दो. एंड हिबाना अपने 4 पैलेट्स यूज करेगी उस कंस्ट्रक्शन वॉल पे जस्ट टू मेक श्योर दैट नोबडी इज स्टिकिंग एंड देयर इज नो इलेक्ट्रीफाइंग ओवर देयर. सो यहाँ पे ब्रीच डिनाइल के लिए एक ही ऑपरेटर है जो कि म्यूट है, एंड मीरा ओवर हियर मेकिंग ऑल ऑफ द एडजस्टमेंट्स फॉर दैट. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो सूर्य गैजेट एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ. I don't know why that happened, but still, they're running with the garage to make sure that there is no one either coming for the flank. Actually, it's too early for giving a flank from garage, but still, we just have to look out to each and every angle. इन भी यहाँ पे अपना बक के skeleton की के जरिए थोड़ा बहुत line of sight बना देंगे, and बक इस situation में बहुत ज़्यादा अच्छा, but they do not know that Taha is down on the first floor. So if they do not manage to clear Taha out of there, he can be a nightmare for them as used, because यहाँ पे High 5 बहुत ज़्यादा desperate है. So they need a win right there. First of all, I thought that he was a teammate, but no, what a nice shot coming out from Doctor into Shinra. First of all, मुझे लगा कि वो Doctor के teammate है, but then again, it was a blue outline, so I knew that it was on the defensive side. But yeah, nevertheless, yep, please go on. No, मेरे को लगा. Bro, this is not Rainbow Six. Why are they just pushing in his crosshairs? That is another kill for Vidvi before he has been traded out. अभी High 5 में 2 members बच रहे हैं, pretty isolated. एक main stairs में and अकेली मीरा हुसैन यहाँ पे logistics में खेल रहे हैं, just holding that angle without the black mirror anymore. So Deathhammer, I don't know, he does not have his nades left anymore. नहीं तो वो नेड करने का ट्राई कर सकते थे. But look at Taha as well. So right now gunfights are very important for Katsuki. They have a bit of time remaining and they take the gunfight, but it does not work out. Hussein को एक और kill मिलेगा. The members of Akatsuki are just going into their crosshairs. They're just pushing into all these angles. Coordinated push बिल्कुल नहीं था वो वहाँ पे. 1 second के लिए अथर्व आए, उसके बाद दूसरे ने पीक किया. I mean, that wasn't together. And now Deathhammer is all alone. We have seen tons of Deathhammer Iana clutches yesterday.
when they were playing on the map of Chalet. लेकिन अब एक दूसरा ही situation आ जाता है. So he'll be taking gunfights and ऐसे double peak होता है. Look at that, right and left together, leaving no space for the Iana whatsoever and leading to Iana's death. That is not what Akatsuki did. You know, बहुत ज़्यादा isolated push किया. Start काफी अच्छा था Akatsuki का, like a 5 versus 3, that was really good. But then what happened? जैसा आपने कहा कि Vamai push कर रहे थे and all that was happening, I was going to say this is not Rainbow Six Siege. This is like Five Nights at Freddy's. मैं कोई horror game खेल रहा हूँ यहाँ पे. Everyone is just popping out of rooms, corners, windows, कहीं से भी आ जा रहे हैं, कुछ भी मतलब कर रहे हैं. It was a very confusing round in Akatsuki. They've got to realize कि नहीं, सीधा push नहीं कर सकते. You have a very comfortable 5-1 lead, 5-2 हो चुकी है. So make sure you just win another single round and match point ले लो आराम से. नहीं तो I have no clue what may happen next. I think those two shots were really good coming out from Avidvi, especially with that SMG-11. SMG-11 का भी यहाँ पे recoil का कुछ किया गया था, but still I don't correctly know what is that. But still यहाँ पे जो दोनों shots थे, I believe first was on Rhymes with Buck and another one was on Doctor. So यहाँ पे दोनों के shots बहुत ज़्यादा crispy थे, but again he got traded out very early and it left nothing to clutch it out for Death Hammer. But still बहुत अच्छा try है यहाँ पे. 2-5 है, ज़्यादा कुछ नहीं है. 3 राउंड का deficit है. They can make it happen. Earlier in the pre-match presentation, we were just talking about how this map would favor Hi-Fi, but again अभी का जो play style है वो देखते लग रहा है कि Akatsuki के favor में कुछ ज़्यादा ही जा रहा है ये. And yeah, I think ये चीज थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा Hi-Fi को भी, because you know if after this map they do not win coastline, अगर वो coastline नहीं जीते तो pressure उनके ऊपर ज्यादा आ जाएगा, because you know Akatsuki would be the one who might be taking 2 of the maps, but अभी भी पता नहीं, because you know comebacks can happen. We have seen a lot of comebacks right now. Maverick अपना काम करते हुए यहाँ पे कलाकारी दिखाएंगे, थोड़ी बहुत जो साइड की रीमेक है वो करेंगे. बट आई थिंक एक मैवरिक प्लेयर है जो ही इज रियली वल्नरेबल, बिकॉज यू नो नोबडी नोस कि दूसरे साइड से C4 कैसे आ जाएगा. आउच, वर्टेक्स टेकिंग अ लॉट ऑफ बीटिंग फ्रॉम समवन. आई डोंट नो हु वाज दैट, बट स्टिल आई डोंट थिंक देयर वाज अ नीड टू पीक if the construction wall is open or if the window is open. Zofia will now open that wall completely, which will make the partial breach very open, and he knows shadow दिख रही है यहाँ पे, परछाई दिख रही है, so he knows Buck यहाँ पे आ चुके हैं. Death Hammer playing that soft breacher role. He's in the bedroom and he's trying to pressure each and every angle. So यहाँ पे दोनों साइड से प्रेशर हो रहा है, ब्रीच से भी हो रहा है एंड बेडरूम से भी हो रहा है. So I think they might be able to just have it, but Hi-Fi को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा यार. Absolutely, Hi-Fi, we got to make sure ज़्यादा overpeak ना करे. You mentioned Vortex's HP and yeah, you know एक kill बहुत भारी पड़ सकता है यहाँ पे. Akatsuki are just putting on the pressure. वो weights डाले जा रहे हैं and it is going to come to a breaking point. And कौन सी team यहाँ पे break करेगी? That is the question. Either it's going to be Akatsuki or it's going to be Hi-Fi. Both of these teams still have all 5 of their members, so we are not completely sure. Doctor here gathers some information कि Melusi वहीं अभी भी corner में है. They are looking. The nades are going off. Still a minute and 15 on the clock. Akatsuki are ready to take the gunfights right now. However, it's going to be Hi-Fi delivering the head of Amar right at their feet by taking him off the board. However, Akatsuki are not going to calm down. They reply 2 folds with 2 more headshots. Doctor and Invi, Atharv as well joining the action. Akatsuki at the moment are looking like the stronger team. Shinra, the only person with a lot of HP. He has the job of holding down the bomb side for a lot more seconds, 45 seconds to be exact. Vortex also doing his best to help out with the little amount of HP that he has remaining. The crossfires are being maintained from the defenders, but the attackers are ready to execute. Flashes are coming in. The positions are not the best, but the gunfights are far better of Hi-Fi. Rhymes with Buck has been down. Athar completely eliminated. Invi inside of Cash all alone, surrounded by defenders. Vortex circles around him. He is looking to take the gunfight with the MG. He peeks, he sees, he shoots, but he cannot win. Hi-Fi take the round for themselves. They were at a losing position, but they still managed to snag the win. Yep, a very nice sound coming out from Hi-Fi. You know, I talked about having patience, and that's what they had. I think एक चीज stand out थी कि I think Abhidvi knew
he was playing the Vamai. He knew that there is still someone on the breach, and it was Atharva. He was holding till the last angle because अगर आप पीछे से कंस्ट्रक्शन से एक्सिक्यूट कर रहे हो तो देर आर you can be sure that there are players in CCTV or in garage who might try to flank you. So holding that breach was pretty efficient, but again दो जनों की क्रॉसफायर थी, एक था रेड स्टेयर्स पे एंड वन वाज ऑन गैराज. सो अथर्व कुड नॉट हैव डन मच. हाँ, एक चीज हो सकती थी कि वो पीक बेट आउट कर सकते थे, बट टाइम भी उतना नहीं बचा था. आई बिलीव इट वाज 27 or 37 seconds on the board, and till then Atharva was turned into ashes, and it was only Invi flushed it out. Rhymes with Buck भी यहाँ पे बहुत I think he was down. It was a 1 versus 2 after all. So yeah, I think कात्सुकी की तरफ से थोड़ी बहुत गलती हो रही है, बट 2 राउंड्स है आपके पास, अभी भी 2 राउंड्स है. It's not the end of the world. वैसे भी बेस्ट ऑफ 5 है. A lot of competitive integrity over here. एक आपके पास 3 मैप है खुद को प्रूव करने के लिए. So apologies. So एक मैप अगर आप हार जाते हो तो you should not down your morale. But as usual, we are speaking. Both of these teams have been on an international level. So yeah, I think one more defense coming out. I think it's a basement defense right now. Goyo is in play, and how much I love to see Goyo on the map of Showdown, just because the amount of utility he has and the gun he has. So बहुत अच्छा है यहाँ पे Goyo लेना. Vortex ने यहाँ पे switch off किया. He took the Jaeger in the last round, but now he's taken the Kai with the more support role in order to do that. Taha will take down Jaeger Hussain with that Mira. So Mira Hussain, a nice name though, but still 2 minutes 37 seconds. अभी तक थोड़ा बहुत setup जो है वो चल रहा है. And by the way, attackers have already made their way into the map. I think it's Invi who is on that cache, or who is inside cache. So yeah. Oh, church wall यहाँ पे reinforce नहीं हुई है. So the late reinforcing can prove really fatal. But कभी-कभी चलता है, हो जाता है. Prep is so long, prep takes so long. You cannot just forget to do everything. But still, देखते हैं अटैकर्स का एक्सिक्यूट क्या होगा, बिकॉज अगर एक बॉडी नहीं निकली अटैकर्स के साइड से ऑन टू द डिफेंडर साइड, आई डोंट थिंक दे माइट बी एबल टू जस्ट मेक एन एक्सिक्यूट ओवर टू द बेसमेंट साइड, बिकॉज पांचों के पांचों अगर प्लेयर साइड में है तो इट वुड बी वेरी हार्ड until and unless you push from every angle. That's what they have to make use. भाई हमने उसमें भी देखा था राउंड नंबर 1 में कि कैसे अकात्सुकी के मेंबर्स अर्ली किल्स लेके सारे के सारे वापस चर्च आर्सेनल में चले गए थे. ऐसा यहाँ पे वापस हो सकता है. सो इसलिए हाई फाइव, they've got to make sure that everyone stays alive. फ्रैग ग्रेनेड फेंका जाएगा, गुड प्लेसमेंट. ओ doesn't tag any of the defenders. They come back out of it scotch free. कोई भी HP damage नहीं हुआ है. Taha looking to take the initial gunfight. Attackers push कर रहे हैं. They're pushing the limits of the HP of these defenders. Vortex yet again. Taha as well. Both of these lads have been tagged. An opening kill मिलेगा Thurfo as he dispatches the Jaeger. So blue room में entrance हो गई है attackers की. हुसैन को देख सकते हैं. He spots him. He cannot shoot him right now. अभी पीछे से एंगल लेके मारने का ट्राई करेंगे. फ्रैग ग्रेनेड्स आ रहे हैं. गन फाइट्स भी बहुत जल्दी आ सकती हैं. हाई फाइव आर रेडी टू टैकल द मेंबर्स हेड ऑन. वेरी नाइस C4 राइट देयर फ्रॉम अविद्वी ओवर द चर्च वॉल. मीरा विंडो विल बी ब्रोकन टू क्रिएट अ क्रॉस फायर, एंड यहाँ पे अटैकर को निकलना पड़ेगा. ही रियलाइज देयर इज टू मच प्रेशर राइट देयर, सो मेनी क्रॉस फायर्स, ही कुड नॉट डील विद ऑल दैट. सो ही वेंट अवे from the blue room, from generator room, and now Akatsuki are planning in armory take. Armory की hatch उन्होंने खोल दिया है. I think dirt में भी वो enter करना चाहते हैं. Deathmar is right here behind the generator. He takes the gunfight, but the crosshair placement. Yeah, the crosshair placement is long. Dirt and hatch से काफी pushes आ रहे हैं. Look at Hussein. Look at how low he is. Atharv with another headshot. Rhymes with Buck pushing inside of dirt. Push आने वाला है Akatsuki की तरफ से. 14 seconds remaining. Buck spots a couple of players looking to take the gunfights. He pushes head on. एक kill मिलेगा. Avidvi Hussain with the trades, and now Atharv is all alone, and Avidvi finishes the job. High five. एक और राउंड उन्हें मिलता हुआ 5-1 के स्कोर से 5-4 कर दिया है, maintaining a winning streak on defense right now. These guys cannot be defeated at the moment. कोई तरीका नहीं है. Akatsuki सब कुछ ट्राई कर रहे हैं. तीनों के तीनों बॉम्ब साइट्स हाई फाइव चले गए हैं, एंड तीनों बार वो जीते हैं. जिम बेडरूम की एक बॉम्ब साइट थी जहां पे Akatsuki बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे. 5v3 हो गया था, लेकिन उसके बाद Akatsuki ने बहुत बड़ी मिस्टेक की. They just started pushing into the crosshairs of the defenders. They lost the round, and let's see this time what happens, because अब एक और राउंड Akatsuki फिर से मैच पॉइंट ले सकते हैं, ओवर टाइम सिक्योर कर सकते हैं,
or it can be High Five who equalize the score after a long journey of thoda thoda karke just gaining back the round differential. Yes, absolutely. One thing that stands out particularly big कि कल साहा और वर्टेक्स बहुत कंसिस्टेंट थे, शिनरा भी थे, but again कल भी I think शैले में अविद्वी was the one top ranking with that thermite and today also वो चमक रहे हैं. So consistency is a key to everything. यहाँ पे बहुत अच्छे frags निकाल रहे हैं. Despite of that support role by playing that mute SMG11, आई थिंक एक ही राउंड था जब उन्होंने गराज में आई एम सॉरी कैश और सीसीटीवी में वमाई खेला था. उसके बाद से आई थिंक ही इज जस्ट प्लेइंग दैट SMG11 कॉम्बो. So प्लेइंग हैविंग अ प्लेयर जो SMG11 और शॉटगन से भी बहुत इजीली फ्रैग्स ले लेता है. इम्पैक्टफुल फ्रैग्स, दोज इम्पैक्टफुल फ्रैग्स जो लेते हैं. So दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर ऑन योर साइड. यू शुड नॉट लूज जस्ट दैट. एंड या वंस अगेन यहाँ पे बेडरूम जिम्स का डिफेंस है और यहाँ पे प्रेप किया जा रहा है सीसीटीवी और कैश के लिए. So the defenders would like to play a lot of मतलब spread out खेलना पसंद करते हैं. यहाँ पे ताहा will be on that. येगर तो रोल यहाँ पे सेम है. Vertex will be switching off to the Aruni. तो यहाँ पे they know emphasis in V. Double kill यहाँ पे. I don't know how did he get that kill. I suppose Free Fire में और या विंडो से ही मिले होंगे दोनों के दोनों kills और दोनों ही important operators है मीरा. बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मीरा ने अपनी ब्लैक मिरर विंडो पहले ही डाल दी होगी. And yeah, I think two impactful kills on the side of Akatsuki right now. And yeah, they are just they might be just going for an execute right here. Garage का पूरा control आ चुका है. And further, they might be looking to enter the construction. But एक चीज है वो मीरा विंडो का जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा. And Death Hammer not checking all of its sides. And construction से बहुत अच्छी थपकी पड़ते हुए. Wait, Deathmar wasn't completely aware कि कहाँ पे देखना था. Vortex just completely getting him and he had no clue about what was going on. तो एक और बार Akatsuki को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे. जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन में एंटर करेंगे काफ़ी एंगल्स मेंटेन हो सकते हैं. पल्स की तरफ से भी कार्डियक सेंसर यूज़ करके ही इज़ गेनिंग सम इन्फॉर्मेशन अटैकर्स की लोकेशन के बारे में. एंड दैट इज द थिंग राइट नाउ दैट Akatsuki मोर स्पेसिफिकली इनवी को 2 बहुत अच्छे ओपनिंग किल मिले थे बट नाउ दे हैव टू कीप द मोमेंटम गोइंग. शिनरा बॉम्ब साइट के बाहर हैं ऑल्दो ये अटैकर्स को पता नहीं है. उन्हें ये नहीं पता कि बॉम्ब साइट में अभी के लिए सिर्फ 2 डिफेंडर्स हैं. सो इफ देयर इज अ चांस टू स्ट्राइक इट इज राइट नाउ. लेकिन शिनरा इज ऑल्सो कमिंग अप द स्टेयर्स. ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पिंग हिज टीममेट्स. डॉक्टर नाउ विद द 417 the semi-automatic rifle, he will be peeking from construction. Kill के लिए try करेंगे. Vortex, Avidvi, Shinra, everyone is holding passive angles. Nobody in the defense side wants to push right now because they know that they don't have the man advantage. वो यहाँ पे unnecessary risky gunfight लेना afford नहीं कर सकते. Gunfight लेंगे, फिर से trades होंगे. Avidvi also goes and now Pulse is the only one alive. Yep, if he has that C4 in hand, he can potentially clutch this out for Team Hi-Fi. But still, Shinra यहाँ पे वो नहीं करेंगे. C4 भी उनके expend हो चुका है, so he will just go out for the gunfight now. And with that UMP in hand, I don't think you can match that mobility with that Type 89 rifle of the Japanese operator Hipana. So finishing things out very easily, and Akatsuki are on to match point 6-5. But still, both Hi-Fi came a long way here. I think 4-2 या 5-1 था शायद, I believe, with the first half. And again, yeah, it was 5-1. So yeah, it's a good comeback for now for sure. 6-4 match point. And yep, so far same bomb site रहेगी. Operator lineups भी same रहेंगे. But देखना है कि 6 pick में क्या वो operator change करेंगे या नहीं करेंगे. Because I think अगर कोई set of operators आपका नहीं चल रहा है, if it's only for a round, just change it, because you don't want that you don't want the enemy team to adapt each and every play you're bringing out. And yes, we go. Shinra is bringing out the Frost, or Envy bhai यहाँ पे Monty लेंगे. The French Mountain is here, and we all know having a Mountain on your team, things makes things very difficult for the defenders to figure it out, because you have to stop Mountain. उसके पीछे से जितने भी चाहे 1 या 2 ऑपरेटर हो वो पिक करने उनको आपको रोकना है, या फ्लैंक आ रहा हो वो भी आपको रोकना है. क्रॉस फायर्स बहुत सारी सेटअप करनी होती है फॉर अ प्लेयर लाइक Monty. So ऐसे टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना होता है. या प्रेप फेज इज गोइंग ऑन अगेन, सेटअप्स आर हैपनिंग अप.
And Frost की जो shield है, I think it's a common standard shield over heading off to the construction door from the bedroom. So yeah, he can have an angle, but window से आप ना पिट जाए वो भी आपको देखना पड़ जाएगा. Yeah, right now, high five, it's got to be there for that side, for their side कि यहाँ पे कहीं से भी पिटो नहीं पिटना. I mean, that's the main thing. For high five, this is it. उन्होंने ये मैप चूज किया है and they've got to make sure कि यहाँ पे ना हारे, क्योंकि अगला जो मैप है कोस्ट लाइन का, we know Akatsuki can be very explosive here. I mean, there are so many players we can highlight जिनके काफ़ी अच्छे ऐसे मैप्स होते थे. We know like when Doctor and Taha used to play together, their team MRCZ played Coast a lot. Invi as well, he has been playing it for some time. So there are players who excel on that map. On either one of these teams, like in Akatsuki, we can see the reasoning क्यों उन्होंने Coast का map choose किया है. So that's why they've got to make sure that high five win right here. So vertical play चालू हो जाएगा. Look at Monty. Look at the map control he gets. I think Akatsuki Monty को एक तो obviously mental tactic के लिए use कर रहे हैं. Defenders सोचते रहेंगे Monty आ गया है, उसके पीछे लोग होंगे, बच के रहो. But Monty is mainly being used for like a lot of map control. सारे के सारे defenders 1 मिनट के अंदर cash से push off हो गए हैं, logistics में आ गए हैं, वापस construction में भी enter नहीं कर सकते, ये crossfires maintain हो रहे हैं. Monty के पीछे लोग आ रहे हैं, but Monty is kind of like a human drone right now. No one can tackle him, no one can try to destroy him because Invi is taking it very, very smartly right here. बस एक चीज होगी Monty की, things can get a little slow. Information के चक्कर में सिर्फ Monty आगे जाता रहेगा. His teammates can be a bit behind. However, the teammates of Akatsuki are not behind in terms of the kills they are getting. Atharv, he starts the scoreboard by getting rid of Shinra, and Akatsuki यहाँ पे वापस से उनके pressure काफी direction से आ रहे हैं. Look at Monty, look at how close he is. मीरा का ब्लैक मिरर भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है. लॉजिस्टिक्स में लाइन ऑफ साइट आ गई है अटैकर्स के पास. लॉजिस्टिक्स में अब बक खोल के वॉल एंटर भी कर सकता है. Vidvi has been tagged. So right now with the death of Taha, it means that Akatsuki are pushing, but oh no, unfortunate team kill. 4v3 हो गया है. डेथ मार भी मर गए हैं. डॉक्टर is put in a down but not out state. High five are not out of this just yet. Yep, with that यहाँ पे 43 seconds बचे हैं यहाँ पे. अगर डॉक्टर को नहीं उठाया गया तो it's all up to Atharva and Rhymes with Buck to clutch this out. But still, I don't think that they have a chance. And Doctor has been brought back to 20 HP, and I don't think Rhymes with Buck has any idea कि mattress के पीछे है मीरा. So अगर आप जहाँ तक उनको clear नहीं करोगे, and he will be taken out by Vidvi and Vertex will be the last one to take out Atharva. So we are going to overtime. Huh? Oh, okay. I'm really sorry. I'm really sorry. It's match point for both of the teams. Okay. It's still match points. I thought it was 6-5 already. Okay, never mind. 6-5. 6-5. Okay, up 6-5. So yeah. Yep, with that. I think एक चीज था कि I think Monty was pinging continuously कि बक को वो skeleton key से वो तोड़ना चाहिए था soft wall, but वो मीरा window भी खुल चुकी थी and मीरा was continuously peeking out and in and out. So I think एक चीज कर सकते थे कि Monty थोड़ा side में हो सकते थे. He could have gone to that cash door once again. वहाँ से कुछ देख सकते थे. Till then Buck could have easily cleared out that soft breach over there, but still होता है in the heat of the moment you don't know what you're doing sometimes, and yeah, that was one of the bad luck for Akatsuki right there. But yeah, prep phase going on and it's basement. अभी तक match point है 5-6 on the scoreboard still now, and if Akatsuki wants to make it happen, they just need to do it right now. 7-5 करके they can get the victory and go to map number 2, which will be coastline, or else पहला ही मैप अगर ओवर टाइम पे चला जाता है तो क्या बात होती. Oh yeah, I mean क्या start होगा इस पूरे best of 5 के. I think it will be the best way to set the expectation कि हम बाकी 3-4 जितने भी मैप्स होंगे उनसे क्या expect कर सकते हैं. So now, yeah, moving on, we can see Akatsuki still एक राउंड दूर है, लेकिन ये जो बॉम्ब साइट है कैश एंड CCTV की, इस बॉम्ब साइट को हमने एक बार पहले देखा है हाई फाइव के डिफेंस में, एंड दे मैनेज टू विन दैट राउंड क्वाइट नाइसली. काफ़ी हेक्टिक हो गया था टुवर्ड्स द एंड, बट हाई फाइव स्टिल मेड श्योर कि भले ही 5v3 उनके पास अर्ली डिसएडवांटेज हो, दे स्टिल मेड श्योर दैट दे एंडेड अप विनिंग. सो नाउ Vidvi is reinforcing basement. I'm not completely sure. Oh no, sorry. The bomb site is not cached in CCTV. My bad.
The bomb site is Church and Arsenal. I misread that. My apologies. लेकिन हाँ, bomb site different है. And we've seen this bomb site only once as well. वहाँ पे भी high five जीत गए थे. Time pressure बहुत ज़्यादा आ गया था Katsuki पे, and they were not able to cope with the time pressure, and their attack collapsed towards the end. So yet again, same setup high five की तरफ से, no changes. Mira के same black mirrors हैं. Cade is back here. Indy with the captain looking. He spots the Jaeger. He gets the headshot. Absolutely the start that Akatsuki were looking for. 1 minute हुआ action phase में, and they already get the opening kill. Much needed drones. और ज़्यादा information भी ले रहे हैं. वो जो deep armory में drone था, I believe Indy का था, और was that from Deathmer. जिसका भी drone था, it got them a lot of information कि कहाँ पे players है. Yeah, Thurf का drone था, sorry. It was this drone that we were talking about. And right now this drone is gaining so much information. Athar, we know Maverick खेल के dirt के start में भी आ गए हैं. He's at the entrance. Hatches are being opened. Doctor gets another headshot with the 417 down to 20 HP. लेकिन kills matter करते हैं यहाँ पे. Man disadvantage matter करता है. High five के लिए they're down 2 people. They've made a comeback previously from the same scenario. 3v5 बहुत खेला है, जीते हुए हैं. वापस से एक और बार Shinra. Oh no, Taha kills Shinra. What happened right there? That was a miscommunication. Hussein still takes the headshot, but I think Akatsuki can taste victory right here. Doctor, look at him. He's spotted the defender. Just cannot get the footsteps, cannot get the shots. लेकिन Hussein उन्हें मार देंगे. Taha अकेले बचते हैं. एक team kill, 2 opponent kills. Doctor finishes the job with 5 HP, and Akatsuki win their opponent's map 7-5. Yep, so far it was a really good contest over here. और यहाँ पे क्या बताएं? I think Avidvi was really popping out on this map for sure. और हमने बात की थी कि ये मैप किस तरह हाईफाई के फेवर में जा सकता था. But no, Akatsuki proved us wrong, and maybe, just maybe, the next map might be in the favor of Hi-Fi. Might be, because we काफी टूर्नामेंट्स ऐसे हैं कि अपोजिशन के जितने भी मैप पिक्स है उन्होंने लिए हैं, अपोजिट टीम नहीं लिए, और बाद में उनके मैप पिक्स पे वो हारे हैं. सो यू नो, that's one of the things to watch out. But yeah, still a lot of emphasis put on to utility. So far I know from Hi-Fi's defense. Yeah, gunfight भी थे. क्रॉसफायर जो है बहुत अच्छी सेट की गई थी यहाँ पे Hi-Fi की तरफ से. बट यू नो, Akatsuki stepping each round ahead of them and performing way better than them. यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं दैट राइट नाउ, यू नो, बोथ ऑफ दीज टीम्स लाइक देयर डिफेंस वाज रियली फेवर्ड. क्लब हाउस के बारे में हमने बात की, हाउ जनरली स्टेटिस्टिकली इट इज़ ए डिफेंडर साइडेड मैप, एंड एग्जैक्टली उसी पे खेला. आई मीन पहले हाफ में यू नो जो टीम डिफेंस कर रही थी विच वाज अकात्सुकी, दे एंडेड अप विनिंग 5 राउंड्स आउट ऑफ 6. सेकेंड हाफ में यू नो 4 राउंड्स 6 में से जीतने को मिले डिफेंस राउंड को. सो ऑलवेज द टीम डिफेंडिंग वाज द मेजॉरिटी विनर. नाउ अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो अगला मैप होगा हमारा कोस्ट लाइन का, क्या वहां पे भी सेम चीज होगी? क्या वहां पे भी ऐसा ही होगा कि यू नो जो टीम स्टेटिस्टिकली यू नो अटैकर्स वहां पे फेवर्ड होते हैं, ऑल्दो अब जो बैलेंस चेंजेस आए हैं उसके बाद थोड़े बहुत यू नो डिफेंस टीम का भी हो सकता है. बट देन अगेन वील हैव टू सी इज इट गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स एज वेल, क्योंकि जो भी स्टेटिस्टिक्स फेवर कर रहे हैं वहां पे ये टीम्स नेक एंड नेक लग रही हैं. अगर डिफेंस फेवर में तो दोनों के दोनों टीम्स डिफेंस के राउंड्स अपने जीतते हैं स्लाइटेस्ट मार्जिन से. एक टीम कैन टेक द विन. राइट हियर हमने देखा स्लाइटेस्ट मार्जिन से अकात्सुकी भले ही 5-1 की एडवांटेज थी उनके पास आफ्टर द फर्स्ट हाफ एंडेड, दे चेंज्ड इट. Hi-Fi changed it all the way to 6-5 and then 7-5. इतना क्लोज राउंड, हम ओवर टाइम के बहुत करीब थे. बट अनफॉर्चुनेट फॉर ताहा, यू नो, एक तो वो टीम किल हो गया, एंड देन देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन दैट फाइनल राउंड that unfortunately things just did not go in favor of Hi-Five. But right now, you know, इस मैप के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बात कर लेंगे, स्टेटिस्टिक्स भी लेके आएंगे. we'll bring up the scoreboard, we'll bring up the MVPs, everything. But before that, Jax, it has been a long map. You know, 12 के 12 रेगुलेशन राउंड्स में गए हैं. It's been over an hour since the map had been going on. So I think everyone right now needs a break, the players as well. We'll be after the break. Stay tuned, keep watching. We'll dissect map number 1 and then we'll watch all together map number 2 as well. So we'll be right back.
Let's go. Got him. Let's go. Got him. Let's go.
Welcome back, everyone, to Asus ROG Showdown series for Rainbow Six Siege. Today is the day of grand finals, ladies and gentlemen. Jax, already map number 1 complete ho gaya hai between Akatsuki and High Five. Akatsuki Yep. taking the win by the slightest of margins. 7-5, 12 rounds के बाद उन्होंने जीत ली अपने लिए. So now we'll move on to map number 2, Coastline. लेकिन उससे पहले क्लब हाउस के बारे में बात करते हैं. We still have the scoreboard, we still have the PvP, the MVP and all that. So let's start off right out of the gate. I can't wait for Coastline, but to talk about Clubhouse, let's bring up the scoreboard of that match and let's bring up the scoreboard and see how these players played their performances. क्योंकि 12 rounds हुए थे, बहुत ज़्यादा rounds वहाँ पे. We saw plenty of kills, tons of potential. So I need to see on average how these members of both of these teams performed. MVPs की तो हम बात करते रहेंगे, PvP में and all that. But overall, looking at the scorecard, Jax, आपके क्या ख्याल है? मेरे ख्याल तो यही है कि यार डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा दवाई दिया अपने मरीजों को. Rhymes with Buck with that 13 kills, Atharva with 10, Invi with 10 and Amar with 2. तो चारों के डबल फिगर्स है और अमर भाई यहाँ पे चमक नहीं पाए. तो एज एन IGL he needs to manage a lot of things, but still his team is doing the job, so he does not need to worry much now. 7-5 victory है. अभी on the side of High Fight would be Abidwi Hussain 13-11 kills, Vortex with 9, Shinra with 4 and Taha with 2. So Taha का भी आज ज़्यादा अच्छा दिन नहीं जा रहा था along with Shinra. So the three only performing players for High Five would be Abidwi Hussain and Vortex. So अभी के लिए first map में it's totally fine that you came up from 5-1 I believe, and again जितना अच्छा कमबैक किया है तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकता था अगर लास्ट राउंड में ताहा की डेथ नहीं होती. सो आई थिंक वो दैट अनफॉर्चुनेट टीम किल मेड दैट नॉट पॉसिबल फॉर द टीम टू विन. एंड या सो हियर वी आर 7-5 विक्ट्री. सो इतना ज्यादा भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बेस्ट ऑफ 5. एक मैप हार गया, आप दूसरे में कर सकते हो जो आपका खुद का पिक है. So yeah, let's just move on to that map wise PvP context. ठीक तरीके से बात कर लेते हैं कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर किसका प्रोफाइल ज्यादा अच्छा रहा है. तो द स्टैंड आउट प्लेयर वुड बी Abidwi and Rhymes with Buck. दोनों के दोनों 13 kills है, 8 death and 7 deaths on the side of Rhymes with Buck. 2 assist Buck के और Abidwi के 0. KDR की अगर हम बात करें तो 1.60 to 1.80 is pretty close. बस थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, बट स्टिल दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. Abidwi is that one player who keeps your hope still alive even when you are in the darkest side of your team. भाई there were so many instances, Avidvi ने opening kill एक लिए थे अपनी team के लिए, and then his overall kills as well, the highest in his side. And yeah, I have to agree with you, like map wise scorecard में Taha and Shinra, they did not have the best of days. Like 12 rounds में 4 kills, 2 kills, that isn't the best statistic you would like as a player. So hopefully they can get their mind straight back up, they can make sure कि इस बार और कोई प्रॉब्लम ना आए. लेकिन अभी के लिए हम नजर डालेंगे हमारे MVP पे इस पूरे मैप के. दैट is going to be Rhymes with Buck right now. What a performance from this guy. काफी close to his competitor MVP on the side of High Five. लेकिन yeah, Rhymes with Buck, great play from him. Defense में लगभग बहुत सारे इन्होंने operators के लिए. He played Vigil, he played Vamai, he played Melusi, Mute का भी role इन्होंने निभाया. So he played every single operator under the sun. बहुत सारे रोल्स किए. अटैक में ही ओनली हैड ए कंसिस्टेंट सिंगल ऑपरेटर. ही केप्ट ऑन प्लेइंग द हिबाना, बट इट स्टिल मैनेज्ड टू लेट हिम गेट मोर एंड मोर ऑफ दोस किल्स टुवर्ड्स द एंड. ही इवन गॉट एन ओपनिंग किल इन वन ऑफ द डिफेंसिव राउंड्स. बहुत जल्दी इन्होंने शिनरा को मारा था. सो या, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम राइम्स विद बक. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम. कल के जो हमारे एमवीपीज थे अब चेंज हो रहे हैं. येस्टरडेज एमवीपी फॉर द साइड ऑफ हाई फाइव, सॉरी फॉर द साइड ऑफ अकात्सुकी was Amar, but now that's changed. Amar as well had a bit of a quiet day right now. काफी members के साथ यहाँ पे हुआ दोनों teams के. Some of the members just kept popping off, and for a bit of the members, well, it wasn't the best of games individually. Team wise, Akatsuki will be very happy with themselves, and team wise, दोनों के दोनों teams को happy हो sad हो, well, they have to restart their feelings, they have to restart themselves right now. Fresh mindset के साथ आओ, and हम सब एक fresh set of eyes के साथ start करेंगे
Coastline come up, and already the ban phase is starting. We can see in Coastline pe I have to see what exactly happens here in terms of operator bans. क्या यहाँ पे operator changes आएंगे? Well, Nomad has been an operator जो काफी बार ban होते हैं. Coastline is a small map compared to other maps जो काफी बड़े होते हैं, especially like maps like Clubhouse and all. वहाँ पे coastline like it's quite small in terms of the area and all. So flanks काफी common हो जाते हैं. Flanks को रोकना भी यहाँ पे attackers के लिए काम होगा. So without Nomad, it will get a bit difficult. Now let's look at the final attacker ban, which is going to be Flores. So okay. So no hard breacher has been banned, and वही मैं कह रहा था, कोस्टलाइन पे हमेशा से ये रहा है कि हार्ड ब्रीचर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है. It's about the support players, it's other operators that are usually banned, and in this case as well, Nomad, Flores, Valkyrie, yeah, very very standard, very very simple. काफ़ी बार हमने देखे हैं with the exception of Flores. Yep, I think it's the second time that Hi-Fi is banning Valkyrie out. I'm really sorry for that. And yeah, Nomad बहुत अच्छा ban है, Flores भी बहुत अच्छा ban है यहाँ पे, क्योंकि players like to sit at certain points जहाँ पे ऊपर से जो vent holes रहते हैं वहाँ से आप अपने Flores की drones निकाल सकते डाल के you can get an easy kills over there. And I think Mira ban would suspect me just because यहाँ पे दो जगह मीरा खेली जाती है. एक है अपने one is on that penthouse, but usually no one plays that just because कि बहुत claustrophobic होता है यहाँ पे. दूसरी आप ब्लू सनराइज एंड ब्लू बार में भी खेल सकते हो. सो या सनराइज एंड ब्लू बार में खेलते हैं लोग, सो दैट्स व्हाई मेबी जस्ट मेबी दे बैंड मीरा आउट ऑफ द इक्वेशन. बट या आई थिंक दे वर नॉट गोना प्ले मीरा ओवर हियर जस्ट बिकॉज ऑन द साइड ऑफ डिफेंस. इनवी खेल सकते थे मीरा, बट दे चोज नॉट टू. सो देयर माइट बी सम फिजिक्स टू इट, बट स्टिल स्मोक भी यहाँ पे बैन हो सकता था बिकॉज यहाँ पे भी प्लांट करना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, खास करके अगर आप 2F की साइड पे प्लांट कर रहे हो या सनराइज एंड किचन कहीं भी प्लांट कर रहे हो. स्मोक आपके लिए थिंग्स को बहुत बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है. सो आई थिंक a little bit of efficient bans coming out from there, but still शिनरा यहाँ पे स्टिकिंग टू द फिन का. तो यहाँ पे फिर से बहुत कन्वेंशनल प्ले और फर्स्ट टाइम थैचर प्ले में है. तो थैचर हमको दिख रहा है. रियल सीजी बहुत ज्यादा खुश होंगे इस बात को देख के. एंड या very nice thing, but yep, please go on. Now I was going to say कि किचन सर्विस की बॉम्ब साइड आज हमें बहुत देखने वाली है. जो भी डिफेंडिंग टीम है, आई मीन किचन बॉम्ब साइड इज द मेन डिफेंडर्स बॉम्ब साइड राइट नाउ. एक जो यहाँ पे बहुत मेजर चेंज आया है, ये जो सर्विस एंट्रेंस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नई विंडो इंस्टॉल हुई है, जो वॉल्टेबल विंडो है. पहले इसको ग्रिल कहा जाता था बिकॉज यू कुडंट वॉल्ट थ्रू इट, यू कुड ओनली शूट थ्रू इट. लाइन ऑफ साइट भी रिस्ट्रिक्टेड थी, बट नाउ इट्स अ कंप्लीटली ओपन विंडो. हाँ, अटैकर्स के लिए अच्छी चीज़ है, वो वहाँ से शूट कर सकते हैं, लेकिन वो सर्विस एंट्रेंस में प्लांट नहीं कर सकते. जो हम पहले देखते थे कि आप बस सर्विस एंट्रेंस के वो दरवाजे पे आ जाओ और वहीं पे आप स्मोक्स कर दो, प्लांट कर दो. यही वाला दरवाजा, इसी को यू एंटर थ्रू द डोरवे, प्लांट राइट एट द फुटस्टेप्स एंड देन यू प्ले पोस्ट प्लांट मैप के बाहर वाली साइड से. अब ये नहीं हो सकता. इन ऑर्डर टू प्लांट फ्रॉम द सर्विस साइड अब आपको किचन में एंट्रेंस लेनी पड़ेगी. वो पूरी विंडो और डोरवे वाला एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई डिफेंडर्स हैव द एडवांटेज. इसलिए अब हम एक डायनामिक, एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख सकते हैं दैट अटैकर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम सर्विस एंट्रेंस एंड गोइंग टू लाइक प्लेसेस लाइक सनराइज बार, जैसा हमें अभी देखने को मिल रहा है. इन दिस केस Hi-Fi बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड इनका अटैक है. सर्विस एंट्रेंस पे भी लोग हैं, लोग सनराइज बार पे भी हैं. सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन राइट नाउ. जैसा हमने क्लब हाउस के मैप पे भी देखा था, Hi-Fi आर ऑल ओवर द प्लेस. वो सारे एंगल से अटैक करना चाहते हैं. जहाँ भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, wherever they sense there is potential to start attacking, they are just going to go for it. They are not going to stop at all. So right now they are really pressurizing Sunrise Bar. Sunrise Bar में Doctor, as it was Envy who was playing it as the Thunderbird. And he was taking a few gunfights, but still he is safe at the moment. पहली gunfight Amar लेंगे and he gets the headshot onto Hussein. So he had a little bit of a quiet day previously, but now look at Akatsuki popping off. 2 kills right out of the gate. Yep, with that और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट और सेकंड किल इनवी का आते हुए ऑन टू अबीदवी. I don't know why they are just keeping on picking each and every angle. पता है आप अटैकर हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि डिफेंडर्स कौन से जगह पे हैं, कैसे हैं, कहाँ है, क्या पोजीशनिंग है. उसके अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग. द फिनका हैज बीन डाउन राइट नाउ. डॉक्टर विल फिनिश ऑन फिनका एंड इट्स ऑल अप टू वर्टेक्स. क्या वर्टेक्स यहाँ पे किसी को मार पाएंगे? एंड पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ऊपर शॉटगन, दैट एम्पायर शॉटगन इज रियली बैड इन क्लोज रेंज.
और यहाँ पे वर्टेक्स बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं. He will heal himself through that heal station over there. Vertex will be able to take out Amar, and Atharva is going out into the balcony, and he knows that Sledge is out there in the balcony, but उनको पता नहीं है. I don't think he knows. Okay, now he knows that Sledge बाहर है, तो शायद Sledge को ये easy kill मिल सकता है क्योंकि हाथ में पिस्टल है अथर्वा के. So if he just manages to take out even one kill out of that, he might just be able to make it happen. But no, it's a 1 versus 4 for now. 1 versus 3 भी हो जाए तो भी health बहुत ज़्यादा कम है. And you have to just be aware कि जो थंडरबर्ड के जो हील स्टेशन है वो अटैकर को भी हील कर सकते हैं. So you know that's a gamble right there, but still 17 seconds he cannot do much or just sit outside the objective and just wait for the defenders to come. 10 seconds left. Yep. कोई जरिया नहीं है यहाँ पे. So Akatsuki, they'll be taking a comfortable win right now. Rhymes with Buck, he pushes. Can he get the shot? Vortex gets one and he gets the headshot. See, Rhymes, he's going for the kills. He knows he was the MVP previously, and I think he's just looking to maintain the MVP prize. And you know that MVP role की now मेरे सबसे ज़्यादा kills हैं. I've got bragging rights. अब जो भी operators होंगे मैं खेलूँगा, मैं choose करूँगा. But yeah, all jokes aside, it was a good round from Akatsuki. Right out of the gate, वो जो initial flurry of kills आया था, and सारे के सारे जो you know Akatsuki को फेवर किए थे, that was the major reason that helped them, you know, essentially get everything to get the ball rolling. इतने ज़्यादा kills उनके फेवर में गए, and then the few high five members remaining here and there, they were not able to do much. So like I was saying, kitchen service के बारे में, this is a defender bomb site. आप नजर हटा ही नहीं सकते. इट इज नाउ हाईली अनलाइकली दैट अटैकर्स विल ट्राई एंड गेट अ विन हियर. आपको एक यू नीड लाइक अ रॉक सॉलिड स्ट्रैटेजी राइट नाउ बिकॉज दिस बॉम्ब साइड इज रियली फेवरिंग द डिफेंडर्स. क्योंकि ये जो सर्विस एंट्रेंस में चेंज आया है, जो सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी होती थी वो छीन ली गई है अटैकर से. बट स्पीकिंग ऑफ बॉम्ब साइट्स जिनमें काफी चेंज आए हैं, वेल हियर इज अनदर वन, पेंट हाउस. मेरे को नहीं लगा था हम बहुत बार पेंट हाउस देखेंगे. आई मीन दिस बॉम्ब साइट वाज I mean, मेरे पास कोई कंपैरिजन भी नहीं है. दिस वाज अ डेड बॉम्ब साइट. बट नाउ यू नो थैंक्स टू ये जो डीजे वॉल है विच वी कैन सी टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो अभी रीइंफोर्स हुई हैं, टीम्स आर गोइंग फॉर दिस हॉरिजॉन्टल नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन. सिर्फ पेंट हाउस थिएटर में नहीं, अब वो डीजे में भी एक्सटेंड करते हैं, रीइंफोर्स कर देते हैं वॉल्स, एंड पूरा का पूरा डीजे रूम, लाइक VIP रूम, डीजे रूम, आई लाइक टू कॉल इट डीजे रूम, बट दे इंटायरली प्ले दैट रूम. हाँ, अरे दोनों बुलाते हैं, कुछ भी बुलाओ, अरे मस्त. बट राइट नाउ डिफेंस टीम के लिए मस्त होगा. दे एक्सटेंडेड, दे हैव मेड देयर रोटेशंस. ये जो वॉल पहले रीइंफोर्स हुआ करती थी, नाउ इट हैज कंप्लीटली बीन लेफ्ट ओपन. सो यू कैन सी हाउ मच वन सिंगल सॉफ्ट वॉल एंड हाउ मच वन सिंगल इन योर रीइंफोर्समेंट कैन मेक चेंजेस टू एन एंटायर बॉम्ब साइट. लेकिन अब बात आती है अटैकर्स यहाँ पे कैसे अटैक प्लान करेंगे. हमने डिफेंस का सेटअप तो देख लिया, उन्होंने VIP में एक्सटेंड कर लिया है, बट फॉर द साइड ऑफ द अटैक, हाउ आर दे प्लानिंग टू डिफेंड अगेंस्ट इट. लुक एट दिस एंगल फ्रॉम इनवी. हुसैन गेट्स द ओपनिंग किल. Oh my god, how can you see with the 1x even there? My goodness. And oh, Invi dies from that angle. Shinra gets the kill. So very good start for High Five right now. As जो पिछले राउंड में हुआ था उसका उल्टा यहाँ पे हुआ है. And now it's Akatsuki as well who are trying to reply back. Yep, they need to reply back right now. Rhymes with Buck will take a kill onto Hussein. तो यहाँ पे काफी हद तक things are evened out. शिनरा ने यहाँ पे अपना नैनो बॉट यूज कर दिया. We will take down Rhymes with Buck. So Buck के पास नहीं है luck, और इसकी वजह से वो मर जाएंगे. एंड इट्स 2 versus 3 फॉर नाउ. डेथ अमर विल बी बैक ऑन टू द HP. हील हो जाएंगे फिर से. डेथ अमर थंडरबर्ड खेल रहे हैं यहाँ पे, सो ही जस्ट माइट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस ओवर हियर. डॉक्टर एक चीकी एंगल पे. ओह, आई जस्ट थॉट दैट डॉक्टर हैड इट, बट नो, वर्टेक्स इज द वन हु विल हैव इट मोर. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड अ नेल इन योर हेड फॉर टू लॉन्ग. So now Gone 6 यहाँ पे easily हो चुका है. यहाँ पे डेथ हमारे अकेले बच्चे हैं. You know 1 versus 2 so far. They can make this happen. Usually ये साइड हम देखते नहीं है. Abhidvi is going for a plant right there, and Thunderbird is over here, but still Abhidvi यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे Thunderbird aka Amar. तो यहाँ पे अमर नहीं रहेंगे, अमर, and he will be dead. So far a nice execution coming out from Hi-Fi over there. एक बहुत अच्छा जवाब जो पिछले राउंड का दिया है हाई-फाई ने यहाँ पे. एंड एक चीज है कि जो स्टार्टिंग पिक्स लिए वो तो लिए, बट उसके बाद जो एक फ्लरी चालू थी, those flurry of refracts, they were just coming in and in. So yeah, that was a good side of a show coming out from Hi-Fi.
Yeah, rhymes with Buck वही अच्छा. It was a very good effort. 5v3 से 3v3 कर दिया उन्होंने. But after his death, then unfortunately no one was able to survive. Amar was the only player alive, and not much could happen of that scenario. So इसलिए right now high five still just like what we saw in Clubhouse. Even though वो कुछ राउंड्स पहले हार जाएंगे, they'll try to equalize the score as much as possible. यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अटैकर्स को यूजुअली फेवर किया जाता है कोस्ट लाइन के मैप में. अकात्सुकी जैसा उन्होंने क्लब हाउस में एक बार बार एंड स्टेज लेके ट्राई किया था, एक नई बॉम्ब साइट ट्राई करने का, वैसे ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने यहाँ पे भी ट्राई किया. And just like bar and stage, it did not work out in penthouse and theater. So now they're going back to the more modern, the more picked bomb site of hookah and billiards. And एक और बार VIP extension अभी भी आएगा. केड के इलेक्ट्रो क्लॉज भी VIP में आ जाएंगे. So not allowing easy entry for high five in that VIP room at all. High five को बाथरूम का हैच खोल के बाथरूम से ड्रॉप करने का ट्राई करना होगा. That is something that they'll have to do, which will waste some more time of their squad. But right now we can see that these corridor changes as well, जो यहाँ पे close off हो गया है, barricades लगा सकते हो. All of it's still very very new. अभी भी किसी को पता नहीं है. Does it favor the attackers? Does it favor the defenders? For now, it just favors the team that can exploit them more. जो उनकी ज़्यादा अच्छी advantage निकाल सकते हैं उन सारे scenarios की. And speaking of getting the advantage out of these rounds, well, both of the teams are still trying for that. Equal score है. Looking at the attack and how it is shaping up, well, High Five are ready to execute any moment. They're right outside the bomb site. Hookah ki balcony mein bhi hain. They're climbing up big window and all, holding all of these angles. Envy is the first casualty yet again. पिछली बार भी शिंद्रा ने Envy को मारा था SLMG से. एक और बार ये होता है and execute आने वाला है High Five के side से अब. जब एक्सिक्यूट आने की देरी बची हुई है, एक C पर एक्सपेंड किया जा चुका है. देयर इज समवन इन द लगेज बट अभी इज देयर टू वॉच हिम आउट. एक फ्रैगनेट चला जाएगा पिनका की तरफ से, बट किसी को डैमेज नहीं पहुंचेगा, उल्टा हैश टूट जाएंगे. सो फ्लैशेस हैज बीन डम्प्ड आउट, नेड्स हैज बीन डम्प्ड आउट इन ऑर्डर टू क्लियर आउट ईच एंड एवरी यूटिलिटी. द प्लांट हैज बीन गोइंग डाउन. हुसैन इज on a flurry of low HP, but still he managed to take down Tharba. Doctor will take down Hussein. The plant has been gone down. Plant अभी तक हुआ नहीं है. Vertex will take down Doctor. Still 1 मिनट 44 सेकेंड में इतनी जल्दी नहीं करनी है आपको. आप अटैकर आपके पास, you have that health, you have that advantage over you. And smoke canister has been popped out, and the plant will be going down. And Shinra बहुत क्लोजली HP से निकल जाते हैं. अबीदवी यहाँ पे बस 5 या 1 HP पे है, if I would be able to say. 35 seconds on the clock remaining for the diffuser to go down, and it's a 1 versus 4. Death हमारे के ऊपर सारा का सारा दारोमदार आ जाता है. He takes down Taha with down himself, and he might be able to take down Shinra, but no, he is just holding out that trigger. But Vertex is the one who will finish him off, and one more round going into the hands of Hi-Fi. And इस एक्सिक्यूट में बहुत ज्यादा जल्दी की गई, बट उससे भी ज्यादा एक आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट की Envy was getting too aggressive over that luggage window. जिस गलती की सजा उनको मिल गई, and you know that not to peek each and every window, because attackers always have the upper hand when you are on the defense. They have to come into the site, not you have to go over to them to give them free frags. So that's what Envy did, and he paid the price. Yeah, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे. दैट अकात्सुकी दिस अग्रेसिवनेस इट जस्ट बैकफायर्ड. काफ़ी अर्ली अग्रेसिव हो रहे थे. इट वेंट इनटू अ 5v4 एंड हाई फाइव वर लाइक रोम क्लियर का कोई फ़ायदा नहीं है, VIP कंट्रोल लेने का फ़ायदा नहीं है. लेट्स जस्ट पुश फ्रॉम एक्वेरियम, प्लांट द डिफ्यूज़र एंड पोस्ट प्लांट. हमारी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, हमें नीचे से कोई नहीं मार सकता बिकॉज दे हैड सेंट टाहा प्लेइंग द ट्विच इन ब्लू बार कवर करने के लिए एंगल. देन यू ऑल्सो हैड अ प्लेयर हु वाज रैपलिंग on the billiards window, and because of that जो भी बॉम्ब साइट में लोग थे उनको कवर प्रोवाइड किया जा रहा था बहुत सारे एंगल से, and it was a very easy post run scenario. डेथ मर जब अकेले बचे थे. So Katsuki have got to realize कि early engagements बहुत ज़्यादा ना लें. It is a small map. यहाँ पे टाइम वेस्ट करना इतना आसान नहीं है जितना आसान क्लब हाउस ऑरेगन ऐसे बड़े मैप्स में होता है. Over here the attackers are very swift with their time. They do not waste a single second. उन्हें पता है कि इतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना है. So you have to try and maximize जितना भी हो सके एरिया के चक्कर में उतना आपको करना है. And now Doctor, he's going for the run out, and okay, I think he was just trying to look for the drones. अभी भी spawn peak के लिए जाएंगे, and he falls back. He knows it's a bit dangerous. He just checks the cameras and falls back basically. So yeah, he does not want to be too aggressive. He has been droned out.
ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट नाउ व्हाट इज हिज एग्जिट स्ट्रैटेजी? कैन ही एग्जिट फ्रॉम हियर? एग्जैक्टली, ब्लू बार में प्रेशर है. हाउ इज ही गोइंग टू एस्केप फ्रॉम ऑफिस? उनकी तरफ से सपोर्ट आ गया है. अथर्व इज राइट देयर कवरिंग द एंगल फॉर हिम, बट आई थिंक डॉक्टर हैज टू सीमेंट दिस पोजीशन फॉर हिम राइट नाउ. या तो वो गन फाइट ले, क्योंकि निकलना वहां से काफी मुश्किल हो सकता है. इनवी ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट ब्लू बार विंडो. उन्हें पता है ब्लू बार पे कोई नहीं है. So now any defenders inside of office, they can move off, and yeah, the defenders are working together to move away from this area. लेकिन early gunfight अभी भी चल रही है. Doctor is still there alongside Atharv. Both of these guys were peeking office. कोई भी नहीं मरा है अभी तक. A minute has passed into the action phase. Akatsuki, they take the early engagement, they win the early engagement. Avidvi goes down by the hands of Atharv, and Atharv is still hungry for more kills, but I think this is a bit too dangerous. High five are also looking fine right now. Diffuser drop ho gaya hai, but now high five, oh, this is not looking all too well. Shinra is right here. He just jumps in blind, did not have a clue where Doctor was, and it looks like Akatsuki will be equalizing the score. Yep, they will be equalizing the score, but Vertex के mind में ये तो नहीं चल रहा. He is just popping out of one more kill, making it a little bit easier. Doctor यहाँ पे peek out करेंगे फिर से, and they know he cannot survive. With that, Deathamar will be taking the final kill. Actually, Doctor का था, लेकिन Deathamar भाई ने चोरी कर लिया वो kill. But it's alright, you win the round 2-2, and Akatsuki believes that they still have the game with them. Still, it's a long way to go. मैच पॉइंट तक लेके जाके आपको जीतना है, बट यू नो अकात्सुकी अगर ये मैप जीत जाती तो प्रेशर बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा हाईफाई के ऊपर, बिकॉज यू नो having your map taken by some another team, it's totally devastating. If Hi-Fi win this, or if Akatsuki win this, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा. You know, pressure हल्का हो जाएगा. They can play more aggressive, take more risky gunfights, and actually वो अभी भी वही कर रहे हैं. They are doing the same. Atharva is challenging gunfights. Earlier we saw Doctor, who was challenging gunfights on the start of the round. They know because they are confident in their peaks. अगर आप peak पे confident हो तो आपका जो किल लेने का जो 85% का जो डिफिकल्टी है वो दूर हो जाता है. यू नो you are just free in your mind, and you just peak without any hesitation. So yeah, I think that's one thing that makes Akatsuki pretty stand out over there. And again, we are moving on to that Sunrise and Blue Bar defense once again. Attacking lineup में कोई change नहीं है छोड़ के कि Avidvi will take on that Iana. Taha यहाँ पे Twitch ले लेंगे, and Hussein will take that Ying. So I just love to see Ying plays on coastline. You know, coastline के लिए coastline बहुत अच्छा map है Ying Candelas के लिए. And on the defensive side we have Atharva with that Legion. So Doctor is sticking to that Mercy. Amar भी यहाँ पे Aegir stick करेंगे. Envy switching off to the Thunderbird from the Surya gates, which will be Aruni, and last Rhymes with Buck will take the smoke. So यहाँ पे एक utility heavy base बनाया गया है यहाँ पे, तो शायद ये हो सकता है. लेकिन यहाँ पे Vertex as usual taking the first pick, but I thought Envy might have had that. ये एक चीज Envy की मैंने बहुत नोटिस की है कि he just peaks a lot. मतलब पीक करते भी हैं, लेकिन एक सेट टाइम होता है, पोजीशन होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे कैसे है. So you just not should blindly peek each and everything you are just supposed to do. So yeah, 2 minutes 24 seconds remaining. थोड़ा बहुत यहाँ पे alternation होते हुए Doctor will take down Shinra, and Shinra यहाँ पे Rise with Buck को निकाल देंगे. तो Smoke is off the board, and one of the most best operators from the defense is off the board. Avidvi यहाँ पे सीधा jump करेंगे, लेकिन Deathamar will take down Taha and Avidvi with himself. 2 Candelas फुट चुके हैं, and it's a 2 versus 2 for now. Avidvi is into the side, but no, Vertex and Hussein will kill things up, and one more round heading into the way of Hi-Fi. यहाँ पे वही थोड़ा सा अगेन टाइट हो गया कात्सुकी के लिए, बिकॉज दे रियलाइज दैट साइड कंट्रोल हाई फाइव बहुत क्विकली ले रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग हाई फाइव आर गुड एट डूइंग राइट नाउ दैट वी कैन सी ऑन कोस्ट लाइन. अगर बहुत क्लोजली दे फाइंड अ किल ऑन समवन ऑन एन ऑपरेटर जो बॉम्ब साइड के बहुत पास है, या एक एंकर खुद है, इन दिस केस इट वाज इनवीज किल, दे जस्ट टेक द बॉम्ब साइड. कम से कम 2 लोग बॉम्ब साइड में आ जाते हैं, दे ट्राई एंड प्लांट द डिफ्यूजर. इन दिस केस डेथमर का बहुत अच्छा एफर्ट था वहाँ पे, ही गॉट अ डबल किल, ही
prevented the diffuser from being planted. लेकिन जब उन्होंने हुसैन के against gunfight ली, the Jaeger versus Ying, and it just did not go the way of Jaeger and High Five. I think it was because of that one kill from Deathmar, that the death of Deathmar, shall I say, that High Five ended up winning the round. अच्छा execute था उनकी तरफ से. It was really good that they got the opening kill against Envy, and Vortex did that. But then towards the end it was getting a bit close, but High Five कम से कम make sure करेंगे that at the very least it is going to be a 3-3 split going into the second half. I still believe 4-2 favor कर सकता है High Five को, looking at how it is going and looking at the fact that Hookah and Billiards हमारी bomb site है जहाँ पे हम एक बार पहले गए हैं, एंड वहाँ पे एक और कंफर्टेबल विन थी हाई फाइव के लिए. शिंड्रा ने इनवी पे ओपनिंग की ली थी लगेज की तरफ, एंड देन एवरीवन फ्रॉम हाई फाइव जस्ट एंडेड अप पुशिंग लाइक एक्वेरियम. उसके बाद वो पूल में भी आ गए, प्लांट कर लिया. उनका एग्जीक्यूशन भी काफी स्वीट था. लाइक दे टुक ब्लू बार कंट्रोल, दे हैड पीपल रैपलिंग फ्रॉम लाइक बिग विंडो एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग नाइस. अब हम देख सकते हैं अकात्सुकी की तरफ से कुछ काउंटर मेजर्स हैं वैसे एग्जीक्यूट के लिए. गोयो शील्ड्स, येगर एडीएसएस, बार्ब वायर, काफी ज्यादा पूल के एरिया में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ताकि अगर वापस से हाई फाइव ऐसा कुछ ट्राई करें तो इस बार सक्सेसफुल ना हो. सो नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हाई फाइव विल ट्राई. यहाँ पे क्या ट्राई करने की कोशिश करेंगे. बिग विंडो हुक्का बार पे वापस इनकी प्रेजेंस आती है. आर दे रेडी फॉर अ रश? ओह नो, आई फील लाइक इट मे बी लाइक अ फेक रश. कुछ तो हो सकता है. गोन 6 है याना के हाथ में. यिंग कैंडेलाज रेडी हैं. राइम्स विद बक इज राइट हियर. या देयर गोज द गोन 6. Rhymes with Buck just holding the angle. Ying Candelas आ जाएंगे. He is holding. Oh, he does not. He cannot see anything. The push is right here. Smoke canisters prevent करेंगे bomb site में entry. एक और कैंडला आते हैं. They are trying to plant the diffuser, लेकिन C4 successful होगा. Shindra gets the counter kill. Taha with another putting High Five at an advantageous position. लेकिन C4 bomb site में drop हो चुका है. अकात्सुकी को अब सिर्फ passively खेलना है. यहाँ पे passively खेल के ही काम बनाना होगा. And I think Shinra's team Hi-Fi is putting really a lot of emphasis on that Finka and Ying play over here. Taha will somehow get down. Amar, तो यहाँ पे things even out तो नहीं होगी, लेकिन काचुकी के लिए बहुत ज़्यादा disadvantage हो जाएगा और disadvantage निकल जाएगा क्योंकि अथर्वा has been down. So Invi is the only one remaining. Goy shield यहाँ पे pop out हो चुकी है and the diffuser is still inside. And it's only up to Invi to clutch it out, and he might just be able to take Atharva back on his HP. But यहाँ पे peek नहीं करना होगा. अगर peek किया तो पूरा का पूरा खेल यहाँ पे खत्म हो सकता है. Ash will be going on further to roam the side, and Invi is there to take him out, but no, Shinra will clear things off. And again, एक जो मैंने पहले भी बोला था इस राउंड के पहले कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है फिनका और यिंग प्ले के ऊपर, जो कि ठीक है. It's fine up to some extent, but not every time a Ying or a Finka may help you with the rush or may you help with the push until and unless the defenders are really ready for you. So yeah, side swap का round है यहाँ पे and side swap होगा यहाँ पे. 4-2 पे ये half खत्म होते हुए, and I think एक बहुत अच्छा half है क्योंकि अटैकर साइडेड मैप जैसा सीसीबी ने बताया यहाँ पे कि कंसिडर किया जाता है इसको. सो या आई थिंक 4 इज अ रियली गुड स्कोर टू, बट अकात्सुकी जस्ट नीड 2 rounds on their head to make way for themselves to the victory. So yeah, if Hi-Fi continue to play at this level, they just might be able to take this map away. I have to say कि हाई फाइव अपने अपोनेंट का मैप ले सकते हैं. वही जैसा आपने कहा 2 rounds मैच पॉइंट, 3 rounds विक्ट्री, लेकिन डिफेंस में मुश्किल हो सकता है. राइट नाउ द फर्स्ट बॉम्ब साइट इज नॉट गोइंग टू बी किचन एंड सर्विस, जो एक इन माय ओपिनियन नाउ आफ्टर द चेंजेस दैट्स लाइक अ गारंटीड विन फॉर द डिफेंडर्स. किचन सर्विस नहीं होगी, रादर इट्स गोइंग टू बी हुक्का एंड बिलियर्ड्स. फॉर द साइड ऑफ अकात्सुकी आई डोंट थिंक इनका ऑपरेटर लाइनअप काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा. देव गॉट द सिंगुलर हार्ड ब्रीच, थैचर भी है उनके पास, जैकल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रोम क्लियरिंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोमर्स होते हैं. एंड देन देव गॉट याना एंड स्लेज ऑब्वियसली फॉर देयर फ्रैग ग्रेनेड्स एंड देयर वर्टिकल ब्रीचिंग कैपेबिलिटी. सो एज ऑफ नाउ good lineups overall. Thunderbird can be seen again. Alba is there. I just have to say what exactly the setup is. यहाँ पे it looks like a regular setup. There are line of sights, there are rotations, and वही aquarium से like push prevent करने के लिए pool की तरफ. As of now, I can only see a single Surya Gate Aruni का. I would like something more. Aruni getting a bit aggressive right here in balcony. Oh, Avid, we could have gotten the headshot. He is still peeking, still pre-firing. The attackers, they have to be passive, careful. Rhymes with Buck काफी tag हो गए हैं. And Slit jumped right in front of him, but he got the headshot. With a much needed headshot.
I mean, this could have been the round-winning moment right there. अपने आप को थोड़ा बहुत heal भी कर लेंगे. This was really good. High five are in a very good spot right now. 40 सेकंड भी नहीं हुए हैं. Sledge, one of the people with the frag grenades, is already gone. He cannot push anymore. So yeah, I don't think High five could have asked for a better start right now. यप, हाई-फाई को बहुत ज्यादा अच्छा स्टार्ट मिल चुका है यहाँ पे, खास करके डॉक्टर का जो पिक निकाला है, बिकॉज यू नो डॉक्टर इज वन ऑफ द प्लेयर्स वी यूजुअली काउंट ऑन दोज हैवी एंट्री फ्रैग्स बट यहाँ पे ताहा पे बहुत ज्यादा प्री फायर जाते हुए, वो प्री फायर सही जगह पे लगा लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं हुआ. शिनरा विल टेक डाउन दैट तमर, और इसी के साथ इयाना, the Gemini has been thrown out of the board, so no more scouting out for you, scouting any room. तो यहाँ पे डिसएडवांटेज चला जा चुका है अकात्सुकी के पास. 2 bodies are down with them. एक भी बॉडी नहीं गई है हाई-फाई की तरफ से. यहाँ पे जैकल लेने का जो एम्फेसिस है मुझे वो समझ नहीं आया, और I thought someone from the luggage would have easily killed him, but the VV and Shinra will take down Noises back, and one more. So it's all up to Invi in a 1 versus 5. Can he make it? Because 100 HP पे है, और यहाँ पे C4 से जा सकते हैं, लेकिन मिड एयर तोड़ दिया है C4 को बहुत easily, and he might just be able to get that. बाहर है यहाँ पे Shinra, दोनों आ चुके हैं. He will be able to get him. He gets two. So Shinra and Taha are out of the board for now, and 56 सेकंड बचे हैं. यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, यहाँ पे बहुत कम एचपी है. एंड इफ ही जस्ट manages to go below, I mean go just near a heal station, so he can get healed very easily. So 40 सेकंड है यहाँ पे. 40 सेकंड में I don't see this happening right now, because 20 HP, and I just remember one more tournament final था उनका, and I think it was city championship. Then Invi gathered up 4 kills but still managed to take a loss. So I think Invi can make it, but on the side of that HP loss मुझे नहीं लगता शायद हो पाएगा वहाँ पे कुछ. Yeah, this round is gone for Akatsuki. एक और बार ये जो aggressive nature है हाई फाइव का, जो aggressive nature Akatsuki खुद उसके लिए जाते थे, now they have to face against it, and looks like as of this moment, you know, they cannot find a way to face against it. So Invi यहाँ पे he'll stay alive. He goes for the spam fire. He knows this round is lost. High five, कंफर्टेबल विन. अकात्सुकी बस ये टाइम ले रहे होंगे टू गो ओवर व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि अब यहाँ पे अकात्सुकी के लिए एक ऐसा मोमेंट आता है वेयर दे नो द नेक्स्ट बॉम्ब साइट इज गोइंग टू बी किचन एंड सर्विस, एंड ये बॉम्ब साइट जितना मैं कहे जा रहा हूँ, इट इज फेवरिंग द डिफेंडर्स. सो इफ हाई फाइव दे टेक द विन हियर, मैच पॉइंट हाई फाइव के हाथ में आ जाएगा, एंड दैट इज समथिंग अकात्सुकी विल श्योरली नॉट लाइक फॉर देमसेल्व्स. दे श्योरली विल नॉट लाइक द मैच पॉइंट गोइंग इनटू द hands of their in their opponents, जबकि ये coastline का map उनका खुद का choice है. So Akatsuki need to win right here. As difficult as it is, this is the point, because if they lose here, then I think the series is done. Akatsuki 1-2 राउंड और जीत जाएंगे, लेकिन हुक्का या किचन की बॉम्ब साइट में जैसे ही हम वापस जाएंगे, जैसे ही हाई फाइव वो बॉम्ब साइट वापस से चूज करेंगे, the match will be theirs, because they sooner rather than later they will end up winning one of those bomb sites. So इसलिए Akatsuki have got to make sure things happen right now. हमने ऐसे comebacks पहले भी देखे हैं. Previously we saw how High Five managed to go from 5-1 all the way to 5-5. उसके बाद हाँ वो हार गए आखिरी के 2 rounds, but anything can happen, and that is the exact reason why Akatsuki cannot lose hope right now. They have to stay motivated. They have to make sure कि एक भी गलती ना हो. So looking at the setup that has been arranged by the defenders, we can see Aruni, we can see a lot of site reconstruction. Capcom भी लिया है Vortex ने, that is quite interesting. And towards the service entrance, yeah, they're just leaving it a bit empty. उन्हें पता है सर्विस एंट्रेंस से अब फर्क नहीं पड़ता, ये जो डोरवे है किचन का, इससे अब सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है. Shinra still going for the spawn peak. There is one attacker right there. Spot कर लिया है. पीक के लिए जाएंगे एक और बार. Rhymes with Buck. इतने ज़्यादा टैग हो गए हैं. The spawn peaks from high five right now. Akatsuki are frightened by it. 2 बार हो गया Rhymes with Buck के साथ that he has been severely tagged right at the start of the round. And उसकी वजह से later on in the round, he cannot be comfortable taking a lot of gunfights. पिछले मैप के MVP थे. इस मैप में
अभी के लिए इस राउंड में डॉक्टर स्टार्ट्स ऑफ, भले ही टैग्स शिनरन दी हो सबसे ज्यादा, डॉक्टर गेट्स द किल ऑन टू हुसैन एंड दैट पुट्स अकात्सुकी राइट नाउ एट ए बेटर एडवांटेज. जब दे आर एट अ बेटर एडवांटेज एंड आई थिंक वर्टेक्स ने बहुत अच्छा क्योंकि अकात्सुकी एग्रेसिव खेल रही है तो उसके लिए आपको कैप्टन प्लेस चाहिए और यही चीज अकात्सुकी कर सकती थी जब वो हाईफाई के डिफेंस में थी, हाईफाई के अटैक में थी. सो आई थिंक जब वो फिनका ला रहे थे तो आई थिंक कैप्टन वुड बी अ रियली रियली गुड चॉइस. बट अगेन स्टिल वी नीड टू सी दैट व्हाट लाइनअप प्लेयर्स चूज, किस तरीके से प्लेयर्स खेलना पसंद कर सकते हैं. यहाँ पे डोन इन कर देंगे कैप्टन को एंड कैप्टन इज जस्ट होल्डिंग दैट सिक्योरिटी एरिया, सिक्योरिटी रूम को छोड़ नहीं रहे यहाँ पे. जब तक कैप्टन को आप नहीं निकालोगे आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू पुश किचन वेरी इजीली. एंड या एक फ्लैंक की चिंता आपको बहुत ज्यादा सताएगी. ओ यहाँ पे बहुत क्लोज एंगल है, जस्ट थोड़े से बच गए यहाँ पे. एंड ही नोज दैट जब तक कैप्टन को नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. सो शिनरा यहाँ पे डॉग खेल रहे हैं. सो ओके, थंडरबर्ड को छोड़ के यहाँ पे डॉग लिया गया. आई डोंट नो द करेक्ट रीजन फॉर दैट, बट स्टिल ड्रोन्स यहाँ पे पुटअप किए गए हर एक साइड से. एंड अभी भी नोज दैट मेन डोर से कोई ना कोई जरूर आएगा. सो वर्टेक्स की हेल्प से ही माइट जस्ट बी एबल टू मेक समथिंग हैपन आउट ऑफ इट. एंड अगेन एक नेड आ चुका है यहाँ पे. They have tried each and everything to push out Capcan, but Avidvi will take down Doctor. So Zofia is out of the board. Lifeline आपके पास रही है. Invi will take down Shinra and Ace के Salma charges का तो पता नहीं, but यहाँ पे Capcan बहुत ज़्यादा tag हो चुके हैं and he will be taken down by Invi. So double kill on his side and Vortex will be taken down. Avidvi will take a kill onto Atharva and make it really really tight for themselves. Avidvi यहाँ पे बहुत कम HP पे है Taha. So it's practically a 1 versus 2 because Rhymes with Bug भी यहाँ पे निकल चुके हैं, लेकिन Taha will take a kill onto Jackal. So things have been evened out. 31 seconds. Death Amar will take down Avidvi. So Taha in a 1 versus 2 and he has a lot, मतलब कमी HP बची है बहुत ज़्यादा. Diffuser dropped है. So the diffuser is not inside, it's not with the players, it has been dropped into Sunrise Bar. So यहाँ पे diffuser लेना होगा, लेकिन Invi making things very very easy for Akatsuki and they believe they are still in the game. Yeah, Akatsuki have to believe that they're in the game. सिर्फ अभी 2 राउंड का डेफिसिट है, काफ़ी ज़्यादा है. But I have to say that at the moment, you know, things are very very high. Akatsuki, they have called for the pause here. Maybe a technical issue. I'm not completely sure what the issue is. लेकिन अभी के लिए I've got to say that things are really heating up. So with High Five, you know, being at that 2-round advantage, High Five must be thinking of something कि कैसे वो जल्दी से जल्दी मैच पॉइंट ले लें. क्योंकि जैसे ही मैच पॉइंट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट लाइक एक तो इट्स अ सेफ हेवन फॉर योर टीम, राइट, कि यू मेक श्योर कि आपकी टीम यहाँ पर दे आर लुकिंग गुड. एंड अगर आपकी टीम अगले 3-4 राउंड्स भी हार जाएं, यू कैन स्टिल गो इन टू ओवर टाइम एंड ओवर टाइम में भी कुछ हो सकता है. राइट नाउ फॉर द साइड ऑफ High Five, it will also mean कि जैसे ही मैच पॉइंट आ जाएगा, their opponents Akatsuki, they will be constantly thinking कि okay, मैच पॉइंट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, we need to win like 3 rounds in a row, that is a lot, we cannot make any mistakes. and वही ये mental battle बहुत ज़्यादा होती है, especially in a best of 5. It is these early mental battles that can lead to, you know, players tiring themselves. Obviously physically tired तो हो सकते हैं, but mentally as well, it's a big thing. So every single player, they've got to make sure that they give equal amounts of energy to every single map. अभी भी हम स्टार्ट में इस बेस्ट ऑफ 5 के. इफ Akatsuki win here, then हाँ, you know, सीरीज पॉइंट आ जाएगा बेस्ट ऑफ 5 का, पोटेंशियली 3 मैप्स में हो सकता है. बट इफ High Five win, then we may be promised like an entire best of 5, 4-5 मैप्स हमें देखने को मिल सकते हैं. And if that is the case, well, there is still a long ways to go. So for that very reason, players have got to make sure that they are fine, that they are, you know, they have the energy in them, they've got the physical reflexes as well, they are not tiring themselves out. अभी अगर हम बात करें, High Five are yet again choosing to go to kitchen and service for round number 9. And जो इनका operator composition है, well, that is also not changing a lot. You know, we can see that Shinra is back on the dock, Aruni is there, Thunderbird is present as well. So I've got to say, with all of that being said and done, एक Goyo है Hussein का, which Goyo is the one operator we haven't seen so far in this matchup. हमने पहले देखा था, like we saw it in the first half, sorry, but right now, yeah, it's going to be
क्लब हाउस में भी देखा था, बट इवन इन फर्स्ट हाफ कोस्टलाइन के अकात्सुकी भी एक दो बार गोयो लेके आए थे. But it's more about अभी के लिए हम पहली बार देखेंगे. So Vortex will be choosing the Goyo. Hussein is on the Thunderbolt. Things are looking fine. It's not the composition that is the thing for the players. It's about the kills. Because so far kills की अगर हम बात करें, I mean हमने 8 राउंड देख लिए हैं, एंड 8 राउंड में से 7 बार ये हुआ है कि जिस भी टीम को ओपनिंग किल मिलता है दे एंड अप विनिंग द राउंड 86% ऑफ द टाइम्स. 86%. जिस भी टीम के फेवर में ओपनिंग किल जाता है दे एंड अप विनिंग. एंड इट्स दैट रीजन दैट आई बिलीव that right now I've got to say that essentially like opening kill is going to be a very very important statistic दोनों के दोनों teams के लिए. So at the moment how it stands, pressure is a lot. I think we should be resuming in any second. I'm not sure when the players will be ready, but right now what we can see in the attacking side as well, वहाँ पे भी Monty है, Lion है, so we are sure to be seeing some sort of sixth picks happening. एक चीज आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट वो कैप्टन पिक अभी तक मेरे दिमाग में है, क्योंकि बिकॉज जब अकात्सुकी डिफेंस में थी एंड हाइफाई वाज ऑन अटैक, वो एवरी राउंड फिनका यिंग ला रहे थे कंसेक्यूटिवली आफ्टर सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड आई बिलीव. तो आप फिनका आप कैप्टन ले सकते थे इन ऑर्डर टू जस्ट स्टॉप दैट रश. इनिशियल डैमेज बहुत बड़ी चीज है, खास करके अगर आप देखें अविद्वी ने अभी आई थिंक इनवी पे बहुत अच्छा फ्लिक मारा था यहाँ पे राइज विद बक का, जैसे आपने जिक्र किया था कि 2-3 बार इनिशियल डैमेज बहुत ज्यादा खाई है, जो प्राइमरी एंगेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूटिलिटी डैमेज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, खास करके जब आप कैप्टन खेल रहे हो. सो व्हेन यू आर प्लेइंग कैप्टन यू हैव दैट एज with yourself. अगर आपके EDD टैब से कोई भी someone is tagged, it could be a easy kill, tenderized kills for you. So अगर आप easy kills लेना चाहते हो तो why not go for picks like Capcan. Frost भी ले सकते हैं अगर if you are comfortable with the lineup. So far I just have that one particular thing in mind कि क्यों नहीं पहले कैप्टन लिया. अगर कैप्टन ले ले तो शायद डिफेंसिव हाफ उनके हाथ में चला जाता था बहुत अच्छे मार्जिन तक. But still, we are just waiting here for the players. I think कुछ तो कुछ है. लेकिन एक और चीज है कि जिस तरीके से अविद्वी has been popping out since map number 1 since yesterday, तो वो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है. एंड अगेन वर्टेक्स पिछले मैच में शो अप नहीं कर रहे थे, यहाँ पे वर्टेक्स भी अच्छे से खेल रहे हैं यहाँ पे, एंड ताहा इज आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल. बट एक चीज है कि इन भी बहुत ज्यादा पीक कर रहे हैं. वाइल इन डिफेंस ही वाज जस्ट पीकिंग ईच एंड एवरी राउंड. इनिशियल जो पीक्स होते हैं उसके लिए बहुत पुश कर रहे थे. फ्रैग्स ऐसे होने चाहिए जो खुद ब खुद आपके पास चल के आए, ना कि यू जस्ट पुश ईच एंड एवरी फ्रैग. व्हेन यू आर एट दैट लेवल ऑफ पुशिंग तब आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो एंड यू कभी ना कहीं आप गलती कर देते हो कुछ ना कुछ. वो हो सकता है. कल भी हम अकात्सुकी के जब गेम देख रहे थे कोहेजन के अगेंस्ट, देयर वर सर्टेनली अ फ्यू राउंड्स जहाँ पे अकात्सुकी थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे. लाइक दे वर गेटिंग अ लिटिल टू अग्रेसिव एंड दे वर जस्ट पुशिंग दोज एंगल्स. कहीं भी विला के मैप में हमने काफ़ी बार देखा था हॉलवेज में अकेले जा रहे हैं बिना बहुत ज़्यादा इन्फो के. थोड़ी बहुत इन्फो होगी, पुश कर देंगे, पीक कर देंगे, एंड दैट रियली वॉजंट द बेस्ट. एंड नाउ इवन दो तब वो कोहेजन के अगेंस्ट जीत गए, राइट नाउ इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. राइट नाउ हाई फाइव against, they are for the first time in this entire showdown series at a lower level. They are falling behind. They have to play that catch up role, and uski wajah se mere ko yahan par kehna padega that for the side of Akatsuki they've got to make sure that they do not make any mistakes. wahi hum match point ki kitni baar baat kar chuke hain that as soon as high five get that match point they will be looking really really comfortable. They'll be at the top of their game, and they'll make sure ki bas ek aur round and they'll be etching the win in their opponent's map, and series score 1-1 equalize हो जाएगा, and we will be back to square one. Best of 5 की जगह best of 3 हो जाएगा, where 3 maps or so will be remaining. So I've got to say that at the moment वही Akatsuki को now they've got to make sure that at the moment they do not give any single opportunity
play the most precise Rainbow Six, play passive Rainbow Six. I mean, वो लोग attack पे हैं, they can't really play a lot of passive, उनको aggressive होना ही पड़ेगा. Do not take unnecessary gunfights. I'm seeing वापस से Rhymes with Buck इस बार Monty पे आ गए हैं. Maybe that's going to be a 6 pick as we continue with the round as soon as it resumes, or maybe not. If he chooses to play the Monty, that can be a bit of I don't know, that can be a bit dangerous for the defenders as well. But yeah, he's got to make sure. Or maybe Rhymes with Buck has taken the Monty because, tang aa gaye ki main spawn hota hu, and people just damage me so much with spawn peaks. And you know what? Monty hai, ab maar ke dikhao. Maar hi nahi sakte. So whatever it may be, whichever reason he's taken the Monty, I think it can lead to good attacks, but then again वापस से किचन सर्विस की बॉम्ब साइट आई है, एंड वापस से वहीं पे सेम मसला आ सकता है कि डिफेंडर्स आर जस्ट लुकिंग टू गुड. दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ एन अटैकिंग साइड विनिंग ऑन किचन एंड सर्विस. नाउ इज इट गोइंग टू बी द सेम? लेट्स फाइंड आउट एज वी रिज्यूम राउंड नंबर 9. और यहाँ पे वार्डन पिक किया गया है, पता नहीं. आई पर्सनली लाइक वार्डन. वैसे तो मैं उनको दूध वाला बुलाता हूँ वार्डन को, बट ही लुक्स लाइक दैट, बट नो दैट्स अ फनी पार्ट ऑफ इट. बट या, वार्डन एक अच्छी चीज है बिकॉज उनको लगता है कि शायद वो यिंग लाएंगे, बट इनवी ने यहाँ पे एज छोड़ के लिया है फिन का. तो अगर कहीं जाके अगर ये 2 राउंड उनके हाथ में चले जाते हैं अकात्सुकी के हाथ में, तो आई थिंक इट वुड बी रियली इजी फॉर अकात्सुकी टू मेक दिस मैप into their hands. But still you don't know what hi-fi के हाथ में क्या क्या ऐसी गन्स है जो वो छुपा के रखे हैं, और क्या क्या ऐसे स्टार्ट्स है जो बाद में लाएंगे. शिनरा 7 किल्स पे, वर्टेक्स 8 पे, अहिद भी 8 पे, ताहा 4 पे, हुसैन 3 पे, और दूसरी जगह डॉक्टर 7 पे, अमर 8 पे, इनवी ऑन 7, राइज विद बक पे 3, एंड लास्ट वन अथर्वा ऑन 1. अथर्वा का दिन आज नहीं चल रहा है. आई थिंक क्लब हाउस में भी इतना ज्यादा भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया. आई थिंक ही वाज क्लोज टू अराउंड 6 और 8 किल्स. स्टिल इट्स डिसेंट, बट इस मैप के लिए ज्यादा नहीं है. तो यहाँ पे शिनरा और एक एग्रेसिव पिक ले लेंगे, एग्रेसिव पिक लेंगे, और शुरू में ही इनका बूस्ट दे दिया. नैनो बॉट्स यहाँ पे एक्टिवेटेड है. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. ओके यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन ली ड्रोन्स के जरिए, एंड नाउ द अटैकर्स आर लुकिंग टू गेट सम मैप कंट्रोल एज वेल. एक और बार मॉन्टी यहाँ पे जिम एंट्रेंस में आ गया है, जस्ट प्रेशराइजिंग द डिफेंडर, प्रेशराइजिंग शिनरा इनटू गोइंग फॉर दो शॉट्स. 2 डिफेंडर्स यहाँ पे काफ़ी स्नीकीली स्मोक आ गए हैं बार काउंटर के पीछे, एंड ही यूजेस वन ऑफ हिज स्मोक कैनिस्टर्स क्वाइट अर्ली इन द राउंड. माइंड यू, काफ़ी जल्दी हुआ है जब उन्होंने स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया है. Rhymes with Buck still going for the gunfights, has been isolated. Lion का scan भी आएगा, the smoke canister bounces off the shield. So 3 में से 2 स्मोक कैनिस्टर्स यहाँ पे यूज हो गए हैं. हाई 5 अपनी काफी यूटिलिटी यूज कर रहे हैं, बट सो फार इट इज नॉट वर्किंग दैट मच as Invi gets the opening kill onto Hussein. Finka will be using her ultimate as well. Deathmar jumping in. Now can he get the kill? Can he backstab these guys inside of Sunrise? Yes he can. 1 kill मिलेगा शॉटगन के साथ. स्मोक काउंटर के पीछे हैं, शॉट्स के लिए जा रहे हैं. Amar is holding the angle. Rhymes with Buck is right there. The pressure, smoke is under. Frag grenade, flashbang, सब कुछ आ जाएंगे, and smoke dies alongside with the alongside Taha right there, and Akatsuki win this round. My God, that was not. I mean that was not Sunrise bar. वहाँ पे Sunrise जैसी कोई चीज नहीं हो रही थी. That was a war zone. That was World War II. मतलब जब इंग्लैंड ने नॉर्मंडी की बीच पे गए थे, सेम सीन चल रहे थे वहाँ पे. एक अकेला क्या ना हैंडल कर ले. But yeah, unfortunate for Smoke, unfortunate for High Five right there. They did not manage to win the round, and Akatsuki are closing the score. 5-3 से 5-4 हो गया. Yep, it was a complete war zone, as you like to call it, the gulag. But still, यहाँ पे I don't think the Smoke could. Okay, लेकिन काफी ऐसा इनसे देखो, मेरे को 2 लोग चाहिए, ठीक है, तो मैं 2 लोग रख रहा हूँ, ठीक है. इट्स माय थिंग. बट आई थिंक स्मोक उस जगह, यप, उसमें स्मोक उस जगह पे कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज अगर एक बार आपका डॉक मर जाता है, एंड एक इजी एंट्री मिल चुकी थी ब्लू बार में. जैसे ही ब्लू बार में आ गए, वहां पे स्लेज ने हथौड़ा मारा, ही टुक ऑफ दैट सनराइज वॉल, एंड इजी किल मिल गया डॉक पे. तो एक बार जब डॉक निकल गए तो स्मोक के पास भागने का भी कोई चांस नहीं था, और ऊपर जाके अगर पीक भी करते तो देयर वर 3 प्लेयर्स हु कैन इजीली टेक ऑफ दैट ट्रेड.
गॉड नोज व्हाट हैपेंड विद हिम, कितनी एकदम फ्रस्ट्रेशन हो गई होगी उनके साथ। लेकिन स्कोरबोर्ड पे आप देख ही सकते हैं डॉक्टर और इनवी, तो इनवी भाई बहुत ऐसे लगते हैं कि ही हैज जस्ट पम्प्ड अप। उन्होंने बोला आप फिनका खेलोगे, हम भी खेलेंगे, वी विल आल्सो प्ले सम फिनका इन लाइन इन ऑर्डर टू गेट यू बैक इन लाइन। एंड या आई इट इज सीमिंग लाइक दे आर डूइंग सर्टेनली जस्ट दैट। 5-4 स्टिल एक राउंड दूर है इवन आउट करने के लिए। अगर आकात्सुकी ने ये कमबैक किया तो आई डोंट नो, हाई-फाई के प्लेयर्स विल बी किकिंग देमसेल्व्स प्रीटी बैड। या हाई फाइव के यहाँ पे अच्छी लीड उन्होंने बिल्ड की थी, बट स्लोली बट स्टेडली द लीड इज गोइंग अवे। एंड एक और बार Akatsuki, they are so close to equalizing the score that every single player can feel the pressure in either one of these teams. So let's start off, वापस से Monty आ गया, rhymes with Buck, even though he is like one of the players. I mean right now he doesn't have a high KD. I mean उल्टा हुआ है जैसा क्लब हाउस में हुआ था। He's having a bit of a silent like game right now, only 3 kills after like 9 rounds, but he knows कि टीम के लिए ज्यादा यहाँ पे खेलना है। After all, the teams are playing for a 75,000 rupees prize pool, तो इसलिए अपने kill से ज्यादा prioritize टीम को करना है, and that's exactly what Buck is doing right there by playing the Monty. So that's all well and good. He has been an influential figure. पिछले राउंड में हमने देखा Monty से कितना ज्यादा तहलका मचा रहे थे। एक और बार यहाँ पे भी मैप कंट्रोल ले रहे हैं। Deathmar is right here in security room. Atharv is rappelling on outside the main entrance of the building. So everyone in Akatsuki is ready to execute map control. उन्होंने first floor का ले लिया है, and now it's just a matter of कि second floor का map control कितना जल्दी ले सकते हैं। Drones जा रहे हैं luggage में, Aqua में भी drones जा रहे हैं, सारे defenders को clear कर रहे हैं, frag grenades toss हो रहे हैं। Oh, this can be big. Can Deathmar get the frag grenade? Oh, he tags his SAS teammate. लेकिन अविद भी अभी भी जिंदा रहेंगे और उनके स्मोक कैनिस्टर्स भी अभी के लिए जिंदा रहेंगे। सो हाई फाइव, दे टेक अ बिट ऑफ एचपी डैमेज, बट दे कैन ऑब्वियसली हील देमसेल्व्स एनी टाइम दे वांट विद द कोना स्टेशंस ऑफ थंडरबर्ड। मॉन्टी यहाँ पे प्लांट के लिए रेडी हैं। वेयर इज स्मोक? वेयर आर स्मोक्स कैनिस्टर्स? वेयर इज द C4, नॉट द कैनिस्टर्स। C4 पूरा का पूरा आया, ताहा को किल मिल गया। आई डोंट नो व्हाट Akatsuki वर प्लानिंग राइट देयर। What was this plan to just plant the diffuser जब कोई भी नहीं मरा था? That was just very very miscalculated. हुसैन को एक और किल मिलेगा and just a bad round overall for Akatsuki. Yep, with that 5 versus 2 हो चुका है यहाँ पे। Vertex निकाल लेंगे अथर्व को, और इसी के साथ अगर ये जीत गए तो मैच पॉइंट पे they will be easily available, and हुसैन यहाँ पे डॉक्टर को निकाल देंगे। एंड इनवी इज द ओनली वन रिमेनिंग। शी इज द फ्रेंच ऑफ, आई एम सॉरी, शी इज द रशियन ऑफ GIGN, बट हुसैन विल बी टेकन ऑन बाय इनवी। तो यहाँ पे उनको पता चल चुका है कि नीचे से आने वाली है, एंड आई डोंट, कैमरा ने भी टैग कर लिया। सो देयर विल बी 2 प्लेयर्स वेटिंग फॉर हिम टू ग्रीट, एंड आई थिंक नेड ऊपर चला जा सकता था, लेकिन ADS था। एंड एक अच्छा किल अबीद भी की तरफ से आते हुए, एंड विल बी फोर्सिंग ऑन टू मैच पॉइंट फॉर द साइड ऑफ Hi-Fi Esports। एंड 6-4 आई एम सो सॉरी 6-4। तो अभी उनको 2 राउंड और जीतने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू टेक इट टू ओवर टाइम, पुशिंग इट टू ओवर टाइम, एंड लुक्स लाइक will they be able to make it or not? It's the question. Yeah, that is the thing that नॉट कम्प्लीटली श्योर Akatsuki क्या ट्राई कर रहे थे। वो बहुत अच्छे से 5-5 कर सकते थे स्लोली स्टेडीली खेल के, बट it just went wrong with that plant from Buck. There was no cover whatsoever. कोई भी उनके एंगल्स चेक नहीं कर रहा था Aqua से। He was just all alone. एक C4 आया ताहा की तरफ से, and that was it. So I've got to say that right now Akatsuki, they brought this on themselves. I'm not sure why वो ऐसे पुश के ले गए थे, what they were trying to achieve right there, but it backfired. And now एक और बार हम सेम बॉम्ब साइट में जाएंगे किचन एंड सर्विस की। Hi-Fi are not changing this anytime soon. This is where I'm a little bit worried for Hi-Fi as well कि exactly वो यहाँ पर क्या प्लान करेंगे। They know कि किचन सर्विस में उनको सक्सेस नहीं मिला है। 2 बार हमने बॉम्ब साइट देखी है, दोनों के दोनों बार Akatsuki वहाँ पे अपने लिए विन लेके गए हैं, and it's that reason that uneases me a little bit, that what exactly will be happening on the side of the attackers. What exactly are they planning right now? How exactly do they sorry, not on the side of the attackers, on the defenders,
उनको एक और राउंड चाहिए जीतने के लिए, plain and simple. If they win one more round, they take the map for themselves. So high five, it can be good if they try and go to like Sunrise Bar. Penthouse जाना अभी के लिए मुश्किल है because हाँ एक अच्छी बॉम्ब साइट है, नई बॉम्ब साइट आई है, but like what happened with Akatsuki, जब वो अपने डिफेंस में पेंटहाउस में गए थे, they faced defeat. So इसके चक्कर में शायद से हाई फाइव नहीं जा रहे हैं, but going back to kitchen and service, yeah, that is very very difficult and that is a very risky position क्योंकि I still think ये round Akatsuki जीत सकती है just because of how their previous attacks on this bomb site has been going. जो war zone यहाँ पे बन जाता है उसी की वजह से एक और बार war zone की बात कर रहे हैं. Then Athar, he gets the opening kill onto Vortex as the Jaeger is gone. So Jackal already scanning multiple players, he's looking out for them. Hatch भी यहाँ पे खुल जाएगा. He is looking for those angles and right now दो members चले जाएंगे हाई फाइव की साइड से. जो एंकर थे बॉम्ब साइट में वो भी गए, यू नो सनराइज के members भी जा रहे हैं. एक बंदा सेकंड फ्लोर पे फ्लैंक करने का ट्राई कर रहा है, but I don't think it's really going to be that successful. Yup, welcoming into the Gulag, they are here. 3 members आ चुके हैं किचन के बाहर and इन भी एक नेट टॉस करके चले जाएंगे अंदर. मे बी he's just waiting for someone, but no, he's just waiting for an approach from all of the defenders. but यहाँ पे सर्विस में कोई भी नहीं है. अथर्व will take down अवीद भी यहाँ पे अथर्व को टेक डाउन करेंगे. ट्रेड अच्छा आ जाएगा उनके पास. स्टिल बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में until unless something big is popped off from him. 2 versus 5. यहाँ पे हुसैन द थंडरबर्ड is coming back from the surface entrance और यहाँ पे एक इजी किल मिल जाता वो ताहा को डॉक्टर के ऊपर. So हुसैन and Taha back on track. The diffuser has been planted, but still Deathamar is the one who will take down Taha, and it's all up to Thunderbird, the Hussein, in a 1 versus 4, but still he won't be able to make it, and it's 6-5, just 1 round to push it to overtime, and I believe Akatsuki can make it, but अगर फिर से शिनरा और उसकी टीम ने कोई चीकी प्लेस किए और अफगाट पकड़ लिया Akatsuki को, so this map would be done and dusted just for once for all, and 1-1 series हो जाएगा, and we'll push it to the third map. एक और बार जैक्स, एक और बार किचन एंड सर्विस. ओके, दिस इज yeah, this is very interesting right now that, you know, yet again they're going for that push onto kitchen and service. So I'm not going to lie, you know, 4 बार ये बॉम्ब साइट लेके, I mean obviously हाई फाइव को एक ही विन चाहिए. That right now, you know, all they need is a single win on this bomb site, but still it's going to be yeah, it's going to be very very difficult. I've got to say that right now kitchen and service पे वापस से जीतना, I don't really think it'll be that possible. I think Akatsuki have this in the bag. You know, the players are looking to call for the resume. Yeah, both teams have confirmed the resume, so I think we can start off back again. So yeah, round number 12 वापस से उसी की तरह, you know, वापस से क्लब हाउस के मैप की तरह राउंड नंबर 12 it's going to be potentially now, मेरे हिसाब से चांस है कि ओवरटाइम देखने को मिलेगा because of the bomb site that High Five have gone for yet again, but no one really knows. Who knows, एक last round miracle हो सकता है High Five के लिए and they can take the map for themselves. And Jax, जैसा आपने कहा, they can equalize the score 1-1 of this series, which will really open up new possibilities as to anything in this game taking place. But for now, looking at the setup, reinforcements हो रहे हैं, rotations are the same, so the setup is same in these bomb sites. Setup में कोई variation नहीं आया है. I think operator roles में भी ज़्यादा variation नहीं आएगा सिवाय एक change के. Hussein will be playing the clash, and where exactly will the clash be played? मेरा मानना है कि somewhere around Sunrise, I think inside of Sunrise Bar will be where Hussein will be situated, ताकि वो Monty versus Clash, you know, दोनों shields एक दूसरे को block कर दें and attackers के लिए entry लेना वहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है. and वही चाहते हैं High Five के members. They want to waste as much time as possible. पिछले round में problem हो गया that, you know, side control attackers ने बहुत जल्दी ले लिया, and because they had side control they just planted the diffuser, and उसके बाद it was a very easy post plant scenario. अभी ऐसा अलाउ नहीं करने देंगे हाई फाइव. नाउ दे आर टेकिंग थिंग्स पैसिवली, टेकिंग थिंग्स स्लोली. दे अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा प्रेशर इस एक राउंड पे है. पूरी की पूरी सीरीज इस पे निर्भर करती है. द प्राइस पूल ऑल्सो इन अ वे डिपेंड्स ऑन दिस 1 राउंड. अगर हम ओवर टाइम में जाएंगे या नहीं जाएंगे. मॉन्टी वर्सेस क्लैश विल बी फेसिंग ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, एंड येट अगेन how exactly will you be getting rid of this clash? Flashbangs आएंगे काफ़ी ज़्यादा. शिनरा को ओपनिंग किल मिलता है, लायन का स्कैन आएगा, but High Five are looking like the better team right now. Yep, they're obviously looking for the better team, but अथर्व यहाँ पे easy kill ले लेंगे शिनरा भाई का, and
an eye for an eye, but Taha is taken down by Doctor. तो यहाँ पे डॉक्टर ने डॉक्टर को ही निकाल दिया, बट स्टिल यहाँ पे एक और चीज है कि अगर अकात्सुकी loses the balance once again, तो शायद ये राउंड फिर से निकल जा सकता है, लेकिन अभिद्वी is the game changer man over here. We have Clash still in the game present here. किचन का डिफेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा. वर्टेक्स यहाँ पे ब्लू बार में है, so I don't know what is he trying to do. ड्रोन यहाँ पे देख चुका है, and Vertex is spotted out over here, and he just might be able to make it happen, but no, अभी we will take another Tharba. तो यहाँ पे जैकल निकल जा चुका है. यहाँ पे क्लैश और मोंटी के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, और 1 मिनट 19 सेकेंड अभी तक कुछ गया नहीं आपके हाथ से. बहुत आप कर सकते हो, लेकिन नो, why take a 1v1 engagement against Jaeger, और तब भी जब आपकी शील्ड आपके गार्ड पे नहीं है. That's one of the worst things and which we talked about कि अगर आकाशुकी अपना कूल लूज कर गई तो शायद ये राउंड फिर से जा सकता है. They are on match point. It's not a series point, but still एक मैप आ सकता है and we will take down Vortex. He has been caught off guard once again. So 50 सेकेंड बचे हैं यहाँ पे, and he needs to take the diffuser and make it and go for the plant. But without removing the clash, आप शायद ही प्लान कर पाओगे या तो कुछ कर पाओगे. बट इनवी यहाँ पे रिलोड कर देंगे. गॉन 6 यहाँ पे टूट जाएगा, एक विंडो यहाँ पे निकल जाएगी. स्मोक ग्रेनेड हैज बीन पॉप्ड आउट, सो वन कैनिस्टर हैज बीन पॉप्ड आउट. यूज हो चुका है, डबल भी यूज कर देंगे इन ऑर्डर टू स्टॉप द अटैकर्स टू डू एंड एक्सिक्यूट. बट यहाँ पे सर्विस पे जा रहे हैं. ओके, तो आई वंडर हाउ इनवी विल बी एबल टू कवर हिम फॉर नाउ. बट आई थिंक इनवी को ये करना ही होगा यहाँ पे, and he just needs to go in for the plant. यहाँ पे plant करना होगा, अगर plant नहीं करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा. यहाँ पे 6-5 Abhidvi will take down him. It's Envy versus Abhidvi, but Abhidvi manages that to clutch it out, and the second map goes out into the hands of High Five. Yep. हाई 5 7-5 सेम स्कोर जो हमने देखा था क्लब हाउस के मैप पे. ओनली डिफरेंस इज द टीम्स हैव चेंज, द सीरीज हैज बीन इक्वलाइज्ड 1-1. व्हाट एन इंटेंस बेस्ट ऑफ 5 सो फार. 2 मैप्स देखे हैं, दोनों के दोनों मैप्स में 12 राउंड्स में हम गए हैं. एब्सोल्युटली नथिंग हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम आइदर वन ऑफ दीज टीम्स. राइट नाउ बोथ आर ऑन इक्वल फुटिंग. अगला मैप होगा, you know, anything can happen there on the map of Oregon. I've got to say, like, at this point, no one really knows what's going to happen because these teams are just, you know, giving it their level best. अब काफी ज्यादा चीजें आ जाएंगी. You know, map पे क्या High Five का, they won their opponents पे, can they get series point? You know, starting में एक map down होने के बावजूद Oregon पे जीत के, coastline पे जीत के, they can be the ones in an advantageous position right now. But I don't think Akatsuki are completely going to let that happen. I think Akatsuki themselves are going to be Akatsuki themselves are going to, you know, really be pushing for the win right here. उन्हें भी series point चाहिए, and that's the thing. Best of 5 से in a way अभी best of 3 बन गया है. 3 मैप्स हैं हमारे पास, दोनों के दोनों टीम्स 1-1 के स्कोर की जगह 0-0 भी हो सकता है. इट्स जस्ट बैक टू स्क्वायर 1. सो जो भी टीम यहाँ पे जीतती है, दे गेट सीरीज पॉइंट, एंड उनके अपोनेंट्स के पास सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड चांसेस नहीं बचेंगे बहुत ज्यादा. अभी कोस्टलाइन की मैप की बात करें, येट अनदर मैप जहां पे हमने इतने ज्यादा इनिशियल किल्स देखे हैं, इतने ज्यादा, लाइक दैट इज द वन स्टैटिस्टिक आई एम स्टिल गोइंग टू टॉक अबाउट. यू नो, 12 राउंड्स में से 11 राउंड्स में जिस भी टीम को ओपनिंग किल मिला, दे एंडेड अप winning. That is how important it is. I know I'm talking about this one a lot. मैं काफी ज्यादा initial kills की वैसे ही बात करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, but the statistics here speak for themselves. Whichever team is getting the opening kill, more than enough times they end up winning the round. बहुत कम rounds ऐसे हुए हैं जहाँ पे एक टीम को opening kill मिला है और वो हार गए हैं. So going into Oregon, ये भी एक चीज होगी जो हर एक राउंड में, you know, सारे प्लेयर्स के दिमाग में होगी कि क्या मेरे को opening kill के लिए जाना है, do I need to go for it or should I not? But right now on the map of coastline, yeah, kitchen and service, जैसा हमने High Five के बारे में कहा था, 3 बार वो ये बॉम्ब साइट हार गया, लेकिन ये क्लैश का पिक काम कर गया. हुसैन, he brought out the shield and the shield worked right towards the end. 1v1 था, anyone could have won. It could have been Avidvi, it could have been Envy, Avidvi's SMG-11. It worked the magic right there, and एक वो kill पूरा का पूरा दोनों टीम्स का फेट डिसाइड कर सकती थी. बिकॉज हैड इनवी वन दैट गन फाइट, वी कुड हैव बीन इन ओवरटाइम, वी कुड हैव बीन, यू नो, एंड अकात्सुकी भी जीत सकती थी, गेटिंग सीरीज पॉइंट फॉर देमसेल्व्स. बट राइट नाउ देयर अपोनेंट से नो, इतना जल्दी नहीं.
Abhi, even we will give it our level best, and that is exactly what has happened so far on the map of Coastline. So Jax, in an overview, Coastline में what was the most interesting thing to see किसी भी टीम या किसी भी प्लेयर के बारे में? आई थिंक एक चीज स्टैंड आउट हुई है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक प्लेयर ने परफॉर्म किया है यहाँ पे इस मैप पे, नॉट जस्ट फॉर द लूजिंग टीम, फॉर द विनिंग टीम एज वेल। क्योंकि लास्ट मैप, आई थिंक लास्ट मैप यहाँ पे ताहा कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे यहाँ पे। अथर्व लास्ट मैप थोड़ा पॉप आउट हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत शांत थे और फिर से ही पॉप्ड ऑफ अगेन। सो एक चीज है कि जैसे कि आपने बात किया, जिसको स्टार्टिंग के पिक्स मिले वो राउंड जीता है। So one more thing to highlight कि players यहाँ पे plant के लिए नहीं जा रहे थे, players were just coming here for the kills, क्योंकि I think out of 12 or 11 rounds, I think दो में ही प्लांट डिफ्यूजर प्लांट हुआ था। आई थिंक दो में ही डिफ्यूजर प्लांट था और दोनों के दोनों आई थिंक किचन में ही थे। फ्रॉम द आइदर साइड I'm talking about the attackers and the defenders as well. So yeah, so सिर्फ दो ही बार डिफ्यूजर प्लांट हो रहा है, तो मेन फोकस आपका साइड में स्पेस क्रिएट करने के बाद प्लांट का होना चाहिए, ना कि बस स्किल्स के लिए भागने के लिए। सो आई थिंक अकात्सुकी वर जस्ट डूइंग दैट। आई थिंक ये हाईफाई भी कर रही थी, लेकिन काफी हद तक उनको दे वर गेटिंग सक्सेसफुल एट दैट। वो सक्सेसफुल हो रहे थे सिर्फ किल्स के मामले में। बट अगर आप बात की जाए अकात्सुकी की, तो इन डिफेंसिव साइड में बहुत ज्यादा राउंड्स थ्रो हो गए, ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि बिकॉज प्लेयर्स लाइक इनवी एंड डॉक्टर वर गेटिंग रियली एग्रेसिव जहाँ कोई जरूरत नहीं थी। व्हेन यू हैव अ पिक or when you do not have a pick, and you want a pick, just don't become desperate and go out for kills, because attackers को आपके पास आना है, they need to come towards you, and to make that happen you just need to sit in one place. That's so easy of that, but still कुछ गलतियां की इनवी और डॉक्टर ने भी, और ऑफ कोर्स Hi-Fi ने भी की, but still Hi-Fi was the better team after all. But let's look at the stats. Invi with 12 kills, Amma with 12, Doctor with 9, Atharva with 5, and Rhymes with Buck with 3. So अथर्वा यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर आ रहे हैं और राइम्स विद बक यहाँ पे 3। तो केडी यहाँ पे सबसे ज्यादा इनवी की है 2.0, एंड विल कॉल आउट विद अवीदवी 13 kills 2.17, केडी 11 kills from Vertex, 8 kills शिमला की तरफ से, ताहा 6 और हुसैन 5. So somewhat Hussein यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए, I don't know what has gotten into him, but still they win this match for sure. Yeah, for the side of High Five, great. On the side of Akatsuki as well, Invi, yet another good performance. Deathhammer, Doctor, इन सबकी तरफ से Rhymes with Buck, the MVP of the previous game, जिनके 13 kill थे 12 rounds में, averaging a KD of above 1. But right now, I've got to say that for the side of for Rhymes with Buck himself, that's a bit unfortunate that he cannot get anything. कुछ भी नहीं ज़्यादा नहीं कर पाए इस वाले मैप पे। सो होपफुली इट्स अबाउट द प्लेयर परफॉर्मेंसेस एज वेल एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये दोनों टीम्स काफी अग्रेसिव हो रही हैं एंड क्योंकि ये काफी ज्यादा किल्स के लिए जा रही हैं, वी हैव टू से दैट एवरी सिंगल प्लेयर हैज टू परफॉर्म टू देयर मैक्स कैपेबिलिटीज। दे हैव टू मेक श्योर कि कोई भी अंडर परफॉर्म ना करे। नाउ इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। अब जब ये बेस्ट ऑफ 5 से सिर्फ 3 मैप्स बचे हैं, मे बी इवन 2 मैप्स, डिपेंडिंग ऑन इफ अ टीम मैनेजेस टू get 2 consecutive wins, then I've got to say right now anything can happen. But right now हमने underperforming players के बारे में बात की. Now let's look at the best players of this map wise जो हमारे दो MVPs हैं दोनों teams के, उनका एक head to head देख लेते हैं and who were the better players right there. So let's have a look at the 2 MVPs. Those are going to be from the side of High Five yet again. Vidvi, roughly same performance, 13 kills, 6 deaths, and then Deathmar as well with 12 kills, 8 deaths. KDR, दोनों players का बहुत अच्छा maintain कर रहे हैं. Like Vidvi above 2 KDR, that is amazing. Deathmar as well with 1.5. So I've got to say that both of these players are giving it their level best, and yeah, they absolutely deserve to be at the top of the table, looking at how many kills they are getting. Yep, absolutely. और यहाँ पे अमर का मैं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगा, बिकॉज एज यू नो ही इज द आईजीएल फॉर दिस टीम, एंड बहुत ज्यादा टास्क होते हैं उनके पास, स्टिल मेंटेनिंग दैट फ्रैगिंग लेवल एज वेल एज मेकिंग दैट आईजीएल लाइक थिंकिंग होती है इन गेम. सो दैट्स अ वेरी गुड साइड फ्रॉम हिम. एंड अगेन अवीद भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे, एंड स्टिल आई थिंक ये मैप जा सकता था उनके हाथ में. बट अगर हम देख लें तो ओवरऑल MVP फॉर दिस मैच फॉर श्योर, लेट्स टॉक अबाउट दैट.
अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 13 किल्स। सो एक चीज हमने पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया, कल भी वो कंसिस्टेंट थे, आज भी कंसिस्टेंट थे, फर्स्ट मैप में भी और सेकंड मैप में भी स्टिल कंसिस्टेंट विद दैट केडी ऑफ 2.17। 6 डेथ 0 असिस्ट, तो डेथ भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, स्टिल ही हैज मेंटेन दैट लेवल। सो यहाँ पे आई थिंक ही ऑलवेज लुक्स ऑन फॉर दैट सपोर्टिव रोल। थर्माइट खेलते हुए नजर आते हैं हमको हमेशा। थैचर भी अभी खेला था अटैक में, आई बिलीव उन्होंने दो या एक बार एक राउंड में, 2 राउंड में, तो आई थिंक सो ही इज ऑन दैट सपोर्ट रोल, बट स्टिल इतने मतलब इम्पैक्टफुल फ्रैग्स लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत है इनमें। एब्सोल्युटली, वही थैचर खेला, थर्माइट, अरूनी खेल रहे थे, स्मोक भी खेला इन्होंने। सो डजेंट मैटर कौन सा ऑपरेटर रोल निभा रहे थे वो, ही वाज जस्ट पुटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ फॉर द पास्ट 2 मैप्स, एंड होपफुली ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती रहे उनके लिए, बिकॉज हिज टीम नीड्स इट एंड बोथ द टीम्स नीड एवरीथिंग फ्रॉम देयर प्लेयर्स राइट नाउ। अब हम ऐसे जा रहे हैं राइट नाउ, इन अ वे वी आर एट द मिडल ऑफ द बेस्ट ऑफ 5। अब इसके बाद से वही सेम वो फिजिकल फटीग आने वाला है, लेकिन उससे पहले पता है क्या आने वाला है जैक्स? As we all can see on our screens right now, Oregon का मैप आने वाला है. No breaks right now. No one needs breaks. The players are ready. We are ready. Hopefully you, the people watching the stream are ready as well. So show the love for all of your teams. I've said it multiple times, but these teams really need as much support as possible from all of their fans watching all across South Asia and all across the world as well. As we start off, Oregon के मैप पे starting ban होगा Flores. So Flores has been taken off the board right here, and High Five will be starting with the attack right now. So High Five yet again in a way कह सकते हैं कि थोड़ी सी disadvantage पे होगी statistically, जैसा हमने देखा है Oregon पे defending team को favor करता है. Now can Akatsuki be the team जो defense में capitalize कर सकती है, जैसा उन्होंने क्लब हाउस के मैप पे किया था? करना तो चाहिए, बिकॉज ये मैप दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से एक भी टीम ये मैप जीत जाती है तो उन पे प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे टू विन। बट लेट्स सी नेक्स्ट टीम, यहाँ पे केद बैन किया है यहाँ पे ब्लू टीम ने। आई बिलीव इट इज हाई फाई हु इज बैनिंग केद। सो यहाँ पे अकात्सुकी विल बी बैनिंग द लास्ट ऑपरेटर, एंड आई बिलीव इट माइट बी अमीरा, बिकॉज मीरा नीचे भी खेली जा सकती है, ऊपर भी खेल सकते हैं, या बैंडिट, म्यूट, स्मोक, व्हाटएवर इट कैन बी। ओके, मीरा, द स्पेनियल ऑपरेटर हैज बीन बैंड so far. Flores, Thatcher, Kaid and Mira, pretty decent bans on a map like this. but यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस की, फ्लोरेस का बैन रेट आई थिंक हार्ट ब्रीचर जितना हो रहा है, नजदीक हो रहा है थोड़ा बहुत, लाइक Yeah, right now I've got to say वो हो सकता है that heart breach, like it is always the center of discussion काफ़ी ज़्यादा उसमें. And again clubhouse के map के जैसे Oregon में भी that is surely a possibility where a lot of the attacks do focus around heart breach. अभी जब हम kids and doms में जाएंगे, 2 heart breachers लिए हैं High Five ने. They've got Maverick, they've got Hibana, Hussein switches from the Monty 2 and Ash. So again entry frag का role होगा. And IQ, oh, this is like one of the very few times जब हमें IQ देखने को मिलेगा. Semi-finals में भी I don't think हमने IQ बहुत ज़्यादा देखा. Nope. And with the new buff that IQ has, time. yeah, that with the new buff that IQ has received, जो वो अपने Z pings कर सकती है using her gadget, वो ज़्यादा मतलब इस लेवल पे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा. थोड़ा बहुत यूज केस होगा, थोड़ी बहुत एडवांटेज होगी, बट इट्स फार बेटर जब आपके टीममेट्स दे आरंट रियली कम्युनिकेटिंग इन रैंक मैचेस, जैसा होता है सिल्वर में मेरे साथ. But personal problems को ignore करते हुए, yeah, we will be seeing IQ Vortex will be playing that operator, so we can see some sort of any gadgets that the defenders will be bringing, वो destroy होने के काफ़ी chances होंगे at the start of every single round. And उन gadgets की बात करें, एक ऐसा gadget है जो डॉक्टर के पास है. डॉक्टर right now playing the Valkyrie with the black eyes. Unfortunately, I think is Doctor lagging a little bit. He may be. Yep, Doctor has disconnected, so it will be a little bit before he can reconnect back. This round में, as of now, Doctor will be out, and that is not the start Akatsuki will be looking for. Already, उनका एक player चला गया है, even before the round has started. High Five can really take advantage of this scenario. Attack में जितने ज़्यादा rounds जीत सकते हैं उतना अच्छा होगा, and this can be the perfect start for them. Yep, this can be the dream start for them for right now. यहाँ पे राउंड शुरू हो चुका है, एक्शन फेज इज नाउ.
हुसैन यहाँ पे याना ले रहे हैं. So the Gemini is totally useful in the maps like these. और यहाँ पे एक yesterday also I pointed out that याना का pick rate significantly बढ़ता जा रहा है because you know Benelux region as real CCV says वहाँ पे पहले यूज होता था बहुत ज़्यादा जब वो नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी competitive pool में out of the quarantine. So after that I think याना का pick rate ऊपर से ऊपर बढ़ते ही जा रहा है. You know in every map we almost get to see 12 राउंड में से एटलीस्ट 7-8 राउंड तो आपको याना मिल जाती है लेकिन वर्टेक्स विल टेक आउट इनवी. सो एक और डिसएडवांटेज मिलते हुए अकात्सुकी को यहाँ पे 5 वर्सेस 3 वेरी वेरी अर्ली 2 मिनट्स 5 सेकंड एंड इट्स अ बेडरूम डिफेंस. सो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. स्टिल यहाँ पे अपने आईक्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पिंग आउट करेंगे कि कौन सा कैमरा कहाँ पे क्या नहीं है. सो 1 मिनट 53 सेकंड्स दे डोंट नीड टू हरी ईच एंड एवरीथिंग. और यहाँ पे सूर्या गेट पिंग आउट कर दिया गया है. आर्टिक के okay. I don't know where was that from. Okay, that was from tower. Yeah, that was from the big tower or rather the second floor tower. तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि अथर्व, Death Amar and Amjad can be aggressive given on many times. So Doctor has returned now. That's a sigh of relief right there. And again, एक नेट कुक करके डालेंगे in order to take out any player who's there. 1 minute 20 seconds. Let's see how the execute goes for them right now. काफी टाइम है अभी हाई फाइव के पास. ओह, बॉम्ब साइड में एक अटैकर आ गया. राइम्स विद बग, व्हाट ही डजंट सी इज देयर समवन बिहाइंड हिम. ओह नो, दैट वाज जस्ट द याना रेप्लिका. बट ओह माय गॉड, 2 हेडशॉट्स बैक टू बैक फॉर बक and that was insane. Now वापस 3 versus 3 हो गया है, equal score हो गया है, all thanks to this one smoke right here. He has gotten off to such an eventful start. जितने kills उन्होंने पूरे coastline के map पे लिए थे, almost उतने उन्होंने पहले round में ले लिया यहाँ पे. So that is really good for him. Deathhammer as well, still roaming, still trying to flank. I think armory stairs से flank आ सकता है. And यहाँ पे smoke canister में Shinra है. What is Shinra trying to do? What was Shinra trying to plant the diffuser? That was not the play. Rhymes with Buck को 4 kills मिल जाएंगे. Oh my god, can he be stopped? Vortex now, the only person alive. Athar finishes the deed off and 4 kills के साथ Rhymes with Buck, the MVP of this round. Surely Doctor disconnect हुए थे and Smoke was like, does not matter. Leave it up to me. Like I said, जितने किल उन्होंने कोस्टलाइन के मैप पे लिए पूरे 12 राउंड्स में, उससे ज्यादा उन्होंने अभी ले लिए हैं. एक राउंड के अंदर ऑलमोस्ट एस होने वाला था उनका. एंड व्हाट ए स्टार्ट फॉर द साइड ऑफ अकात्सुकी. अ पॉज हैज बीन कॉल्ड as a Doctor unfortunately disconnects. So we can see that right now for the side of Akatsuki, they are going through a few technical issues here and there. And for the side of High Five, I mean, they are fine. एक chance था उनके पास, they could have won that round 4v5. लेकिन एक smoke, एक SMG-11, they completely ruined their chances. Yup, and a nice performance coming out from Akatsuki right there, especially from Rhymes with Bug. So जैसे ही डॉक्टर चले गए तो स्मोक ने बोला भाई please hold my beer, I'll show how to win that round once again with that quad kill. He took each and every member from the side of Hi-Fi along with the server. So a very nice gunplay coming out from him. And I don't know जब आप बोल रहे थे कि शिंडा स्मोक कैंसर में क्या कर रहे थे, I don't know, was he just trying to go for a plant or was he just stuck anywhere? तो यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या होता है. यप, बेलूसी से स्विच करके यहाँ पे वमाई लिया गया. डॉक्टर बहुत अच्छा चॉइस यहाँ पे ऑपरेटर का. बट स्टिल बेलूसी इज समथिंग दैट यू नीड एवरीथिंग. बट यहाँ पे एला एज अ रोमर उनके पास ऑलरेडी है. बट आई डोंट थिंक शी वुड प्ले एज अ रोमर जस्ट बिकॉज शी हैज अ शॉटगन. लेकिन players like Invi just like to roam around the map while taking a shotgun in hand and be aggressive like hell. तो यहाँ पे एक भी अगर चांस दिया जाता है इनवी को, so he can be proved very fatal for the side of Hi-Fi right there. And again, no operator changes coming out from the teams. बस Vortex ने यहाँ पे याना लिए, यहाँ पे हुसैन ने जोफिया ली है. So I don't know if there was a Zofia last round or not, but Vortex ने यहाँ पे IQ ली थी और IQ रखने में कोई हर्ज नहीं है. I don't see any damage when there is IQ played in the side of the attackers. उल्टा आपको गैजेट्स के बारे में और अच्छा आइडिया हो जाता है. लेकिन the main thing is you need to go very further in order to destroy those gadgets. So यहाँ पे एक वमाई का जो डिस्क है वो फिर से ले लेंगे क्योंकि वो शायद गलत एरिया में प्लेस हुआ था. Again, अथर्व यहाँ पे
बहुत आगे पुश कर चुके हैं. आई थिंक रीडिंग रूम में जा चुके हैं, लेकिन शिनरा विल टेक डाउन अमर एज इट्स फर्स्ट पिक एंड देयर वाज नो नीड टू पीक फ्रॉम द 2F विंडो. अमार yet again रोम कर रहे थे. ही डाइज, ही टैग शिनरा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन किल नहीं ले पाया. अगर वो किल होता काफ़ी यूजफुल होता. हार्ट ब्रीचर गया, मैवरिक गया, बट फॉर नाउ शिनरा लिव्स टू सी अनदर डे. एंड अभी के लिए अकात्सुकी दे आर नॉट लुकिंग द बेस्ट बिकॉज दे आर डाउन अ मैन. एला इनवी काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं ब्लू स्टेयर्स पे. अथर्व एज वेल, लुक एट दिस फ्लैंक. ओ दिस कैन बी सक्सेसफुल. अगर अथर्व ने सक्सेसफुली फ्लैंक पुल ऑफ किया अटैक की तरफ, दैट कैन बी बिग. बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा हाई फाइव के मेंबर्स पे एंड दे विल हैव टू लुक एट सो मेनी एंगल्स सो मेनी टाइम्स. सो इसलिए येगर, ही इज गॉट टू बी केयरफुल how he positions himself. Ella has positioned herself all the way from blue stairs now to जो freezer के stairs होते हैं, all the way on the other side of the map. The hatch has been opened inside of meeting. Ella is now in first floor and what was that? No, just so much noise. इतना ज़्यादा शोर कर रही थी Ella, and that was the death. Atharv को भी even he is caught off guard, and this is just a round going in favor of high five. No one can stop them. बॉम्ब साइट में कोई नहीं बचा है. ऑफ द बॉम्ब साइट 3 किल्स हो गए. मतलब I mean anchors, अकात्सुकी के 3 मेंबर्स इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे and now all of them died. All of them had to pay the price. And looks like high five, yeah, they are just going to take this win क्योंकि उन्होंने isolate किए गन फाइट्स and उसके बलबूते पे वो जीत गए. जब जीत गए या नहीं गए वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अभी भी जिंदा है और यहाँ पे अपने मरीजों को ठीक करना उनका काम है. लेकिन नाइस विद बक विल टेक वन मोर ऑन ताहा. सो नाइस विद बक यहाँ पे बहुत कम एचपी पे है. प्रैक्टिकली इट्स अ 1 वर्सेस 2 बिकॉज़ शिन्ना इज आल्सो ऑन अ वेरी लो एचपी, बट वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट आइदर ऑफ द प्लेयर्स. दे आर मूविंग इन फॉर द फर्दर स्टेयर्स. जो सामने लॉन्ड्री स्टेयर्स है, दे आर मूविंग टू एक्सिक्यूट दैट इटसेल्फ. तो यहाँ पे डॉक्टर को अगर निकाल दिया तो शायद थिंग्स विल बी मोर एंड मोर इजी फॉर देम. एंड अगेन 30 seconds remaining on the clock for now, and ball bang होते जा रहे हैं, and he doesn't know what to do now. And Avidi will take down Noise with Buck, and he will be able to take down one more, but no, he just manages to tag down one more. 20 HP remaining on his side, and the plant is going down, and he just needs to take at least one kill. Ooh, I thought कि शायद यहाँ पे Vertex ले लेंगे उनको, और एक है लॉन्ड्री में. Oh, nice pre-fire coming out from him. Triple kill for him, and it's a 1 versus 1. It's Doctor versus Shinra. Shinra की HP बहुत कम है, and he knows, he might know that Maverick is still there. एक pre-fire काम तमाम कर सकती है, लेकिन Shinra doing the thing for Hi-Fi and making the round go into the hands of Hi-Fi. I mean, Doctor ने spot कर लिया था वहाँ पे, लेकिन immediately then Shinra also peeked away and yeah, दोनों बहुत कम HP पे थे. One single bullet and that was the end. And in that case, that was the end for Akatsuki as they lose that round. Again, बहुत अच्छा start नहीं था, but thanks to Doctor and Rhymes with Buck right there, जो अभी के लिए 2 MVPs हैं इस वाले गेम के. I've got to say that right now उनके बलबूते पे Akatsuki are really winning, and that was a completely losing situation which Doctor almost turned into a winning situation. वो जो उनका एक 1v3 clutch होने वाला था, but still Akatsuki, they were too aggressive early on and उसकी वजह से उनको डिफीट होना पड़ा. This is something Akatsuki have to keep on dealing with. कल भी हमने सेमीफाइनल्स में काफी बार देखा था, अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं. एंड या इट जस्ट डज नॉट वर्क फॉर देयर साइड्स. दे हैव गॉट टू रियलाइज. एक क्लब हाउस में इतना अच्छा राउंड था उनका जब डॉक्टर ने 2 ओपनिंग के लिए थे एंड हर कोई फॉल बैक कर गया था. इट वाज ऑन द चर्च एंड आर्सेनल बॉम्ब साइड. वैसे डिफेंसेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है अकात्सुकी से फॉर नाउ. आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर व्हाट दे आर प्लानिंग. एक और राउंड आता है, एक नया राउंड आता है. ऑपरेटर लाइनअप्स आर इन अ वे लुकिंग द सेम. अटैक साइड में बहुत कुछ नहीं बदला. इस बार जोफिया की जगह ऐश खेलेंगे हुसैन, बट अदर देन दैट द अदर ऑपरेटर्स आर द सेम. डिफेंस में भी you've got Athar playing the Jaeger, Arumi is back. So yeah, defense it's the same setup. So defense, I mean yeah, Akatsuki को they know their objective. उन्हें पता है कि इस बार kills नहीं देने हैं. अगर kills नहीं दोगे तब हम जीत जाएंगे. प्लेन एंड सिंपल. डू नॉट बी टू अग्रेसिव. अगर एक किल मिलता है वेल एंड गुड. अगर हमारी ओपनिंग कैजुअलिटी होती है पीछे हट जाओ. देयर इज नो नीड टू ट्राई एंड इक्वलाइज ऑल ऑफ दैट. जो इनवी ने पिछले राउंड ट्राई किया था एला शॉटगन के साथ सिक्योरिटी रूम में, दैट वाज नॉट गुड. ओवर हियर एला एसएमजी के साथ इनवी वापस से कुछ ट्राई करेंगे. इट मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल. वेल वी विल हैव टू वेट एंड वॉच.
Yep, of course, we will have to wait and watch. 2 minutes 26 seconds on the board. Still, the round has just started. अभी action phase शुरू हुआ है. And now, the main task is to just clear out some space. Rumors को यहाँ पे निकालना पड़ेगा. And for the execute to happen, the attackers would need to pressure at least two of the sides. Either आप laundry push करो जैसे आपने last time किया था, or you should just go towards the freezer and also push the laundry. तो शायद वहाँ जाके आपका push कहीं जाके separate हो सकता है. And they know that there is someone, और यहाँ पे सूर्या गेट को disrupt किया गया with the help of that flash. And ये एक अच्छी चीज है कि एकदम जल्दबाजी में अपना जो स्मोक कैनिस्टर है वो अपने खोला नहीं, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया. दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स कमिंग आउट फ्रॉम राइज विद बक. ही जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू अप्रोच ऑन दैट स्टेज सो दैट ही कैन एटलीस्ट गिव एन इनिशियल अमाउंट ऑफ डैमेज टू हिम. तो एला अपनी शील्ड वापस यहाँ पे पुट अप कर लेंगे. यहाँ पे हैच ओपन हो जाएगा फ्रीजर का एंड इट्स लुकिंग लाइक दे माइट बी गोइंग इन फॉर अ फ्रंट स्टेज एंड अ फ्रीजर एक्सिक्यूट. Right now, yeah, for the side of high five, काफी close है bomb side के. Vertically map control सारा का सारा उन लोगों ने ले लिया है. They are right there on the first floor. थोड़े बहुत हमें बक के skeleton keys भी सुनाई दे रहे हैं. So they are ready to execute. Hatches भी खुले जा रहे हैं. Everyone is in position. बस अगली यही चीज़ आएगी कि कितना जल्दी वो execute कर सकते हैं. बंकर का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है जैसा हम बात कर रहे हैं. बंकर में अभी अथर फ्रीली खेल रहे हैं. ब्लू पिलर पे भी Envy is there with his pistol. So everyone from Akatsuki is engaging in these gunfights. I mean, look at Doctor. Look at how aggressively he's speaking. काफी ज्यादा drones भी आ रहे हैं from the members of High Five. Everyone is taking their positions, but there is still a lot of time. Vamai के magnets हैं, Jaeger के ADSs हैं यहाँ bunker में. So काफी ज्यादा utility usage होगा. Iana hologram use होता है थोड़ी सी info के लिए. Info मिल जाएगी. Execute बहुत जल्दी आ सकता है. अब आना पड़ेगा. 30 seconds हैं. Hatch drop नहीं कर सकते because defenders are in bunker. Bunker को निकालने के लिए Vortex needs to do something. He is using his frag grenades. He is doing everything. The attackers drop from the hatch. However, that is too easy kills. Vortex tries to reply back. एक headshot मिलता है. 13 seconds. Two good kills for the side of High Five. Diffuser dropped है. कोई भी diffuser अभी तक नहीं उठा सकता electrical room से. No one has picked it up as of yet. 4 seconds. एक और kill Envy का. Hussein also falls, and before you know it, it is all down to Vortex. Envy, he downs his own teammate, and Deathmar finishes things off. So good defense from Akatsuki. बहुत ज़्यादा time pressure कर दिया उन लोगों ने High Five के लिए, and none of them were able to respond. Yep, absolutely. तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे अकात्सुकी ने ओवर पिक नहीं किया, अननेसेसरी एंगल्स को चैलेंज नहीं किया. यहाँ पे जिस तरीके से वो कोस्टलाइन में चैलेंज कर रहे थे, कोस्टलाइन जैसा मैप बहुत ओपन है. आप अंदर से मतलब लाइक यू वांट टू चैलेंज ईच एंड एवरी एंगल बट यू कैन नॉट. बट यहाँ पे थिंग्स आर रियली डिफरेंट बिकॉज इन बहुत सारे एंगल्स हैं यहाँ पे वॉच आउट करने के लिए. वो तो वैसे भी रहते हैं बट स्टिल यहाँ पे वो गलती को वापस नहीं दोहरा है. यहाँ पे Envy will take the Oryx down and switch it to the Valkyrie, or as we call like Orchix, my favorite word, but still Valkyrie is in place. So यहाँ पे Black Eyed Camps का बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा because I think last time इन्होंने जब Oregon खेला था तब Valkyrie ban नहीं थी in opposition of Cohesion. तो वहाँ पे Valkyrie banned out नहीं थी, एंड आई थिंक हाईफाई के साइड पे भी नहीं थी, तो वहां से कुछ यूज नहीं हुआ था. लेकिन Envy also plays Valkyrie. डॉक्टर भी खेलते हैं यहाँ पे, अथर्व भी खेलते हैं. बट लीव ऑल दैट, लेट्स लुक एट द स्कोरबोर्ड. Vortex with 3, Abid with 2, Shinra with 2, Sen 1 और ताहा 0. सो फार 4 राउंड, चौथा राउंड चल रहा है यहाँ पे. ताहा ने अपना अकाउंट नहीं खोला अभी तक. Rhymes with Buck with 5, Envy with 3, Amar with 1, अथर्व with 2, डॉक्टर with 3. तो Rhymes with Buck का जो पहले राउंड का क्वाड किल था, उसके बाद सिर्फ उन्होंने एक ही किल लिया है थ्रू आउट 4 राउंड्स. तो नॉट मतलब डिसेंट स्टैटिस्टिक है, बट इतना भी डिसेंट नहीं एट दिस लेवल ऑफ प्ले. Still their team is winning, 1-2 हो रहा है, and still it's a long way to go in order to win this match. Yeah, right now, for the side of Akatsuki, उनका वही सेम तरीके का like composition है.
that things aren't looking all too bad. They've got Jaeger, they've got Ella, Smoke भी है, Valkyrie. So the same thing, they've got roughly the same operators जो हमने पिछले डॉम्स के डिफेंस में भी उनकी तरफ से देखे थे. Jaeger था, Ella था, you had Smoke as well, Valk and Melusi. So it all looks like the same, and it looks like for now we will be going into a rehost, as I think one of the members from Akatsuki was having a bit of audio issues, and yeah, for Rainbow Six, audio issues do happen a few of the times. So for that reason, I have to say that yeah, I am really excited for round number 4. अभी के लिए बहुत slightest advantage ही Akatsuki के पास. Can High Five try and disintegrate that advantage? अगर High Five 3-3 का end कर देंगे अपने entire उसमें, that will be good. But it looks like no, the round is commencing. It is 4 versus 4 right now as we jump into round number 4. So 2 kills हो गए हैं यहाँ पे. It was Shinra was the first casualty of this round. After that, Athar fell by the hands of Vortex. तो अभी भी equal man count है, लेकिन अब equal man count थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगा. Yet again, trades are happening left, right and center all over the map. Akatsuki and High Five दोनों के दोनों ने काफ़ी अपने प्लेयर्स लूज़ किए हैं. For the side of Akatsuki, the one thing is उन्होंने रोमर्स लूज़ किए हैं, तो अब टाइम कंट्रोल, टाइम वेस्ट करना अटैकर्स का ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. अटैकर्स विल जस्ट बी रेडी टू एग्जीक्यूट ऑन टू द बॉम्ब साइड. डेथमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे चीकी रोम के लिए फ्लैंक के लिए गैराज के अंदर, बट द अटैकर्स ऑल दे केयर अबाउट इज गोइंग टू बी गोइंग इनटू द बॉम्ब साइड एंड ओपनिंग अप. C4 यहाँ पे टॉस होगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा. डॉक्टर फॉल्स बैक सेफली. सो every single player right now in both of the teams, they are ready to hold off the execute, they are ready to execute as well, and सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं. So it needs to happen right here right now. Oh, that's a very good kill right there from Amar, I have to say. What a headshot, putting his team at the advantage. अविद भी यहाँ पे एटिक की स्टेयर्स में, हुसैन भी हैच के नीचे, सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे हाई फाइव के मेंबर्स को वापस बॉम्ब साइट में आने के लिए. बट लुक एट द एंगल Hussein is holding. He knows Jaeger is there. He is going to push him. No, that's Ella. Doesn't matter who the operator is. All that matters is he gets the kill. Smoke canisters आएंगे. डॉक्टर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट खेल रहे हैं. 1 किल उन्हें मिलेगा. He's holding the angle. 8 seconds remaining. Hussein has to take the gunfight, and Doctor gets the headshot, and that means that Akatsuki win yet another round for their side, another much needed round जिसकी उन्हें जरूरत थी. And now it looks like we'll be going for the rehost. So that is all well and good. जो वहाँ पे unfortunate that was going on, the issues that were happening with them. I believe there was Doctor, and I think there's some issue going on with Jax as well. Unfortunately, looks like even he has disconnected. So hopefully he can rejoin as soon as possible. But otherwise, yeah, it's looking good. Oregon का map काफी अच्छा लग रहा है. I'm looking at the statistics, and yet again we are seeing the fact that plenty of times that the team that is getting the opening kill, they do end up winning their rounds. We can see that right now 4 rounds हुए हैं. 4 में से the team, like 3 of the times, thrice has it happened that the team that gets the opening kill, they are getting the rounds in their favor. So that is quite interesting. Yet again, it's going to come down to the mind games. The players, they have been playing for quite some time. It's about to be somewhere around like like it's about to be like 4 hours since they have been playing. So काफी ज़्यादा time यहाँ पे हो गया है. They are really pushing it. Oh sorry, 3 hours, not 4 hours. 3 hours काफी जल्दी होने वाले हैं. But yeah, right now how it stands, 3 hours नहीं 4 rounds हो गए हैं. Akatsuki are leading and they're doing things fine except for जो early aggression हो रहा था उनकी तरफ से. Other than that, it's all looking all too well for their side. Everything is all good. I've got to say that everything is under control. जैसे उन्होंने वो प्रॉब्लम फिक्स कर ली ज़्यादा अग्रेसिव होने की, they are back on track. They have won the past 2 rounds, and I don't think they will be dropping a single other round in this defense. अब जो अगली बॉम्ब साइट होगी, that is obviously going to be a tertiary bomb site. Either it's going to be meeting in kitchen or it's going to be kitchen and dining, and that is the main thing right here. That it's the tertiary bomb site जहाँ पे attackers के एक अच्छा solid chance होता है जीतने का. So now can High Five take that chance, take the advantage and win it for themselves? Will they be able to do that? I think that is the primary question to be asked. Is that possible? Because if that doesn't happen, then they are in a very tough spot. Then वापस से वो 5-1 का स्कोर आ जाएगा हाफ एंड में, and that's not too pretty जब High Five 5-1 के डेफिसिट में होती है. क्लब हाउस में हमने देखा, हाँ,
उनके अटैकिंग हाफ में दे वर डाउन 1-5 बट इन देयर डिफेंस दे मेड वन ग्रेट कमबैक दैट अलाउड देम जो भी चल रहा था नो मैटर व्हाट वाज हैपनिंग दे मेड श्योर दैट दे एंडेड अप ऑन टॉप एंड दे मेड श्योर दैट दे वर द बेस्ट just like all of the laptops from ROG Tough are the best as well, whether it comes to gaming or work as well. I mean, they've got great RAM to allow you to have tons of apps open. I know in work, I know in all that does matter. And for gaming, they've got great integrated graphics and obviously graphic cards as well. And that's why laptops are really in the better market right now, because of the fact that the graphics card market is a bit it's a bit iffy. But what isn't iffy, let's bring our attention back to the game. What isn't iffy is now going to be the game in front of us, round number 5. Hopefully all the issues have been resolved. Hopefully we can start off. So far everything looks normal, so far everything is fine. We can start things off. And yet again we are starting from the same angle, same yahan pe operator bans hain. And in terms of the tertiary bomb site, Akatsuki have chosen meeting and kitchen instead of kitchen and dining. That is very, very interesting to see. And as we start off with the action phase, a few final seconds in the prep phase, and we can see that a vertical extension has been established by the defenders all towards attic and bedroom. 5 seconds to go. Attackers are heading out to defuse a bomb. Okay, so that is going to be a black eye thrown by Rhymes and Buck. थोड़ी सी info के लिए, and now he can just fall back wherever he wants. The attackers are ready to execute. I think the attackers will be going for like a west side push, dining control लेंगे, and then वो kitchen में plant करने का try करेंगे. Although looking at Hussein, he may be this plan guy. कल हमने high five जब Shattered Dreams के अगेंस्ट खेल रहे थे, तब भी हमने यही देखा था that Hussein was one of those guys who was just pushing, and वो ऐसे sneaky pushes करके आते थे, and that allowed him to catch plenty of people off guard. Something similar may happen right here, as we are seeing quite a lot of changes in the operator lineup. Iana is being played by Hussein right now instead of Vortex. Vortex is on the Nomad. Rhymes with Buck is playing the Valk, but what isn't changing are the kills yet again. Shinra has been put in a down but not out state, and his revival is going to be a task for all the members of the side of High Five. बाकी members भी यहाँ पे gunfights ले रहे हैं, and Rhymes with Buck को kill मिल जाएगा, not before it has been equalized by Hussein. Alright, so Doctor gets the headshot, but then again, even he gets traded out. So we can see that right now, High Five are in the advantage. ये जो आखिरी kill लिया है Vortex ने, this can be the round winning moment, because now their team is looking better. सिर्फ Rhymes with Buck and Invi जिंदा हैं. Arguably, both of them have had a great performance. लेकिन दोनों players अभी bomb site के बाहर हैं. They are on the second floor, and their opponents, well, they are droning out the entire bomb site. They can see a few of the members, and they can see where they are. Avid भी stage के वहाँ से आ रहे हैं, and I don't think Rhymes with Buck is aware of that. That there are plenty of members coming from stage. Invi is still there on the second floor, so I've got to say that right now there is a lot of pressure building up on these two players of Katsuki. They've got to make sure कि यहाँ पे कोई भी इनकी तरफ से slip up ना आए. They keep their calm. 2 versus 3 है, इतनी बुरी position नहीं है. Invi is getting very aggressive, and he gets the headshot. Oh my god, that was something completely out of the ordinary. I did not just anticipate that कि ये होने वाला है, and what a nice play coming out from him. Still 2 versus 2 है. Invi बहुत कम HP पे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है HP से, because the attackers are keep on peeking him. But no, Aviv turning it into a 1 versus 1, and he will go for a plan. It's a plenty of time. बहुत ज़्यादा time बचा है उनके पास, 25 सेकेंड है. He does not need to hurry. But जब तक आपके पास अच्छा place है, आप तब तक plan कर सकते हो. And I don't think so that Rhymes with Buck should peek. But Aviv will take down Rhymes with Buck, and another round goes out to the hands of High Five.
या वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए राइम्स वक्त प्रोन अच्छा लाइक थियोरी में अच्छा ट्राई था वो प्रोन पीक करने का बट या जस्ट नॉट टाइम प्रेशर हो सकता था सो मेनी वेरिएबल्स वर राइट देयर एंड टुवर्ड्स द एंड हाई फाइव एंडेड अप टेकिंग द विन सो अब अगर हाई फाइव 4-2 का भी स्प्लिट हो आई डोंट थिंक दैट्स टू बैड आई थिंक हाई फाइव विल बी हैप्पी विद देमसेल्व्स एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम एंड आई थिंक 4-2 ही होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग बैक टू द लॉन्ड्री रूम एंड सप्लाई बॉम्ब साइड एंड वहाँ पे यही हुआ था कि अकात्सुकी दे मैनेज टू टेक द विन एक बार हारे थे लेकिन उसके बाद जो उन्होंने टाइम प्रेशर क्रिएट किया था इस बॉम्ब साइट में दैट वाज टू मच फॉर हाई फाइव टू हैंडल एंड हाई फाइव अनफॉर्चुनेटली फॉर देयर साइड दे एंडेड अप लूजिंग सो आई थिंक दिस हाफ विल बी एंडिंग विद द 4-2 split I don't think high five will be any sad they know that 2-4 is fine क्योंकि अब वो खुद के डिफेंस में जाएंगे अकात्सुकी नो कि कुछ सिली मिस्टेक्स हुए हैं जब उन्हें जीतना चाहिए था वो हार गए थे बहुत अग्रेसिव हो गए थे and they just ended up losing the round because of that aggression. So Akatsuki will be a bit disappointed in their eyes. I think 5-1 could have been possible, but right now अभी तो 3-3 भी हो सकता है. No one really knows. So let's start round number 6. अभी से शुरुआत करते हैं. We can see the same setup. Bunker में shields are there, Jaeger ADSs, Aruni Surya gates. So काफी ज़्यादा utility dump attacker and defense की side से आएगा bunker में, and that is known because High Five aren't known to attack a lot from the freezer side. एक बार ही हुआ था जब वो फ्रीजर लॉन्ड्री टेक के लिए गए थे बट अदर देन दैट इट्स बीन लाइक it's really been a lot more of pillars and bunker area जो northeastern push आता है but now the push can come from any side possible and the defenders have to prepare for it already first floor पे कोई तो aggressive हो रहा था I think that was Deathammer and he has been tagged a little bit so he will be falling back because he does not want to take the risk and already इतनी जल्दी जान नहीं गंवाने की ज़रूरत है you can be a bit passive it is fine it is not that big of a deal. Yep. With that, action phase has started right now and देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से अकात्सुकी ने 3-2 हाफ स्प्लिट अप किया है ओके माय बैड इट्स द लास्ट राउंड है ओके इसके बाद साइड स्वैप होगा सो डेथ मार की एचपी स्टार्टिंग में कम हो गई है एंड स्टार्टिंग में एक हैबिट है पहले राइंस विद बक का पोस्ट में यही हाल हो रहा था एंड आई डोंट थिंक सो दैट एला शुड टेक दैट प्राइमरी एंगेजमेंट ओवर एंड ओवर अगेन बट ही स्टिल टेक्स दैट इन भी कुछ भी डैमेज नहीं जाता है एनिमी टीममेट्स को आई थिंक एक भी बुलेट नहीं पड़ी सामने वालों को स्टिल दैट आईक्यू का जो डिवाइस है उसके मदद से ही कैन जस्ट डिटरमाइन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर स्टिल देयर बट 1 minute 40 seconds ही जस्ट द टीम हैज टू जस्ट पुश फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड नीचे के जितने भी दोनों डिफेंसेस है हमने देखा था कि लॉन्ड्री एंड फ्रीजर से प्रेशर आ रहा था बट आई डोंट थिंक कि ब्लू बंकर और स्टेयर से एक भी बार हमने प्रेशर देखा है सो आई थिंक अगर यहाँ प्रेशर जाता है तो वो बहुत अच्छी बात होगी खास करके पूरा मैप क्लियर करने के बाद दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन जस्ट प्लांटिंग द डिफ्यूजर सो या आई थिंक इट माइट बी वेरी इजी फ्लैश यहाँ पे डंप किए जा रहे हैं यहाँ पे पीछे इलेक्ट्रिकल रूम के हैच पे जो कि खुला हुआ है सो इफ इनवी मैनेजेस टू गेट एटलीस्ट वन काफी हद तक मुश्किलें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी उनके लिए एब्सोल्युटली यहाँ पे दोनों के दोनों टीम्स को एक किल चाहिए अपने लिए प्रेशर रिलीज करने के लिए बिकॉज अटैकर्स येट अगेन मैप कंट्रोल उन्होंने ले लिया है लेकिन एक भी डिफेंडर कैजुअलिटी नहीं हुई है डिफेंडर्स टैग ज़रूर हुए हैं लेकिन कोई भी अभी तक मरा नहीं है डिफेंडर्स सेम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं पिलर्स के वहाँ बंकर्स के वहाँ बहुत अच्छा फ्लैश एक आएगा इन वी स्टिल प्लेइंग एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस अटैक राइट हियर ऑफ दिस डिफेंस एंड बंकर से स्मोक हट जाएंगे he'll be setting up inside the bomb site doctor gets the opening kill onto Taha this can be big and there is the follow up kill हर कोई hatch से drop कर रहा है and that is not what High Five would have liked diffuser drop हो चुका and yet again the hatch drop is a panic room in of itself बहुत ज़्यादा times आप नहीं जीत पाते हो यहाँ पे Deathammer oh my god Vortex still gets the headshot this round is all not too lost completely अब शायद से lost हो गया है on the side of High Five Doctor is right there with the Kratos can he get the headshot oh he gets it he gets the 4K for himself oh that is really good at the end I mean what a shot and yeah what a great play from Doctor right there getting the 4K opening kill उन्होंने लिया round का closing kill भी उन्होंने लिया and like I said it's going to be a 4-2 split and Akatsuki they will be not that happy with themselves 5-1 हो सकता था for the side of High Five they'll be fine because they know कि अब जाकर it's going to be like now it's going to be their own defense and सिर्फ 2 round का deficit है so anything can happen yet again map number 3 we are playing for essentially that
we are playing for that series point, so कोई भी team यहाँ पे जीत सकती है, and whichever team wins, they will be far better. Yep. And I think side swap के बाद यहाँ पे high five will be moving on to the defense, and I think Goyo Attackers need to Goyo locate and is defuse I the think bomb. एक की है, अगर आपके पास smoke player नहीं है तो you can use a Goyo to deny the plant, but you know shields काफी vulnerable होती है उनकी, कि आप कहीं पे भी place कर दो तो maybe if it's in the wrong place it would be at the wrong time. So Vortex will be on gathering that 6 kills, 5 kills for Avid V, Hussein with 3, Shinra with 2, Taha with 1. Still quite for the first half, but you know it happens a lot. Doctor with 10 kills, that's a really nice statistic. 3 assists, 0 assists for them, 3 deaths. So a nice stat for him. Apologies. Death Amar with 4, Rhymes with Buck 10 with seconds 5, remaining. Invi with 6, and Atharva with 3. So 5 what do you seconds think? left before insertion. क्या लगता है? Oh, Attackers objective is to locate looks a like bomb and Jax defuse it. unfortunately disconnected. मैं end sentence नहीं सुन पाया, so I'll just Hello? give an answer जो. Oh yeah, I can hear you. Oh, I'm back. That's my bad. Oh no, I Okay. was just asking that क्या ऐसी गलती थी हाईफाई के तरफ से जो कि वो अटैक में 2 राउंड से ज्यादा निकाल सकती थी, but still they made a mistake, and again Atharva is the one will be making a mistake. हाँ ओके आई मीन अकात्सुकी के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे कि ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है टीम किल, सो नॉट ऑफ टू द स्टार्ट अकात्सुकी वुड बी लुकिंग फॉर. आई थिंक ये वाला राउंड हाई फाइव के फेवर में जा सकता है. दे जस्ट हैव टू प्ले पैसिवली. लेकिन हाँ, जो आप कह रहे थे जो उनके फेवर में अटैक्स नहीं गए, आई थिंक अ बिग पार्ट दैट वाज द टाइम प्रेशर. 2 बार हमने लॉन्ड्री अटैक्स में देखा कि टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया था, एंड राइट एट द एंड जब एक भी डिफेंडर नहीं मरा था, एक 5v5 एग्जीक्यूट आ रहा था, हर कोई इलेक्ट्रिकल हैच से ड्रॉप कर रहा था, एंड दैट जस्ट डिड नॉट लीड टू गुड आउटकम फॉर द अटैकिंग साइड. तो 2 राउंड आई थिंक हाई फाइव के इस तरीके से गए थे वेयर दे जस्ट कुडंट गेट द टाइम अंडर कंट्रोल एंड दे जस्ट केम अंडर द प्रेशर. बट या दैट वाज अ फ्यू राउंड्स वेयर दे फेल शॉर्ट उनके अटैक में. लेकिन अभी के लिए स्टिल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. डॉक्टर लुकिंग टू टेक दैट एंगेजमेंट. एक और बार 417 उनकी तरफ से आती है. ही नीड्स दैट किल इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द स्कोर. हुसैन वैसे ही कम एचपी पे हैं. एनी किल विल रियली मैटर फॉर हिज टीम राइट नाउ. He is still peeking the angle. 1 minute 30 seconds remaining. Hibana is looking to open the hatch. You know, अटैक रेडी है, मैप कंट्रोल सब कुछ है अभी अकात्सुकी के पास, एक्सेप्ट फॉर लाइक बंकर कंट्रोल, जहाँ पे हुसैन अभी भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर डॉक्टर इज गोइंग राइट नाउ, शिफ्टिंग हिज फोकस अवे टुवर्ड्स the bunker area. या वमाई मैग्नेट्स, एवरीथिंग टू ब्लॉक द सूर्या गेट. स्मोक कैनिस्टर्स भी हैं. Yeah, this is going to be really difficult for him to deal with. You know, solo push आएगा. He does not have a teammate to help him. He just has to clear these angles himself, and उसके बाद जाके push होगा. So there is a lot he has to deal with. Can he crouch and make his way away? I mean, again, semi-automatic rifle है, crouch कर लिया, लेकिन reinforced walls हैं, तो bunker control जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जिंदगी पे control नहीं रहेगा. Because Taha kills Doctor. And now with 35 seconds remaining, I think High Five are looking well in this round. Oh, he's just cooking that nade. I think कि मुझे लगा कि वो कॉरिडोर के कॉर्नर में है, but it was not like that. He's in freezer. So एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करके यहाँ पे सूर्य गेट को यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया है. बुलेट प्रूफ कैम इज स्टिल इन प्लेस. इफ ही जस्ट गोस टू डिस्ट्रॉय दैट, कोई भी उनको हॉलवे से जाके मार सकता है. एंड दैट्स अ क्रॉस फायर सेटअप बिटवीन देम. अभी वी विल गेट डाउन दैट समर, और हिबाना पे सारे के सारे मेंबर्स टूट पड़ेंगे जलेबी की तरह. एंड वन राउंड goes out to the hands of High Five. तो यहाँ पे एक चीज है कि कंट्रोल उनके पास था, बट यू नो डिफेंडर्स ने जिस तरीके से क्रॉस फायर सेटअप की थी, उसके बाद आई डोंट थिंक सो डॉक्टर और एनीवन फॉर दैट मैटर हैड एनी चांस. आई थिंक ट्विच के साथ अगर आप 417 ले रहे हो तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विथ योर शॉट्स. फॉर एग्जांपल वर्टेक्स हिट अ वेरी गुड शॉट ऑन डॉक्टर, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ब्लू बंकर अगर आपके पास एक बार कंट्रोल है तो यू शुड नॉट गिव अननेसेसरी पीस टू लूज दैट कंट्रोल. और वैसे भी जो रोटेशन होती है ब्लू बंकर के लिए वो रीएनफोर्स हो चुकी थी, तो आप ज्यादा वहां से कुछ कर नहीं पाते थे. बट अनलेस जो बंदा टावर से आ रहा है आप उसको सपोर्ट कर सकते थे, या यू कुड हैव गॉन एटलीस्ट टू ओपन द हैच फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल रूम. अगर वो भी नहीं करते हो तो एटलीस्ट कीप अ डिसेंट क्रॉस फायर इफ यू वर टू एंगेज इनटू अ साइट इन ऑर्डर टू प्लांट. सो आई थिंक ये छोटी छोटी गलतियां हो रही है, बट स्टिल one round deficit है यहाँ पे. 3-4 anything can happen for right now, and as we are moving on to the 2F bedroom and dorms. So
So I would like to know यहाँ पे क्या अलग किया जाना चाहिए कि जिससे हाई-फाई को एक एज मिले जीतने की. What would you suggest? Like any और बार I change, think any changes time of operators or anything else? ऑपरेटर्स नहीं, ऑपरेटर यूटिलिटी एक और बार वही टाइम वेस्ट का सवाल आ जाएगा. जितना आई मीन इस पूरे मैप पे इट हैज़ बीन अ थीम दैट द मोर टाइम यू वेस्ट ऑफ द अटैकर्स द बेटर इट विल बी फॉर योर साइड. अभी के लिए क्या हुआ, अभी सिर्फ हमने लॉन्ड्री सप्लाई वाली बॉम्ब साइट में काफ़ी बार देख लिया है. मतलब 3 बार हमने देखा कि अटैकर्स बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर में आते हैं एंड दे जस्ट एंड अप फेलिंग देयर अटैक्स. इन दिस केस समथिंग सिमिलर मे हैपन, लेकिन हाँ क्योंकि बॉम्ब साइट डिफरेंट है, you never really know what will be possible. So yeah, I mean it is going to be difficult obviously, you know, ऐसी bomb site में try करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. But if Hi-5 really need that advantage, they can try and use their utility to delay the attack of the attackers. उनकी खुद की utility waste करो, time waste करो, etc etc. Right now Hi-5 अभी के लिए सिर्फ info ले रही है. You know, Attic का पूरा कंट्रोल है. I mean no one from Akatsuki is really trying to attack in Attic as well. वो सिर्फ bedroom and trophy का कंट्रोल लेना चाहते हैं. So it's not going to be like an Attic push, rather it's going to be a push coming from like big window and उस तरीके से आएगा. Bedroom खोलना चाहते हैं, but yet again for now it's not going to be possible. थोड़ा सा और टाइम लगेगा and yet again वही सेम चीज़ आ गई है. कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो. We can see a minute has passed into the action phase. You know, 1 मिनट 10 सेकंड हो गए हैं. ब्रीच एक भी टाइप का ब्रीच नहीं हुआ है अभी तक. कोई भी डिफेंडर भी नहीं मरा है. So this is looking really good for the side of Hi-5. They are looking really dominant right now, I've got to say. And it is because of that reason why, you know, Akatsuki, they've got to make sure that something or the other happens. अब हिबाना के ब्रीच हो जाएंगी, म्यूट जामा फाइनली डिस्ट्रॉय होगा एंड जैसे क्योंकि ब्रीच हो गया है, नाउ यू नीड टू गो फॉर किल्स एज वेल. शिनरा, oh he gets a free kill onto Invi and execute. अब बहुत मुश्किल होने वाला है अटैकर्स के लिए. Yep, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे. 5 versus 4 situation है. There's not a lot to watch out right now for us, but still 1 minute 14 seconds है. इतनी भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से. But you know, sometimes teams go way out of their line and perform. I don't know how, but still Attic में यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है. Rhymes with Buck will break down Taha, but Hussein is there to take down Amar. तो यहाँ पे 2 beautiful kills आते हुए उनके साइड से. So he still needs to calm down, and calm down का मतलब ये नहीं कि आप पूरी टीम को खत्म कर दो. यहाँ पे Abhidvi will take the last kill, and Abhidvi will take the last kill once again onto Atharva. So he's been popping out since round number 1. Since that quad kill he had, after that it's just, I don't know what to say. Absolutely that right now वही yeah, Vidvi has really been the MVP for his team. दोनों के दोनों मैप्स में जो हमने देखा है, Vidvi has been the highest fragging player, you know, the MVP, and yet again even right now I don't think he's shying away from that. टर्शरी बॉम्ब साइट आएगी, यू नो, राउंड काउंट इक्वलाइज हो चुका है, 4-4 हो गया है. तो ये एक बॉम्ब साइट है जहाँ पे अकात्सुकी थोड़ी सी एडवांटेज ले सकती है, अपना 5th राउंड लेके आ सकती है, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर ये बॉम्ब साइट Hi-5 जीत गई, देन आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट आई थिंक ये वाला मैप Hi-5 ने चूज किया एंड ये वाला मैप Hi-5 के पास ही जाएगा. सो या इट इज रियली डिपेंडेंट ऑन दिस बॉम्ब साइट. अगर यहाँ पे अकात्सुकी जीतती है, देन इट्स पॉसिबल ओवर टाइम हो सकता है एंड यू नो मेनी थिंग्स कैन हैपन. बट इफ Hi-5 विन हियर, 5 राउंड्स उनके हो जाएंगे, हम वापस से लॉन्ड्री सप्लाई में जाएंगे जहाँ पे डिफेंडर्स का काफ़ी ज़्यादा हाई विन रेट हो चुका है यहाँ पे इन द पास्ट फ्यू राउंड्स, एंड वहाँ पे अटैकर्स के लिए जीतना इट्स अ डेथ सेंटेंस राइट देयर. इट कैन गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो फॉर दैट रीजन अभी का जो सेटअप होगा, इट्स गोइंग टू बी अनदर वर्टिकल एक्सटेंशन. शावर्स में भी हम देख सकते हैं एक्सटेंशन आया है. शावर्स में काफ़ी बार इम्पैक्ट ट्रिकिंग भी होती है, एंड इस बार आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ट्रिकिंग होगी. देयर इज ओनली 1 इम्पैक्ट ग्रेनेड लेफ्ट, और वो है शिनरा के पास. ही मे बी प्लेइंग इनसाइड ऑफ शावर्स, क्योंकि वहाँ पे अपने लाइक वमाइड डिस्क्स को यूज़ करके ही कैन यू नो वेस्ट अ लॉट ऑफ डिफेंडर, सॉरी लॉट ऑफ अटैकर यूटिलिटी. बट देन अगेन विद जस्ट 1 इम्पैक्ट ग्रेनेड ही कैन बी फ्लश्ड आउट ऑफ दैट एरिया वेरी वेरी क्विकली. अगर अटैकर्स चाहें एक पिंच अटैक करके शावर कंट्रोल वो काफ़ी जल्दी ले सकते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ सून कैन दे गेट सम लाइन ऑफ साइट्स इनसाइड, एंड ऑलरेडी अथर्व जैसे प्लेयर को हम देख सकते हैं ट्राइंग टू गेट अ लाइन ऑफ साइट इनसाइड देयर. मीनवाइल द अदर डिफेंडर्स दे आर आल्सो प्लेइंग इन स्मॉल टावर एंड वेरियस अदर एंगल्स.
Yep, he's really close onto that small tower roof. और यहाँ पे इनवी, okay, इनवी has something up on his sleeve. और अगर यहाँ पे हुसैन या ताहा दोनों में से कोई भी एक मर जाता है तो शायद वो जो कंट्रोल है वो बहुत easily lose out हो जाएगा. Avid भी, no one knows that he's there on that and he might be able to connect that C4. He connects onto Invi. So somehow he has been flushed out with a lot of nades. पता नहीं कैसे बच गए वो यहाँ पे. I think Hussein and Shinra had a really tough time getting out of that spot, but still they managed to take out Invi. तो एक हार्ट ब्रीचर, एक अकेला हार्ट ब्रीचर आपने निकाल दिया है. So practically there is no way that they could breach any of that wall. Yeah, right now it is really difficult for the side of Akatsuki breach करने के लिए. वही hard breacher गया and now the defenders are just piling on the pressure. Aggressive हुए जा रहे हैं. Attackers को कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं aggress करने का and map control लेने का. Attackers finally थोड़ा सा एक kill छीन लेंगे, equalize कर लेंगे score. So Hussein, who was playing very aggressive in small tower, उन्होंने अपना काम कर लिया है. Aggressive होके आधा round उन्होंने waste कर लिया and आधे round के बाद he dies and gives the map control away to the attackers. But now the attackers are looking to attack. बहुत अच्छा यहाँ पे kill rhymes with Bakka. Everyone is ready to attack from dining, but right here Shinra, he can get the headshot. He's just caught in the crossfire. इतने ज़्यादा angles, he could not tolerate them. And right now Akatsuki are ready to execute on this bomb site. अकेले बचेंगे Taha. He peeks wide and Doctor with 2 headshots finishes things off, meaning that finally Akatsuki win a round in their attack. And वही बात कर रहे थे tertiary bomb site की. यहाँ अगर Akatsuki जीत गई, chance है इनके पास. अभी भी there is an opportunity for the attackers. कम से कम overtime में लेके जा सकते हैं क्योंकि laundry and supply and doms I don't think high five के लिए आसान होगा. अगर laundry and supply तो I think high five का ही होगा. ये this round is going to high five. It's going to be 5 rounds. उसके बाद doms में जरिया है Akatsuki के पास थोड़ा सा chance है जीतने का, but still it is a very tough call to see what will happen there. And it's for that reason why I think that still right now overtime is a possibility that may happen. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. So now going into round number 10, भाई double digits में आ गए हैं. The members of Akatsuki are just a single round away from match point, but I don't think they'll be getting match point anytime soon. जो operator composition है यहाँ पे it's roughly the same. Shinra वापस से आ गए हैं. Shinra is back on mute. Jaeger is there. You've got Vamae, Aruni, Goyo. It's the same composition जो हमने round number 7 में भी देखा था. जो पिछला round था जहाँ पे High Five वापस से जीत गई थी अपना laundry का attack. On the attacking side, you've got Atharv back on the Nomad. You've got this time Rhymes with Buck playing the Sledge and Invi Hibana खेल रहे हैं, which is quite interesting. And all that's going to lead to is just like who gets the more kills. That is the main thing. I think that is the question that we have to ask right here, right now. किसको यहाँ पर ज़्यादा kills मिलेंगे? Akatsuki, they're looking nice. They are ready to start attacking. Doctor काफी ज़्यादा tag होते हैं, but he does get the shots. He does get the opening kill. बहुत जल्दी उन्हें हुसैन पे kill मिल जाएगी. A little too aggressive on the trigger right there, Hussein, and that means he has to lose his life. Vector versus LMG, long range पे अच्छी नहीं रहेगी. Jaeger भी isolate हो गए completely bathroom में. उनके रीलोड करते हुए पकड़े गए and Avid भी also dies. A great start for this attack right now for the side of Akatsuki. अगर ये laundry जीत गए, I really think the map will be theirs. They can surely take the match point right now. उनको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है. It is really within their possibility. They are not down a single man. Their opponents are under immense pressure and they have to realize that उनको normally खेलना है. रोम क्लियर हो चुका है, अब सिर्फ एंकर जिंदा हैं. जस्ट मेक श्योर you eliminate the anchors and उसके बाद you can start pushing up. So right now Doctor has been put in a down but not out state by one of the defenders. That is the unfortunate thing, and the attackers are ready to execute. Taha, he gets the kill onto Atharv, so Doctor has to be revived and उसके बाद जाकर यहाँ पर 4 versus 3 होगा. So it is still very difficult to call. I think High Five still are in this round by no stretch of the imagination. हम उनको हटा सकते हैं इस round से. It's more about
can the members of Akatsuki convert these initial 2 kills into a win? It is a really difficult task to call, and with 1 minute and 15 seconds left, abhi thoda sa yahan pe stalemate aa gaya hai, where everyone has quieted down a little bit and the attackers are just droning. Attackers are droning, they're getting information, they are ready. Freezer maybe info mil jayega. Hibana will be looking to open the freezer hatch as well. Everyone now is ready to execute right here, but yeah, I've got to say that because of the fact that everyone is ready, zyada pressure of defenders पे, can they hold this off? Already we are seeing members push into freezer. वहाँ पे गन फाइट्स लेने का ट्राई कर रहे हैं डिफेंडर्स, but unfortunately not possible for their side. Iana hologram goes yet again. Vamai destroys that. He is inside freezer. 27 seconds remaining. The impact grenade was in the hands of Vamai. He could not get the shots. Invi gets rid of him, but not before Shinra could get a refrag. एक आखिरी defender बचता है, and with the shotgun he tried his best, but no. Akatsuki as attackers, they take the win on laundry and supply, a much needed win, क्योंकि अब उनके पास आ गया है मैच पॉइंट. Oh, I5 right now going to the same bomb site. Oh, that's a very bold move. They are ready. They want to test this bomb site yet again. So who knows that right here, right now, High Five obviously are at the disadvantage. They are on their last legs. Unhe jeetna padega, otherwise it's going to be series point for their opponents in Akatsuki. And uske baad hum Akatsuki ke khud pick mein jayenge, Chalet, where things are really going to get a very spicy. But before that, right now, abhi Chalet काफी दूर है. Obviously Chalet देखने को मिलेगा, that is confirmed. Doesn't matter कौन यहाँ पे हारता है जीतता है, Chalet तो पक्का है. It's about bank कि क्या हम bank देख सकते हैं. But never mind. For now, we are coming back to Oregon. We are coming back to this map and we are going back to the same bomb site like I mentioned, and the same operator lineup as well from the defense. Defense यहाँ पे कुछ भी change नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ same रखा है, उनका setup same है, how they want to tackle this bomb site is the same as well. बस एक difference होगा कि वो early kills ना गवाएं. Earlier in the round उन्होंने 2 kills दे दी Akatsuki को free of cost. येगर ऐसी वो bathroom में completely isolate हो गए, reload कर रहे थे, मर गए. Hussein took that gunfight against Doctor, जो बिल्कुल ही वो हार गए. So hopefully that does not happen right here. Hopefully the defenders can be a bit more strategic with what gunfights they want to take and ज़्यादा time waste करने जाएं instead of just going completely for kills right now. All right, so अभी के लिए still entry into the action phase, not the half. We are still seeing things pretty passive right here. Attackers भी drone कर रहे हैं, defenders don't want to be too aggressive. Attackers are, I think, yet again planning that freezer laundry take. Now they're going into dining as well. Maybe उन्हें meeting hatch भी open करना है. They now will encounter the first defender. That's going to be Taha playing the Aruni on pillar stairs, and वहाँ पे now they have to take the decision. Do they try and counter Taha? क्या वो roam hunt के लिए जाएंगे, roam clear के लिए जाएंगे, or are they planning to just play a bit passively and they'll leave Taha be? वहाँ पे already एक air jab आ चुका है, so they'll just focus on the hatches right now, and I think they are focusing on the hatches. Laundry hatch खुल गया है, freezer hatch खुल गया है. Now I think the meeting hatch as well will be opened in no time. So the defenders, they have to relocate some of their utility in towards other areas of this map where they'll be looking to essentially deal some more damage. And सारे के सारे defenders यहाँ पे now they're back on the bomb site. They are ready for this execute. लेकिन attackers को थोड़ा सा और time लगेगा start करने में execute. बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है. बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा ही टाइम लगेगा यहाँ पे. मैच पॉइंट है यहाँ पे, 1 मिनट खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट. डेथ हमार एंड 2 more players are expanding on to the freezer stake, and laundry stairs से भी टेक आने वाला है अभी. एंड आई थिंक
यहाँ पे नेड हो सकता था और यहाँ पे शॉट्स मिस किए, बहुत सारे Oh. शॉट्स मिस हो गए एनवी की तरफ से एंड दोनों के दोनों नेड एडीएस से निकल गए, लेकिन डॉक्टर इज देयर टू टेक आउट द फर्स्ट किल of Shinra and open things out for them. But still, Hussein will be taking on Otharva and Iana का जो Gemini है वो आ जाएगा यहाँ पे and they know that Aruni is real close. अभी भी यहाँ पे बहुत नीचे जाते हुए Ranjit Doc will take down Vortex, Hussein will take down Doctor, Invi trade out करेंगे एक और को, अभी भी Antaha gone down and still up to Hussein in a 1 versus 3. Looks like he might not be able to just make it. Flashing himself, Invi भैया थोड़ा रुक जाइए, but Ranjit Buck will not stop and the last round goes out into the hands of Akatsuki. With that, taking a second map advantage. It's a series of 1-2. Still 2 maps to go. Akatsuki yet again they take the win on their opponent's map. Oregon का map choose किया था High Five ने, but it's going to be Akatsuki being the winners right here. 7-4 the end score. I've got to say, what a series this has been. 11 rounds अभी हो गए, पिछले 2 maps में 12 rounds गए थे. Out of maximum 36 rounds हम regulation के देखे हैं, 36 में से हमने 35 खेले गए हैं, जो usually होता है. That is really a lot. So I've got to say that yeah, these players are pushing them to the maximum level right now. अपने आप को and एक दूसरे को भी, the teammates and their opponents, because every single player, I can't even imagine. You know, this is not like all of us, you know, playing a ranked game. मतलब 3 ranked matches हमने एक साथ खेल लिए ना. This requires far more concentration, communication. And all that. I mean, we know, you know, as casters, we talk a lot. And the players, I think, they don't just talk, they yell as well. बहुत बार हमने वो comms सुने उनके. मतलब क्या मस्त चिल्लाते हैं. But yeah, all jokes aside, I've got to say that the players are really at their maximum potential right now. बहुत ज़्यादा देर से खेल रहे हैं. It's been around 3 hours since they have been playing. So that is really a lot. You know, playing constantly with just minimal breaks in between to ensure that, you know, बहुत ज़्यादा momentum किसी भी player का break ना हो. But as of now, Chalet में जाएंगे, लेकिन Chalet से पहले Jax, we still have to go over Oregon because what a map it has been so far. You know, Oregon का map भी बहुत अच्छा था. Defense में बहुत, I mean, defense was pretty normal. You know, defense average गया जो पहला हाफ था. 4-2 split Katsuki defenders के favor में. That's not too bad. जैसा मैंने कहा था, High Five would have been fine with themselves. एक 2-4 disadvantage में. Second half में चीजें change हुई जैसे ही वो 2 final supply laundry वाले attacks जीत गए. Attacks जीते Katsuki. I honestly was not predicting that. Laundry supply was the defender safe haven here. मतलब defenders यहाँ पे जीतते गए. There was absolutely no, I mean, there was nothing stopping them early on. But then at the end, you know, the entry frags, the final kills, the executions, everything worked. वो जो time pressure bunker and, you know, bunker and वो hatch drop में आ रहा था, वो पूरा का पूरा time pressure हट गया क्योंकि Akatsuki ने सोचा, instead of dropping down bunker, we can just push from like laundry and mainly freezer side. And laundry freezer takes के चक्कर में they had more time on their hands, executions उनके ज़्यादा अच्छे से जा रहे थे. And well, they ended up winning. यप, एक और चीज गौर करनी चाहिए हमको, यू नो, जितनी प्लेसेस ओपन हो वहां से पुश करने का जो खतरा है वो रहता ही है, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग इनटू मीट ग्राइंडर. एज फार एज अगर आप हाथ से नीचे कूद रहे हो तो आप कूदते जाते हो, यू जस्ट push that meat grinder and make yourself a big cannoli because you cannot afford that, you know, because अगर आप एक के बाद एक बॉडीज गिराते जा रहे हो तो आप एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हो, आपके पास मैन एडवांटेज कम हो जाता है, यू नो, दैट प्रेशर बिल्ड्स अप. नेक्स्ट राउंड मैच के एंड तक वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता है. सो यू नो, ओरेगन में बेसमेंट में हमने यही चीज ऑब्जर्व की कि जितनी बार भी आई थिंक अकात्सुकी ने हाथ से नीचे ड्रॉप करके एक्सिक्यूट करना चाहा, चाहे वो अकात्सुकी हो या आई हो, वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स इट डिड नॉट वर्क. यू नो, ऑन द साइड ऑफ हाई 2 बार हमने बेसमेंट से ये एक्सिक्यूट देखा था कि अटैक में 2 times they push from freezer and as well as from laundry. So दोनों ही टाइम वो अटैक सक्सेसफुल रहा था. जहां तक बात क्लोज हुई थी, it was up to a 1 versus 1 or 1 versus 2, but still it was a really good advantage for them on their attack, but on their defense, हाँ थोड़े बहुत राउंड उन्होंने अपने पास लिए, लेकिन उसके बाद उनका जो एक कम्युनिकेशन है, वो जो गन पावर है, जो क्रॉस फायर्स की एबिलिटी है, वो थोड़ी बहुत कम पड़ रही है. वहां पे अकात्सुकी ने अपना माइंड गेम्स चलाया एंड यू नो, आई थिंक मेनी ऑफ द राउंड्स उन्होंने हैच से बिल्कुल एक्सिक्यूट नहीं किया, या तो ड्रॉप डाउन थोड़ा
कहीं एक दो राउंड किया होगा, लेकिन उसके बाद they knew their mistake. And as we go, we are looking at the stats of the last map. Oregon, Doctor with 16 kills, maintaining that KD of almost 2.30. Rhymes with Buck, आहा हा हा, 11 किल, पहले 13 किल बट अब 11 किल, तो यहाँ पे वो पॉप ऑफ नहीं कर रहे थे, बट अभी apologies, he's with 11 kills, Invi with 8, Amar with 8, Atharva with 4. So since last map, Atharva is not popping out. That's one of the things to watch, because a flex player like Atharva, if he is not popping out, then that's a problem for Akatsuki. But still, बाकी के 4 प्लेयर्स है जो अपना अच्छे से निभा रहे हैं सब. बट हाईफाई की तरफ नजर डाल लेंगे. अबीदवी, हुसैन 9 kills, वर्टेक्स विद 6, शिनरा विद 4, ताहा विद 3. सो not a very good performance coming out from both of them, because सिर्फ एक ही ऐसा प्लेयर है जिसकी एक के ऊपर KD है, and that's Avidvi with 1.12 KD. So that's particularly a shame, but not too hard, not too harsh. Yeah, a few KDs here and there, but yeah, again, these players bring it to the max level. इसके बाद हम PVPs में भी जाएंगे, MVP के बारे में भी बात करेंगे. I want to see the series wise MVPs, how exactly that has been going on. Like obviously जब पूरी की पूरी series खत्म होगी तब देखने को मिलेगा. But for now, we can have a look at the PVP, like who have been the two best performing players in this map of Oregon, दोनों के दोनों teams के लिए. So we'll have a look at them. For the side of High Five, it's going to be Hussein, and it's going to be a Doctor from Akatsuki. And I think, yeah, these two guys, they have some history. I think they used to be teammates, although I'm not completely sure. I mean, मैं बहुत पुराने time की बात कर रहा हूँ, like 2020 previously and all that, when like LANs and all I think were a they thing. were also in MRCZ, I believe. Before MRCZ or in MRCZ, I don't know. हाँ, उससे पहले उससे was पहले. it GTF? No, I don't think Doctor was in GTF. No, I may be wrong. Doctor was not in Someone GTF. in chat can someone in chat can help me out if they have more Yes. history. I'm not a historian. मैंने थोड़ा commerce थोड़ा लिया. मदद कर Never दो mind. Let's move on. Let's talk about the statistics. Doctor 16 kills a lot, 7 deaths as well, 2.29 KD. So yeah, he was absolutely dominating this game, going for those entry frags as well. Doctor name, I think he had somewhere around 3-4 entry frags out of like 11 rounds individually. And he was playing a lot of operators. जिनके बारे में बाद में बात करेंगे. He is our MVP of this map as well. Hussein, also great performance from him. Even he was popping off for his team. काफी एंट्री फ्रैग्स उनके साइड से थे, स्पेशली इन द सेकंड हाफ. हाँ, his team lost, but still a good individual performance. And now we'll obviously have a look at our main obviously at the main MVP. That's going to be Doctor, talking about his performance right now. 16 kills, 7 deaths, 2.29 KDR. He played basically every operator under the sun. Even though Doctor ने सिर्फ 10 rounds खेले, first round में he was disconnected, he had some issue. 10 round के बावजूद he had 16 kills. Vamai खेला इन्होंने बहुत ज़्यादा. He played a lot of Alibi, Zofia, Twitch, Nomad. I mean, yeah, he played a lot of roles, and he played all of them to perfection when it comes to his mechanical skills and getting all those kills. Yep, absolutely. With that, 16 kills है यहाँ पे, 2.29, almost 2.30 का KD है. That's not very bad. That's actually good for a player like Doctor. ये उनकी like normal statistic है. चाहे आप rank खेल रहे हो, चाहे आप competitive खेल रहे हो, ऐसा उनके लिए बहुत normal है ये सब. 16 kills, just a piece of cake for him. But still, sometimes कभी-कभी pop off नहीं होते, just like Atharva. But all the players के हर एक, like maybe it's not his day. अथर्व का दिन नहीं है आज, but still एक और 2 मैप बचे हैं हमारे पास. इसके बाद शैले है यार. CCV, please just tell me, are you not bored of watching शैले again and again? मैं तो हाँ कह सकते हैं. I just want to see bank. शाले कुछ भी होए शाले में, I don't care. अगर बैंक देखने को मिले, I just want to see it. I want High Five to win, not because like I am really supporting High Five or anything. लेकिन मेरे को बैंक देखना है. High Five हाई फाइव यहाँ पे जीत जाओ, फिर बैंक में जिसको जीतना है, जो भी अच्छी टीम है कर आके खत्म करो, बस बैंक में जीतना है. बट नेवर माइंड, ऑल दैट मे हैपन. राइट नाउ 3 मैप्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे देख लिया है. देयर हैज बीन सो मच एक्शन एंड देयर इज स्टिल मोर एक्शन टू गो. बट बिफोर वी जंप इनटू मैप नंबर 4, व्हिच इज रियली गोइंग टू बी एक्साइटिंग, सीरीज पॉइंट इज हियर. अ लॉट कैन हैपन बिफोर वी गो इनटू मैच 4. थोड़ा सा टाइम लेंगे, द प्लेयर्स नीड अ ब्रेक, ऑल ऑफ अस नीड अ ब्रेक एज वेल, बट
In the break as well, we'll have a recap, we'll have highlights, the best moments. हम इतनी ज़्यादा map wise statistics की बात करते हैं, 13 kills, 16 kills. Now we have a chance to show all of that as well, thanks to the highlights. So let's go into the break, let's enjoy the highlights, and then we'll be back refreshed and ready for map number 4. Stay tuned. Got him. Let's go. सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं हाई-फाई के पास. Akatsuki are taking it very smartly. Doctor gets a big 2 rhymes in buck को मिलेगा. Akatsuki take it very nicely and end up winning the round. Guys, with buck के पास है luck और उसके साथ हुसैन को खत्म किया है. And they're asking for a pause rating. Death Amar, and again Vortex will take the worst. With Buck still with that first round coming out in the hands of Hi-Fi or Hi-Fi. They'll be calling me royalty. That's true, give me your loyalty. 'Cause I'm taking over, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Introduction, cause they know Brit and Mo, I
hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am, burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fuck, you got a feeling that it's gonna be a long night. And battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break, swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption. One's a company, two's a crowd. Three's a party coming, move around like fresh fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Just like a darling, low hitting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with this steady. Open for plans tonight. Lost in the afterglow. Oh, girl, your love for me keeps calling me, so I'm calling you. Lord, give me lots of fire. I long for your company. Oh, girl, your love for me is a part of me, my biology. Yeah, it won't be over till the fat lady sings. I owe you a trip cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' ooh, smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Just like a darling, loaded and heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with this steady. Open for plans tonight. Lost in the afterglow. Oh, girl, your love
second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open enough just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you. Got him. Let's go. So, ladies and gentlemen, welcome back to Asus ROG Showdown series for Rainbow Six Siege, and it's what? It's the grand finals today. और 3 मैप हो चुके हैं. First map was won by Akatsuki, second was won by Hi-Fi on the map of Coastline, और third Oregon Akatsuki के हाथ में जाता हुआ, जिससे सीरीज पॉइंट आ जाता है Akatsuki के साथ. और इसी के साथ हमारे साथ है रियल CCV भाई साहब हमारे एज माई को कास्टर एंड पार्टनर इन गेम. सॉरी. अच्छा हाँ ठीक है. ओके बट राइट नाउ हमारे साथ है हमारा नया मैप विच इज गोइंग टू बी मैप नंबर 4 ऑफ शाले. काफी बार देख लिया है. येस्टरडे दोनों के दोनों टीम्स ने खेला था ऑन स्ट्रीम अगेंस्ट अदर ओपोनेंट्स. अकात्सुकी ने कोहेजन के अगेंस्ट खेला था एंड दे एंडेड अप विनिंग 7-2 एंड हाई-फाई प्लेड इट अगेंस्ट शैटर्ड ड्रीम्स एंड दे वन 7-1. तो काफी कंफर्टेबल विन्स थी दोनों टीम्स के लिए इस मैप पे. अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ेंगे यहाँ पे एंड दैट इज द मेन थिंग राइट हियर. द फैक्ट दैट अकात्सुकी आर ऑन सीरीज पॉइंट means that Hi-5, well, they have used up all of their second chances. अब वो एक भी मैप नहीं हार सकते. Every single round, every single kill matters. So we'll be starting off with the ban phase. Thatcher yet again वापस से ban हो गया है. No surprises there. The second, there won't be a second ban. That is very very interesting. Akatsuki, वो attack पे हैं, उन्होंने कोई भी attacking operator ban नहीं किया है.
That is really very very interesting, I've got to say. It does make a bit sense, but then again आप ऐसा operator भी ban कर सकते हो which your team doesn't play and the opponents do. For example, Finka मेरे mind में आता है, Finka या Lion. हमने Akatsuki को बहुत ज़्यादा Finka Lion खेलते actually या Finka Lion भी खेलते हुए देखा है coastline के map पे. But never mind, Goyo is the second ban of Akatsuki, so they have something in mind. Looks like they may have done their homework or they're doing something out of the ordinary. कि high five के bans normal है, Thatcher and Valkyrie, something we see always, but a no ban and Goyo, that is very interesting. यप, ये नो अटैकर बैन का मतलब है कि उनको हर एक ऑपरेटर खेलना है अटैक में, एंड यू नो दे आर नॉट रॉन्ग इन दैट, बट स्टिल आई थिंक एटलीस्ट एक दो अटैकर निकालने चाहिए थे, एंड द प्लेयर्स हैव रिटर्न बैक टू द मोड. सो आई थिंक कुछ ज्यादा ऑपरेटर फ्लक्चुएशंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल आई बिलीव दैट अगर थोड़ा बहुत अगर चेंज कर सकते हैं आप तो चेंज करते रहिए, बिकॉज यू नो सामने जितने भी प्लेयर्स हैं दे आर एक्सपीरियंस, तो आपका वो जो प्ले स्टाइल है वो जानते हैं, एंड यू नो अगर आप अपने एनिमी का प्ले स्टाइल नहीं जानते तो यू नो इट्स बेटर यू जस्ट डू थिंग्स आउट ऑफ द ब्लू. So yeah, I would just advise that operator selection की बात हम करें तो Shinra will be on that. Wamai Avid V on that smoke. So वो smoke जो support role है वो he's continuing that. Vortex on the Jaeger, Taha on the mute, Hussein on the Mira Hussein. Osa, okay, he might be AFK. I think 6th pick होगा. Sophia, yep, maybe Osa. वैसे looks cute, not होगा that, क्योंकि it's not allowed right now. Yeah, of course. Atharva will be on that Zofia. So अभी Atharva was on that flex role, तो यहाँ पे थोड़ा एंट्री फ्लैगर साइड पे आ रहे हैं Zofia लेके. एस भी ले लेंगे, राइम्स विद बक विल टेक डाउन फ्लोरेस, एंड डॉक्टर जैकल लेंगे. Yep, so वही composition को देखें, it's very very similar. The teams are ready, you know, they have resumed the timer, so that's nice. We can start map number 4 and 6 pick या Osa will be 6 pick. Mira as well, क्योंकि बार गेमिंग की बॉम्ब साइट है. मीरा हमने बहुत कम बार देखा है. That was just to confuse their opponents कि मे बी हम बेसमेंट जा रहे हैं, वाइन सेलर, एंड इसलिए मीरा लिया है. बट नाउ they'll be picking into Frost not just because of her frost mats, जो that's the least of their उनके उसके बारे में नहीं सोचते. It's more about the bulletproof shield that Frost has that will allow the defenders to extend towards like the second floor and all. वहाँ पे library stairs पे भी वो बैठ सकते हैं. So overall a good composition, nothing out of the ordinary right here. Attacking side में भी Jax, like you mentioned, all of the operators are same. Just Flores is there, which has been banned for quite a few maps. कल भी Flores काफी बार ban हुआ था, आज भी एक दो बार हुआ है. But it's all looking the same. There is nothing major that has changed, and even in the setup there isn't nothing major that has changed. अगर हम second floor का extension देखें, वही same hatch open हो गया है, same bullet holes हैं, line of sights भी create कर रहे हैं mezzanine की तरफ से. Everything is looking fine, and both members of High Five and Akatsuki know that this is going to be normal. यहाँ पे setup यही होगा. It's just about the kills at this point. मेरे लिए because Chalet हमने काफी बार देख लिया है, and Chalet में unlike Clubhouse and Coastline बहुत ज़्यादा changes भी नहीं आए हैं. It's going into that route of normal gameplay हो जाता है. यहाँ पे थोड़ा बहुत predictable हो जाता है, तो unpredictable करने के लिए you need to win your gunfights, which is exactly what Akatsuki and High Five will be planning right here. Speaking of gunfights, Taha भी gunfight में आ सकते हैं. Oh, he just missed a couple of bullets right there by inches. He is still holding the window angle. And now he falls back to the dining area, and Atharv को मिलेगा opening kill. Vortex has also been tagged, so High Five right now under immense pressure, and I think इनके roamers को थोड़ा बहुत fall back करना पड़ेगा. Yep, 2 minute 2 seconds on the board. Still nobody coming. Oh, okay, एक body आ चुकी है यहाँ पे. Vortex की health भी बहुत ज़्यादा कम है, but he is getting tracked by that Jackal's Inox tracker. तो दोनों के दोनों players यहाँ पे track हो चुके हैं, और ये जो stairs का area वो बहुत यहाँ पे choke point हो सकता है, क्योंकि we always have seen that Shinra यहाँ पे Finka लेके push करते हैं, लेकिन अभी वो attack में नहीं है, वो अभी defense में है. So यहाँ पे attack में भी कोई Finka या कुछ दिख नहीं रहा है हमें, but still Doctor can be way more aggressive with those Inox trackers over there. So Amar यहाँ पे, Doctor यहाँ पे aggressive होते हुए Vertex का kill ले लेंगे. So Jaeger is out of the board, and he will throw that flash in order to burn all the ADSs right now. And he knows that there is someone. Smoke can stay drop out कर देंगे, and we will take down Taha.
Yeah, एक kill. Finally, एक kill मिलेगा high five को. That's going to be Hussein who got that kill, but Hussein himself has been dropped. अविद भी अकेले बचते हैं. Smoke से library stairs पे खेल रहे हैं. 1 minute है. Plenty of time for Akatsuki to go for any sort of play that they would like. वो यहाँ पे easily final kill ले लेंगे इस round का. And because of the fact that they started off on such a strong foot, उनको ये ओपनिंग राउंड मिल जाएगा. एंड दैट इज द थिंग, हाई फाइव को ऐसी चीज़ें प्रिवेंट करनी है. दे कैन नॉट अलाउ अकात्सुकी टू कीप ऑन विनिंग एंड विनिंग देयर अटैक राउंड्स ऑन अ मैप लाइक शैले. अगर यही होता रहा देन यू नो हाई फाइव विल बी इन प्लेंटी ऑफ ट्रबल, स्पेशली लेटर ऑन जब अकात्सुकी के पास यू नो थोड़ी बहुत लीड मेंटेन हो सकती है. एंड दैट इज द मेजर रीजन वाई हाई फाइव नीड टू पुट एन एंड टू दिस. हम वापस से सेम बॉम्ब साइट पर जाएंगे बार इन गेमिंग की. एंड ऑपरेटर कॉम्पोजिशन में कोई ज़्यादा चेंज या नो, देयर विल बी no change whatsoever. वापस से Frost है, you've got Vamai, Smoke, Jaeger, Mute, so everything is the same. Attack के side से भी I believe is the same comp. So yeah, the lineup is not changing at all. Lineup की जगह it's just going to be the gunfights that these players will be taking, because yet again, like I mentioned previously, predictable gameplay, and yeah, the only way to break the chain is to get more and more kills. In this case, maybe High Five can try something else. थोड़ा सा और utility वो dispatch कर सकते हैं bomb site के आसपास, like they always do, you know, library hallway में shield होता है. Like we can see this setup right here. 3 Jaeger ADSs, mute jammer, shield, इतनी ज़्यादा वो utility यहाँ पे डाल रहे हैं. So Akatsuki deal with that. It will obviously take time. लेकिन पिछले राउंड में Akatsuki के फेवर में एक मेजर चीज़ चली गई, that they just got so many kills early on, and because of that there wasn't much that हाई फाइव वर एबल टू डू. अब हाई फाइव का एक्सटेंशन वापस से डाइनिंग में भी आएगा. पिछली बार डाइनिंग में बहुत ज़्यादा यू नो लाइन ऑफ साइट्स नहीं क्रिएट हुए थे. देयर वाज जस्ट ताहा जो यू नो जस्ट फ्रीली इंडिपेंडेंटली वहाँ अकेले खेल रहे थे. नाउ अ चेंज हैज़ बीन क्रिएटेड एंड दिस इज द वन मेजर चेंज वी कैन सी इन देयर सेटअप. अटैकर्स के साइड से आई डोंट थिंक कोई मेजर चेंज होगा. दे नो व्हाट टू अटैक, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. Yeah, pre-fires coming in from all around the map. और यहाँ पे Frost के साथ अगर आप aggressive खेल रहे हो तो आपको please headshot से connect करना पड़ेगा, because you know यहाँ पे बार fire rate की आ जाती है और यहाँ पे Envy यहाँ पे prone रह के निकाल लेंगे, but still Doctor will take out Hussein. So that Frost pick is out now. You know, I already told that अगर आप Frost की 9mm से खेल रहे हो तो आपको headshots पे headshots crack करने पड़ेंगे, because you know either that you will suffer a lot. That weapon is not made for 1v1s. यहाँ पे आप बहुत एकदम as a sneaky level का play कर सकते हो, but यहाँ पे Shinra will be pushed back down. And so far ऊपर का control थोड़ी तरीके में मिल चुका है, लेकिन अभी तक Jaeger ऊपर है, so partially control मिल चुका है ऐसा आप कह सकते हैं. Still, so the Jaeger needs to be flushed out more. Shinra has moved back onto the stairs once again. So if he is not taken out, I don't think so Jaeger would move on either. एग्जैक्टली कोई भी यहाँ पे डिफेंडर मूव नहीं करना चाहेगा. Envy also applying the pressure from the K9 balcony. Shinra has been tagged. उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं. अटैकर्स आ गए. Shinra goes down to fireplace and he goes back to the bomb site safely. पूरा का पूरा सेकंड फ्लोर डिफेंडर्स ने अब इग्नोर कर दिया. They have fallen back because they've realized अटैकर्स का यहाँ पे आतंक है and there is no way we can survive in these conditions. They have wasted plenty of time. You know आधे से ज़्यादा राउंड यहाँ पे वेस्ट हो चुका है and Akatsuki are still looking for more kills, as right now we can see that it's only a 5 versus 4. So we can see that the attackers are still ready, you know, they're still on the hunt. Drones कर रहे हैं, information ले रहे हैं and information के basis पे kills भी ले रहे हैं as Envy gets yet another headshot. The Flores drone going inside the bombs and I think this may be another round favoring the attackers. This may just be a flawless round in of itself. Taha with the MP5, the only person surviving, and that, yes ladies and gentlemen, that will be a flawless round going in favor of Akatsuki as they take their second win of attack on the map of Chalet. Second consecutive win. You know what that is कि एक बार अगर आपकी वो flurry नहीं टूटेगी तो maybe just maybe Akatsuki might be able to take it. But यहाँ पे I think first map जब Hi-Fi का था, I am talking about the semi-finals in front of Shattered Dreams, वहाँ भी आई थिंक 1-1 स्कोर था. उसके बाद हाई-फाई का जो वो मोमेंटम है वो ब्रेक नहीं हुआ. बट यहाँ पे आई थिंक ओरेगन में या क्लब हाउस बोलिए, आप कोई भी मैप बोलिए, जिसने भी हमने देखा है जहाँ पे हाई-फाई का मोमेंटम ब्रेक हुआ है वहाँ पे थिंग्स हैव स्टार्टेड टू गॉन मोर क्रेजी
for high five because एक बार वो momentum टूट जाता है, you are playing the fourth map, यहाँ पे pressure आपके ऊपर बहुत है, you are facing a lot of pressures on the team, yelling and every sorts of things, so वो momentum break नहीं होना चाहिए, but अगर Akatsuki का वो momentum बन रहा है, so it would be very hard to break that. Absolutely, Akatsuki के लिए right now. I mean, हमने कल भी देखा था, best of 3 में how quickly their momentum made and 7-2 जो उन्होंने दोनों maps पे जीत पाई थी against Cohesion, and that is the thing against Akatsuki. Looks like they finally found their footing. Akatsuki as well. I mean, दोनों teams के बारे में हम बात कर रहे थे that both these teams have made plenty of roster changes. Completely team synergy अभी तक नहीं बैठी. I'm sure these players play ranked with each other a lot of times. Doesn't matter कौन सी team में, all that. But yeah, they play ranked with each other and all that. But still, in a competitive environment like right now, playing for a prize pool as large as 75,000 rupees that the Showdown series has for all of these players, it does put pressure on all of them. So अभी के लिए bomb side change होगी High Five की तरफ से. They are trying something new. एक completely नया ये लोग setup भी लाए हैं. I mean, setup and operator composition भी लाए हैं. We are seeing Tachanka. I mean, इससे पहले हमने कल Tachanka देखा था Oregon के मैप पे Akatsuki versus Cohesion. उससे पहले I don't think we've seen Tachanka a lot of times in this tournament in general. So yeah, he's being brought out. Shumika launcher hai. He's got his gun as well that I forgot the name of, but yeah, very, very damaging gun. And speaking of Tachanka, Hussein has been tagged just the tiniest bit. Shindra also looking to take gunfights as all over the map. Attackers and defenders are colliding against each other. Hussein वापस से वहीं peek करेंगे Solarium की तरफ. थोड़ी सी और damage and he realizes कि safe option होगा यहाँ पे fall back कर लेना. Yes, fall back करने के लिए वही safe option है वहाँ पे. और ये अगर there is no need to pick out when doctor is there in your line of sight. So Vortex यहाँ पे एक और kill एक और engagement देंगे तो शायद उनकी body यहाँ पे hang out हो जाएगी. And I think 1 minute already down हो चुका है. 1 minute 40 seconds remaining. Still no answer from either of the teams. बस Envy की health 50 health पर जाके रुकी हुई है. Vortex and Hussein has been got down and he's down but not out. But in a not out state. So अगर उनको उठाने तो यहाँ पे अरुणी को यहाँ पे खत्म करना होगा and doctor knows that Shinra is there, so he would just watch out for someone if someone is peeking from the library window. But he has got Envy now, so Envy can watch out on that door. But still, I don't think Tachanka would be able to make it somehow. या तो ऐसा एक और प्लेयर की लाइफ रिस्क करनी होगी उनको उठाने के लिए. So they cannot afford that at this stage of map particularly. So I do not advise that because दोनों के दोनों windows पे crossfires बनी हुई है. If you just go to revive him, you will just give your own life for free. Exactly, yeah. Revive करने के लिए Rhymes with Buck, I mean, revive करने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए Rhymes with Buck वहाँ पे हैं, and he finishes the deed that he had started. So he gets the kill onto Hussein, and again roam clear यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से आ रहा है attackers की तरफ से. Now they are ready to execute on the bomb site as well. वही Solarium की stairs पे आ गए हैं, second floor control ले लिया है. Finally some retaliation from the members of High Five. Vortex gets the headshot onto a third, and keeps his position, secures his position still near the dining area. And यहाँ पे drop down plan कर रहे हैं Akatsuki के members. बहुत dangerous है. Look at Rhymes with Buck. Has no one spotted him? Flashes देख रहे हैं. Right next to him there's a defender that Doctor ends up killing for him. 11 seconds बचे हैं. Doctor यहीं bomb site में है. Smoke is right there who gets the headshot. 7 seconds right now. Akatsuki are looking to plant the diffuser. Shotgun यहाँ पे एक shot miss करेगी लेकिन shot लेंगे. Avid भी he gets the headshot onto Rhymes with Buck. Spike diffuser plant हो गया है. However, the M59 shotgun reigns supreme in that corner. I think it's the second quad kill of the tournament for Avidvi, and that too in this very best of 5 series. Exactly. I have to say, wow, man. Again, he's looking to be the person who will be the MVP for this game. बहुत अच्छी performance आई है. We are now going into basement, wine and cellar as High Five have realized कि first floor bar and gaming isn't their bomb site right now. We don't want to go to second floor office just yet. So let's go down a notch. Let's go to wine cellar. Let's see वहाँ पे क्या होता है. They've got Cade, they've got Mira. Again, looking at the operators that they have, it's looking like a very, very solid setup. We can probably predict where the Miras will be placed. Cade's Electroclaws will be there on the regular.
on the breaches itself and on the walls that attackers will be planning to breach. And वही attackers की बात करें यहाँ पे केड वॉल से डील करने का क्या इनका मेजर तरीका होगा, स्पेशली ऑन दिस गैराज वॉल, स्नोमोबाइल वॉल, जहाँ पे Taha, where he is reinforcing right now and where he will play his Electroclaw. Their best bet, obviously, I think is going to be open the floor in Fireplace and try to shoot the Electroclaw. But without an IQ, things may get a little difficult. They'll have to use their drones to get some sort of information. But uske alawa, still, the attacking lineup, it's looking fine as well. Nothing out of the ordinary right here. The setup is looking good from both High Five and Akatsuki, and everything is preparing to be another exciting round. Yep, इसी के साथ prep phase खत्म होते हुए and shotgun holes are being made in order to clear some line of sights. Defense है नीचे का, basement, it's a basement defense, but यहाँ पे kitchen पे थोड़ा बहुत prep किया गया है. So I don't know what to make out of that, and doctor knows that there is someone on the top floor. So practically Jackal है आपके पास, तो आपको पूरा map clear के लिए जाना चाहिए. जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, because if you were to look onto a basement site और जरा सा मिस हो गया था यहाँ पे, अथर्व से, और I don't think he might be able to make it. शिंडा यहाँ पे बहुत सारी प्रीफायर्स देंगे और अथर्व will be brought down to 10 HP. Yeah, काफी ज़्यादा यहाँ पे engagements लिए हैं अथर्व ने, a lot of gunfights, and he goes back, not safely, but he falls back. Doctor is in a down but not out state. Vortex headshot ले लेंगे इन V पे. Akatsuki are not looking good right now. Many of their members are in disarray. एक और kill मिल जाएगा, and yeah, just Taha going on a killing spree right now, and doesn't look like Akatsuki will manage to survive this round. Look at the HP of Deathmar and Atharv. C4 भी बहुत अच्छा pop होगा. Taha has been put in a down but not out state. Kill confirmation अभी के लिए नहीं आएगा, but at the end of the day I don't even think that matters a lot. You know, with Atharv being the only person alive, he's just going to try, he's just going to play passively. Akatsuki ये थोड़ा सा time लेंगे सोचने के लिए what exactly they need to do in order to make sure that, you know, everything is set for the next few rounds, क्योंकि अब बारी आती है हाई फाइव की, या तो वापस से बार एंड गेमिंग जाएंगे और दे विल गो टू सेकंड फ्लोर ऑफिस एंड बेडरूम. नो मैटर व्हाट द बॉम्ब साइट इज, आई थिंक Akatsuki विल बी प्रिपेयर्ड टू टेक देयर अपोनेंट्स हेड ऑन. उनका बहुत सिंपल प्लान होगा यहाँ पे ब्रीच खोलने का and then, you know, diffuser plant करने का. Otherwise I don't think anything else majorly will be taking place. So right now, you know, with the round coming to an end and round number 5 coming to its start, High Five are choosing to go back to bar and gaming. This is something, you know, ये उनकी चीज़ है जो हमने काफ़ी बार देखी है. We have seen this on the map of Oregon and all that as well, that if they lose a bomb site, if they keep on losing the bomb site, they'll still play, it does not matter. And in this case, yeah, they're going back to bar and gaming. They don't want to change that anytime soon. So things are really shaping up nicely for Akatsuki, क्योंकि previously दोनों के दोनों बार उन्होंने बॉम्ब साइट जीती है. इस बार डिफरेंट हाई फाइव क्या करेंगे, दे विल ब्रिंग आउट द क्लैश, एंड क्लैश के जरिए कोस्ट लाइन का वो आखिरी राउंड किचन डाइनिंग में जीते थे, सॉरी किचन एंड सर्विस एंट्रेंस में हाई फाइव जीते थे. But we are still not sure how it will pan out right here, right now, as they do start the preparation phase, and it's going to be the same preparation as well. The mute jammer, smoke shield, Vamai discs, I mean there's going to be no change to that whatsoever. बस वही जैसा हमने एक कहा, that Hussein instead of the Frost with the bulletproof shield, he'll be playing the Clash, and I think he'll be playing somewhere around mezzanine. वहाँ पे कहीं खेल रहे होंगे. अटैकिंग साइड में भी एक चेंज आया है. Buck rhymes with Buck instead of Flores, he'll be picking the Lion. And yeah, pretty much that's about it. You know, Zofia वापस से थर्फ पे है. Invis with the ace. I don't see any major changes in the plan of Akatsuki. उनको बस make sure करना है कि वो gunfights ना हारें, like they weren't doing for the past, for the previous 2 rounds. You know, जब सबसे पहले 2 round में वो कोई gunfight नहीं हारे थे, flawless rounds कर रहे थे. That was great performance. But since then थोड़ा हमने comeback देख लिया High Five की तरफ से, and right now High Five do have a bit of that momentum. Yep. One more thing I would like to highlight there, कि अगर जोफिया छोड़ के आप स्लेज भी ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकेबल फ्लोर्स बहुत है, चाहे वो 1F पे जाए, चाहे वो 2F पे जाए, चाहे वो बेसमेंट में जाए. यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ दैट स्लेज हैमर, एंड हु इज मेकिंग यूज ऑफ दैट C4 इज ताहा. और यहाँ पे डेथ हैमर पे बहुत स्वादिष्ट किल ले लिया है यहाँ पे. नोमैड इज आउट ऑफ द बोर्ड, 2 एयर जैब नहीं दिखेंगे आपको फ्लैंक कवर करते हुए, एंड यू नो
Nomad is one of the best operators on attacks as far as you are concerned about flanks. तो Nomad ये आपके पास, और यहाँ पे Jackal को footsteps मिल जाएंगे किसी के, and he'll be sure to track it on, and the player will be pinged. I believe it's Jaeger. शायद वो Jaeger है. He's getting pinged over. Yep. No, it's not Jaeger. It's Smoke. तो यहाँ पे Clash 2F पे है अभी तक, and she needs to be cleared out really. और यहाँ पे लाइब्रेरी से लाइब्रेरी से लाइन आते हुए एक बार अगर लाइब्रेरी क्लियर हो जाती है तो इट माइट बी अ बिट इजी टू एक्सिक्यूट ऑन बी साइड, ए साइड, क्योंकि आप हैच से नीचे उतर के प्लान कर सकते हो अगर आपके पास पूरा कंट्रोल है तो. लेकिन डॉक्टर विल टेक आउट शिनरा. तो फाइनली द नेल इन द कॉफिन इज बीइंग रिमूव्ड आउट. वर्टेक्स की भी एचपी थोड़ी कम है यहाँ पे. E1D स्कैन हैज बीन पम्प्ड आउट, और यहाँ पे वमाई का डिस्क आपको दिखा, फिर भी आपने शूट नहीं किया, बट स्टिल Rhymes with Buck will take down Vortex. Jaeger is no more on the board, and once again man disadvantage goes to Hi-Fi. या एक और बार अकात्सुकी यहाँ पे थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं. द क्लैश इज स्टिल एक्टिव एंड द क्लैश कैन स्लो डाउन द अटैक अ बिट मोर. लेकिन सपोर्ट में अब दोनों एसएएस ऑपरेटर्स बचे हैं जो लॉन्ग रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते. शॉर्ट रेंज, आई मीन दे रूल शॉर्ट रेंज विद SMG11 एंड देयर M59 शॉर्ट गन्स, बट इन लॉन्ग रेंज ये 2Xs के साथ द अटैकर्स डेफिनेटली हैव लाइक अ बेटर एडवांटेज एट द मोमेंट. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. Let's see what exactly happens. Staha completely caught off guard by a Tharb right there. Mute also falls. Only 2 members remain alive. Oh. And clashes right there in library. However, Doctor gets a brilliant shot. He drops down. Avidvi takes his kill. But by doing so, Avidvi ने सबको अपनी location बता दी है. And he gets another headshot for it. Everyone is piling on the pressure. He is completely flashed with nowhere to go. The attackers are looking to execute. 15 seconds बचे हैं. Can Atharv get the kill? Yes, he can. Akatsuki get their 3rd round on board. One thing very cheeky to watch out that चाहे कितना भी disadvantage हो, Akatsuki managed to get back on track. तो पहला पिक जब अमर का निकला उसके बाद एक चीज I noticed that Shinra was over peaking I think a certain point. फिर वो Jackal track हुए, उसके बाद Shinra was the first defensive body. After that Vortex was the second one. तो यहाँ पे जब तक आपके पास कंट्रोल है तब तक आप रहिए. You just don't wait for kills. Your motive should be wasting time. चाहे आप कैसे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आपके पास बॉडीज नहीं है ठीक है चलेगा. जस्ट वेस्ट इनफ टाइम सो दे आर इन अ लॉट ऑफ प्रेशर कि वो जब साइड में एक्सिक्यूट करे तो वो एटलीस्ट क्रॉस फायर्स भी ना देख पाए अपने. सो यू हैव टू क्रिएट दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर्स इनटू दैट. हुसैन यहाँ पे टचांका से स्विच ऑफ करेंगे मेलूसी पे, एंड आवर वन आइड पायरेट इज हियर. दैट्स कैपिटाओ ऑन द साइड ऑफ डॉक्टर. तो यहाँ पे बहुत टाइम हो गया. पिछले मैप में हमने कैपिटाओ देखा था सिर्फ एक बार, जो कि इनवी ने लिया था. आई बिलीव इट वाज कोस्ट लाइन व्हेन दे वर ऑन अटैक, एंड अगेन दिस मैप कैपिटाओ. सो कैपिटाओ इज रियली यूजफुल. आई डोंट नो व्हाई पिक रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चुका है. यू नो आफ्टर विंड बैस्टियन ही रिसीव्ड अ बफ एक्चुअली, कि उसके जो इंसेंडियरी और स्मोक ग्रेनेड्स है ग्रेविटी के हिसाब से वर्क करेंगे एंड दे विल स्प्रेड इनटू एन एरिया. So after that काफी हद तक उसका पिक रेट भी ज्यादा था. बट अगेन आफ्टर सम अमाउंट ऑफ नर्व्स आई थिंक उसकी जो LMG थी उसकी साइट्स निकाल दी गई थी, उसके बाद उसका पिक रेट फिर से कम हो गया. एंड अगेन ही हैज बीन ऑन द राइज. सो यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ऑपरेटर, बट स्टिल इट्स अ लॉट ऑफ यूज फॉर अ पोस्ट प्लान सिचुएशन. Yeah, I have to say काफी options होंगे, and यहाँ पे Akatsuki, they've got to make sure that right now अगर हो सकता है then they end their first half with an advantage and they go in their defense at a 2-round lead. I mean वो तो काफी ज़्यादा होगा. Hi-5 के लिए they have to win this. I mean it is do or die right now. And for Akatsuki अगर वो ये round हार भी जाए it won't be too bad. 3-3 equal split हुआ है and Chalet जैसे मैप पे डिफेंस में जा रहे हो, that's fine. But at the moment how it stands we can see that ये काफी strong लग रहा है किचन डाइनिंग का डिफेंस. आई मीन द डिफेंडर्स, द रोमर्स ऑन सेकंड फ्लोर, उनको निकालना भी मुश्किल है. लुक एट Shinra and the angle he is holding. He is taking those gun fights. He has been tagged. And अब I think Shinra थोड़ा सा fall back करेंगे because he realizes this is a dangerous position. He has lost a significant amount of HP. तो उसकी वजह से
वो यहाँ पर अभी और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे. Meanwhile, the members of Akatsuki जो attackers हैं, they are just gaining some map control around mezzanine. अभी roam clear पे वो आए नहीं हैं. They've just drawn things out and they're just looking to get some more map control under their belt. So still very calm, very passive. कोई भी अभी तक नहीं मरा है. It's going, we are going into the middle of the round. आधा round बीत गया है. Nothing has happened as of yet. The defenders are taking it very very passively and attackers को सोचना पड़ेगा यहाँ पे that what is their game plan, how do they want to execute. अभी तो सीधा बॉम्ब साइड के आउटसाइड हैं, बॉम्ब साइड के बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन सीधा ब्रीच करके घुसने का आइडिया है. और is there something else that they are planning? जब विद दैट एक फ्लैश ग्रेनेड अपने डाल दिया सूर्या गेट के ऊपर टू डिस्टर्ब दैट एंट्री आपकी इजी करने के लिए. और यहाँ पे मेलुसी इज वाचिंग दैट बाथरूम एंगल अलोंग विद हिम, बट ताहा अगेन इट्स द सेकंड टाइम इनवी C4 से अपना किल दे बैठे हैं. एंड अगेन डेथ अमर विल इजीली रिफ्रैक्ट दैट ऑन 2%. सो आपके पास मेलुसी नहीं है, आपके पास मे बी C4s नहीं है या इम्पैक्ट नहीं है. तो इम्पैक्ट कैन मेक अ ब्यूटीफुल रोल, बट यहाँ पे डॉक्टर विल टेक डाउन ताहा. सो डिफ्यूजर वापस ले लिया है अपने पास में, अपने हवाले में. एंड आई डोंट नो वेयर द जोफिया इज हेडिंग ऑन टू, क्योंकि डिफेंस 1F का है एंड आई एम सॉरी किचन का है. Is it the kitchen? Okay, it's the kitchen defense right now. Yeah. It's all up to Abhidvi, and he's just gushing out into the incendiary grenade. And Vertex का nice shot दोनों kill लेते हुए Atharva will be trading out Abhidvi, but no, Lion is already into the side. It's a 2 versus 2. 24 seconds on the clock remaining, and they need to look out for an execute right here. So diffuser pick कर सकते हैं, but Shinra is repositioning himself up top, and if they manage to get this. If Shinra manages to at least stop the plant, he can make things worse for them. And यहाँ पे plant करना ही होगा, and he needs to watch out his plant. Vertex is coming out, but he plant deny कर दिया यहाँ पे ऊपर से, and that's a very nice play coming out from Hi-Fi Esports over there. And one more round going out in the hands of Hi-Fi with the help of Shinra. Yeah, that was the round winning moment right there. I mean, had that not happened, Akatsuki, I mean, कुछ भी हो सकता था पोस्ट प्लान में, लेकिन Akatsuki ने उनकी पोजीशनिंग अच्छी थी एंड टाइम लगता हाई फाइव के मेंबर्स को रीग्रुप करने में. बट थैंक्स टू शिनरा, ही रियलाइज्ड ही हैड द स्पेशल अवेयरनेस कि कहाँ पे, एंड द मैप अवेयरनेस एज वेल, कहाँ पे प्लांट हो रहा है, कैसे डिफ्यूज़र जो भी प्लांट कर रहा है डिफ्यूज़र को उसे मारना है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. सो दैट्स गुड. 3-3 Hi-Five not looking, I mean, not that bad. It's still equal. लेकिन वही बात है, अगर वो Akatsuki को उनके डिफेंस में रोक सकते हैं, then I have nothing against the 3-3 equal split. Akatsuki right now we have seen, एंड दोनों टीम्स को हमने एक तरीके से देखा था कल. उनके डिफेंस में बहुत ज़्यादा हमने उनके राउंड्स नहीं देखे थे. डिफेंस में दे हैड मिनिमम अमाउंट ऑफ राउंड्स. Hi-Five ओनली प्लेड देयर 2 डिफेंसेस एंड दोनों के दोनों डिफेंस वो जीत गए थे. अटैक भी जब वो खेल रहे थे, दे हैड प्लेंटी ऑफ विन्स. So let's see what happens right here. The first bomb site, just like what Hi-Five chose, Akatsuki भी यहाँ पर बार गेमिंग ही यूज करेंगे अपने पहले ऑब्जेक्टिव के लिए. बस ऑपरेटर कॉम्पोजिशन में काफी चेंजेस आएंगे. Death Hammer will be choosing the Aruni right now, something that Hi-Five did not bring in any of their bar gaming setups. Clash नहीं है, you've got Frost, you've got Alibi, दो shield wielding operators हैं, smoke नहीं लाए हैं. So yeah, that's pretty away from the standard that they are bringing, that you've only got a single SAS play that's going to be mute, not smoke, वो information and drone denial के लिए. But then again, we can see how that pans out. Let's have a look at what exactly will happen later on as we jump into the action phase. Setup complete हो गया है defenders का, attackers ready हैं आने के लिए. And it's up to the attackers to start firing on all cylinders from the get go, क्योंकि एक और बार match point अभी भी, series point Akatsuki के पास है. Yep, with that, और यहाँ पे एक और 7वां राउंड यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे अभी तक सेटअप चल रहा है. सो प्री राउंड सेटअप इट्स ओके, बट आफ्टर एक्शन फेज में अगर आप सेटअप कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रहना चाहिए. यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइन ऑफ फायर्स आते हुए इनवी की तरफ. And I think Alibi is a perfect operator for a setup like this, just because those prisma gadgets can be made so useful for the enemy attackers. I'm sorry, enemy positions. So yeah, यहाँ पे library के लिए डोनिंग हो गया. Abhidvi playing the thermite as he spots the Frost looking at the cam. लगता है Candy Crush खेल रहा है बेटा. But I think I don't think that Frost will stay for a longer time. अगर वो वैसे की वैसी रहेगी, okay, she's looking upstairs, so she knows that she has been spotted out.
वही एंड यहाँ पे अविद भी हैज बिन टैग्ड, गन फाइट ले रहे हैं मेज़नीन की तरफ, शिनरा भी आ रहे हैं एंड शिनरा को मिल जाएगा हेडशॉट अथर्व पे। सो दैट इज द ओपनिंग किल इन फेवर ऑफ द अटैकिंग साइड। शिनरा एक और किल के लिए जा रहे हैं अगेंस्ट एलिबाई। देयर इज समवन इन द पियानो रूम एज वेल एंड इनवी gets that kill behind the alibi. Prisma, लेकिन 2 और kills मिले हैं यहाँ पर High Five को। High Five are really looking good. Invi, can he catch that player off guard? I think he can. He has spotted the barrel of the gun. Tag करेंगे, लेकिन नहीं। Vortex, he gets that kill for himself. That could have been the comeback, possible comeback for Akatsuki. लेकिन High Five अपना पहला attacking round जीत जाएंगे। आप यहाँ पे 2-on-2 मैचेस हो रहे, 2-on-2 मैच हो रहा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ये मैप दोनों ही टीम्स अच्छी खेलती है और पिछला मैप भी दोनों ही टीम्स ने अच्छा खेला था अगर आप देखें तो पहले भी। सो यू नो स्टैटिस्टिक्स आर प्रीटी क्लोज। सो यू नो वी आल्सो टोल्ड दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीवन विद टेकिंग अवे दिस मैप, बट जितने पहले हमने प्रेडिक्शन किया वो भी सारे गलत ही थे, ठीक है। तो इतना ज्यादा इट्स नॉट it's nothing to worry, but still Vortex is taking off that Iana, Avid V taking off that Thermite, Shinra with that Maverick, Taha, Ash, Buck, Hussein. So pretty much a same lineup. Taha, I think last round he picked someone else, now he's picking up the Ash. यहाँ पे sticking to the Ash would be the key here, just because you know Ash के पास वो R4C है, चाहे वो G360 यूज कर ले, वो घुसने वाली जो कैपेबिलिटी है, she has to be the one who enters the side first और थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के बाद ही she might be able to look for an execute right there. So this made things really easy for Hi-Fi. Yep, यहाँ पर High Five के लिए they've got to make sure that वही उनका सेम कॉम्पोजिशन है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, so they have to do everything the same way. Akatsuki एक वो टीम है जिन्होंने चेंजेस किए हैं, डॉक्टर म्यूट की जगह वमाई खेल रहे हैं एंड इनवी एलिबाई की जगह स्मोक खेल रहे हैं। सो येट अगेन यू नो एलिबाई इंस्टेड ऑफ स्मोक, अगेन फिर से वही ऑपरेटर्स जो शील्ड लेके आते हैं, बिकॉज शील्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। एंड देन for the side of you know doctor with him switching from mute to Vamai, that's also going to be for utility denial, और ज़्यादा utility deny करें, try करें you know utility deny करके और ज़्यादा time waste करने का attackers का। Now it's more also about the kills that they're taking. पिछले round में काफ़ी ज़्यादा kills early on High Five के favor में चले गए। Akatsuki quite obviously they would not like that to happen yet again. इस बार attackers second floor से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, they're trying to get trophy control, second floor bedroom से enter करेंगे, ऑफिस में आएंगे and then they'll be looking to get library control as well. So yeah, they're ignoring library right now. Library में enter करने की जगह वो library के बाहर आना चाहते हैं, but yeah they'll be facing off against a Rooney. Roam है Akatsuki की तरफ से, there's no denying that. They have plenty of roamers on the second floor, many people are there holding so many angles, तो इन सबको मारना मुश्किल हो सकता है High Five के लिए, but then again as a team with a lot of drones, with a lot of information, they can surely try and achieve that. Yep, they will try to achieve that with that. 4-3 का स्कोर है यहाँ पे, अभी तक दोनों टीम्स में से एक भी बॉडी नहीं आई है, दूसरा मिनट अभी चालू ही हुआ है बस। आई थिंक ओनली 2 minutes रिमेनिंग। रियाना का जो जेमिना है वो अंदर आ जाएगा ऑफिस के, दे नीड टू ब्रेक दिस बुलेट प्रूफ कैम एंड दे विल डू सो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी रोटेशन लाइन ऑफ साइज बनाई गई है ताकि ऑफिस के थ्रू कोई उनको मार ना सके अंदर घुस के। बट वन मोर थिंग दे हैव टू चैलेंज आउट कि ये स्टेयर्स से एटलीस्ट स्मोक या किसी को भी क्लियर करना होगा। इफ यू डू नॉट क्लियर दैट आई थिंक इट वुड बी वेरी हार्ड to put an emphasis on the vertical control. I think उनके पास sledge नहीं है, but Ash और Buck से उनका काम हो जाएगा, and for that they need to clear that staircase over with that library. So एक smoke canister दे दिया गया है यहाँ पे। Oh, did you? वो क्या था? Yeah. What was that? First of all, I thought that that bullet went onto the shield, but then again, 2 kills for Shinra onto that. Doctor will trade out Shinra with that. 2 versus 4 still. Atharva and Nines with Buck, one of the most good players on the side of Akatsuki. I believe they can still make it happen, but not with that 9mm. Frost अगर है आपके पास तो 1v1s तो बहुत दूर की बात है, because you know it always counts on that headshot. Atharva will get a kill onto Habibi over there, and somehow Atharva, okay, Vortex will. I'm at a loss of words. कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास अभी।
Yeah, यहाँ पर yet again, high five. They're really, really playing good. Jesse attack start to a high five are really on the front foot right now, and Akatsuki can do nothing but watch. अब finally हम पहली बार 9 rounds के बाद हम देखने वाले हैं master bedroom वाली bomb set. We haven't seen this at all, and Akatsuki instead of going to like wine and cellar, kitchen dining में जाने की जगह भी they're going straight for office bedroom. They've got Cade, they've got Mutant Smoke. They just want this. They just want to get over this as soon as possible क्योंकि बैंक में कुछ भी हो सकता है. That decider map, literally anything can happen because teams have not played it a lot. So that's why अगर Akatsuki, I think probably the thing going through their mind right now is अगर जितना जल्दी हो सके खत्म करते हैं. Because if it goes to bank, it's a coin toss, it's a gamble. No one really knows what will happen right there. So that's why Chalamet 2 rounds down him. Still not that much is lost. They can like push for overtime if they would like. I think overtime यहाँ पे realistic possibility है. 4 rounds लगातार जीतना Akatsuki के लिए that's not looking all too well. So they've got to make sure कि अभी के लिए they've got to win 2 rounds consecutively. Like no questions asked. They cannot ignore this. They cannot ignore the fact that high five, एक round दूर है match point के. That is a very, very big threat over all of the members on the side of Akatsuki right now. Looking at their defense, looking at their setup, it looks like it's going to be the default setup, that you will always get to see when watching office and bedroom. Rotations are being made, वही line of sights हैं. There's going to be a shield on that grand piano that I think, no, there'll be a shield in front of closets. Grand piano will be left all by itself and यहाँ shield पे खेल लेंगे to prevent any attackers from pushing into closets next to solarium and stuff. Okay, so something different that Akatsuki are planning कि अगर high five, solarium से है, how we can defeat them. But speaking of high five, they are not planning to do a lot right now. They are just entering from the southern side of the map. They've got everything ready. They've got everything in order to make sure सब कुछ सही जाए and कुछ भी बुरा ना हो. With all of that being said and done, हमने opening gunfight देख लिया एक और बार. High five other team looking better. Deathhammer dies by the hands of Hussein, and it is a 5v4, putting the attackers at a better position. बेटर पोजीशन पे तो है, बट आई डोंट थिंक सो मैवरिक ने ध्यान दिया है कि देयर इज अ कैंप इनसाइड, और यहाँ पे भागते भागते बहुत ज्यादा आवाज दे दिए यहाँ पे. I think it was Invi. Okay, it is indeed Invi because he has that MP5K and Atharva. What a nice shot, trading out, evening the things out for himself and his team. So यहाँ पे लाइब्रेरी का कंट्रोल मिल चुका है. ऑफिस के बाहर जो K9 जिसे जनरली कहा जाता है, so they have the control there as well. So I think they might be able to just make it happen, but they need to put those kite charges away just for now. अगर kite charges अपने नहीं तोड़े, so I don't think you would be able to make that breach happen over there. And right side की जो I'm not sure where that ash charge hit over there, and Buck बहुत ज़्यादा lit up होते हुए along with Atharva. Oh, sorry, it's Atharva who has been lit up too well. So the breach has been happening right now, and it's looking like that कि शायद ये मैच पॉइंट पे जा सकते हैं. हो सकता है अनलेस Akatsuki को और किल्स मिले, जो अभी मुश्किल हो रहा है with the death of Atharv. Akatsuki right now are at that man disadvantage. They need someone to go for that hero play. They need multiple headshots. They need someone to pop off. अभी डॉक्टर हो सकते हैं with the 416, but high five are just piling the pressure more and more. Rhymes with Buckshield के पीछे. Hussein has been tagged a little bit. Okay, but the attackers are still planning the execution. वही breach खुल चुका है. एक smoke canister का use होगा. That's going to be a trade. Still, Doctor and Invi, they need to do more. Drones are going into the bomb site. Information ले रहे हैं. ताहा G36 के साथ अभी gunfight में कभी भी आ सकते हैं. So a lot can happen, and they've got to make sure that they kill the defenders or they plant the diffuser, क्योंकि 20 सेकंड बचे हैं उनको diffuser अभी के अभी plant करना है. Taha goes down by the hands of Doctor. Invi also with the MP5 taking those gunfights. 15 सेकंड बचे हैं. हाफ वॉल के पीछे प्लांट हो सकता है. C4 है Invi के पास. क्या वो C4 से प्लांट प्रिवेंट कर सकते हैं? He is trying to toss the C4. नहीं, वो हट जाएगा. Destroy होगा. And Avidvi also dies, putting Vortex all alone. 1 versus 2. वो साइड एंगल से पीक करेंगे. Doctor knows about that. He is pre-firing. Also from K9, their members pushing. Vortex is holding the angle, and Doctor gets a triple kill. Meaning Akatsuki, even though they were down, they were not out, and they get another round, and they will put up the score, and it will be 5-4 right now.
oof, you have to commit the man and commit the moment, and you need a man like Doctor to clutch it out because it was a team effort indeed. पहले Doctor ने एक pick निकाला buck के ऊपर जो कि window पे था. That 3-5 was very nice. Again, he disabled even though the plant was down, he killed the planter और बचे थे in a 1 versus 2. So Invi बहुत अच्छा यहाँ पे big brain place किया. So he ran out of the window in order to just make sure he should bamboozle the enemy. And again, उसी का एकदम अच्छा फायदा लेते हुए Doctor snatched up that kill onto the last one, Abid V. And so far, 5-4 on the scoreline. Still, 2 rounds to go for Akatsuki for match point and 1 round for Edge for Hi-Fi to go on a match point. I do think that Akatsuki have what it takes, but it's just that कि कभी-कभी over picking के चक्कर में आप bodies खो देते हो, so that's a concern. Always, yeah, that is going to be a concern for the side of like for teams as well. So वही aggressiveness पे आ जाएगी बात. And now we are going to kitchen and dining. हमने bomb site बहुत ज़्यादा बार नहीं देखी. We've seen it a few times and right now actually we've only seen it twice. And 2 बार जब Hi-Fi ये bomb site पे आए थे, दोनों के दोनों बार वो अपने defense में जीते थे. And if that means anything, it's that defending teams are looking good on this bomb site right now. So I've got to say that if अगर हम उस basis पे चलें, then Akatsuki may as well be able to equalize the round count right now. 5-5 कर सकते हैं, लेकिन 5-5 के बाद क्या होगा? No one completely knows. So let's start off this round. Action phase आ गया. Defenders are finishing up their final setup. सारी अपनी utility डाल रहे हैं. Looking at the attackers, yeah, their everything of theirs has been the same. उनका पूरा operator lineup बिल्कुल भी नहीं बदला. It's Maverick, Thermite, Iana, Ash, and Buck. And same people, same agents खेल रहे हैं. Meanwhile, on the defense side, Amar this time will be playing the Jaeger for the first time, and Atharv actually यहाँ पर he'll be taking up the Cade, a role which Doctor played 1 round ago. So yeah, a few switch-ups happening for the side of Akatsuki, but nothing major. They're still roughly same operators हैं. Bomb site बदली है, and bomb site के चलते they've got to make sure कि वो इस bomb site को round win में convert करे, because like I said, match point अभी Hi-Five को देना, it will be too risky. Overtime is still a very looming possibility. Maverick यहाँ पे spot कर लिए हैं. He's there in that library hallway. He'll be looking to enter office anytime soon. Office में भी drones हो रहे हैं. Mute jammer Invi ने place किया है to deter off any of the drones, but still the attackers are pressuring on. Attackers बहुत ज़्यादा time यहाँ पर waste नहीं करना चाहेंगे. They are using all of their utility. सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं kills के लिए. As of now, not a lot of kills. No kills on either one of these teams. कोई भी member अभी तक कोई भी casualty नहीं हुई है. We are nearing the middle of this game. We are seeing that the breach in half wall has been opened, but still as of now no one has died. So the attackers, what is their plan right here? क्या वो roam clear के लिए जाएंगे second floor पे and और ज़्यादा time use करेंगे in hopes कि उन्हें कुछ kills मिले, और are they planning a direct execute? Thermite अभी के लिए dining में direct execute plan कर रहे हैं शायद से. So we may just see a rush sort of happening on the bomb site only. I think there's just one person in the site, and that is rhymes with Buck. As I know, but still, अगर आपको पूरी साइट एक्सिक्यूशन के लिए जाना भी है, तो फिर भी आपको प्लेयर्स को कंटेंट करना ही पड़ेगा in an after plan situation. But still, I don't understand that why there are 4 bodies upstairs. When you are defending on the नीचे आप defend कर रहे हो kitchen में, तो आपकी 4 bodies ऊपर क्या कर रही है? But now they have rotated back. 3 of the players are back, and Maverick is taking a lot of beating from someone. He's down to 25 HP for now. One smoke canister is on the way. Abidvi will get down a Tharva on that matter for sure. And 1 man disadvantage for them. 33 seconds on the board. And smoke canister आते हुए ये बहुत सही. Shinra is on a very low HP. If he bashes onto that Surya gate, he will be down. He will be down and not out. So you should look out for that. And Vertex, nobody knows that Vertex is there on that west main stairs, and he watches out. Aruni will down him, and Taha somehow getting up the top. Deathamar will take down Taha, and somehow it will be one more onto Buck. Invi and Deathamar will take down one more. Shinra will be taking down Rhymes with Buck, and defenders somehow win the round and make it 5-5.
जैसा हमने कहा कि ये बॉम्ब साइड डिफेंडर्स को फेवर करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर आ गया। अटैकर्स पहले रोम क्लियर के लिए जा रहे थे, फिर बेसमेंट में कुछ लोग चले गए एंड देन दे वर ट्राइंग टू गो फॉर द सेटअप, लेकिन स्मोक ने जो डिले किया वहाँ पे, आई मीन द स्मोक कैनिस्टर्स वर रियली गुड। राइम्स विद बक डिड एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ डिलेइंग द अटैक। शिनरा की एचपी इतनी ज़्यादा कम कर दी जैसा हमने देखा एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। Now is the moment. Can Akatsuki or can High Five take the win right here? I mean, विन का पक्का नहीं, मैच पॉइंट जरूर मिलेगा उन्हें एंड दैट इज द मेन थिंग बिकॉज नाउ अकात्सुकी 2 राउंड्स लगातार जीत के दे हैव गॉटन द मोमेंटम दैट दे ऑब्वियसली नीडेड इन ऑर्डर टू गो फॉर more bold plays. And हम बेसमेंट वाइन सेलर बॉम्ब साइड देख रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू बार इन गेमिंग, उसकी जगह वाइन सेलर पे जाएंगे। एंड ये जब हमने पिछली बार बॉम्ब साइड देखी थी, एक बार पहले ही देखी है राउंड नंबर 4 में जब हाई फाइव डिफेंस कर रहे थे, ये बॉम्ब साइड आई थी एंड हाई फाइव एज डिफेंडर्स एंडेड अप विनिंग। तब का सेटअप और अब के सेटअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बार अकात्सुकी के साइड में क्लैश लेके आए हैं, कोई मीरा नहीं है, केड वमा इज द सेम, म्यूट अरूनी भी है, सो या दैट्स द वन चेंज दैट वी कैन सी। एंड कोई भी लाइक वमाई की, आई मीन येगर की जगह वमा इज द मेन लाइक सोर्स ऑफ यूटिलिटी डिनायल। बट अदर देन दैट या अटैकिंग लाइनअप इज गोइंग टू स्टे द सेम। अटैकिंग लाइनअप में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा। दे नो they want to keep it same. पिछले 2 राउंड हार गए हैं but they are still confident in their abilities कि हम अभी भी they can take the match point and obviously match point एक single round away है, so at this point high five they can still not lose their hopes. They're so close to going and taking the match point, overtime secure करके potentially अपने लिए एक और वो भी secure करना, like maybe even securing the decider map because they're not out of this grand finals just yet. अभी भी काफी fight बची है उनमें and fight से वेल ये वाली फाइट देखते हैं इस राउंड में कितनी ज्यादा फाइट्स होंगी एंड कब होंगी। या विद दैट और यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक चार्ज को ट्रिक कर दिया गया है एंड दैट्स वेरी गुड। बट इन टर्म मैवरिक ने वहाँ पे होल बनाया था नीचे, स्टिल ही वाज केयरलेस इनफ टू जस्ट लीव इट लाइक दैट। और एक एक्सोथर्मिक चार्ज ट्रिक्ड अप होने की वजह से दे विल बी बैक। तो यहाँ पे आई थिंक दे माइट बी गोइंग इन फॉर अ फुल बिग गराज एग्जीक्यूट और दे माइट बी गोइंग इन फॉर हैच एग्जीक्यूट which may prove fatal because how hatches can be fatal as हमने ओरेगन में ही देखा था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अप टू द सिचुएशन ऑन व्हाट टीम्स आर देयर। तो दोनों टीम्स के सामने एक भी बॉडी अभी तक नीचे गई नहीं है। राइम्स विद बक हैज टेकन द क्लैश, he is desperate for this win, so a shield is very good in this scenario for sure। but यहाँ पे अगर इनवी अगर पीक करते हैं, I think it would be really bad। There is no need to peek if he does। तो यहाँ पे सूर्या गेट को बैश इन कर दिया गया है with that one projectile with him। जोफिया का जो proximity mine है वो आ जाएगा अंदर and it will at least stun Clash। Vortex has made his way onto the fireplace over there and there is someone on the main stairs along with Zofia, so they need to watch out if they are going to make a vertical play। अगर इनवी या अथर्व दोनों में से कोई भी या डॉक्टर यहाँ पे अर्ली फ्लैंक दे देते हैं तो शायद वर्टेक्स वुड बी हैंगिंग आउट इन अ बिट। यार राइट नाउ वही अर्ली किल कहीं से भी आ सकती है, किसी भी आ सकती है। सो बोथ अटैकर्स एंड डिफेंडर्स हैव गॉट टू मेक श्योर दैट दे डोंट गो टू रिस्की। अटैकर्स यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव उन्हें स्टार्ट होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ किया है, दे हैव सक्सेसफुली मैनेज टू ओपन द ब्रीच एंड ब्रीच के चलते हुए दे कैन ट्राई टू एक्सिक्यूट ऑन द बॉम्ब साइड, लेकिन क्लैश को निकालना दैट इज अ टफ जॉब इन ऑफ इट सेल्फ। डिफेंडर्स भी एंगल्स होल्ड कर रहे हैं। लुक एट डॉक्टर, ही डिड नॉट स्पॉट द अटैकर राइट अबव हिम। 45 seconds, everyone is ready to execute on this snowmobile garage area। Everyone is right here, the attackers। defenders पीछे से flank आ रहा है। अथर gets the opening kill onto a bit B। pressure आ रहा है defenders पे। attackers are going for it। C4 blast होगा but still everyone is holding their position, no one is moving away। diffuser dropped है। अथर्व can look at the diffuser। Vortex gets another kill। Shinra के हाथों diffuser आ जाएगा। Vortex is pushing in, he's got the frag grenade। can he get the kill onto Cade? Yes he can, but meanwhile Doctor also gets the headshot। 15 सेकंड बचे हैं। डिफ्यूजर अभी भी बाहर है and Rhymes with Buck is just protecting it with his life। there are not a lot of ways that High Five can get it। Rhymes with Buck अब अकेले बचते हैं। 2 seconds remaining। No, all thanks to Rhymes with Buck, Akatsuki win and they take match point and series point, grand finals point, सारे point। Yup, सारे पॉइंट अपने पास ले लिए यहाँ पे एंड Akatsuki is just one step back
from taking this grand finals and taking the prize pool. Oof, that would be so precious for Hi-Fi if they push it for overtime or match point. I would be damned for sure. I would be really damned. Yeah. And oh, what a bomb site it's going to be. Second floor, master, and a bedroom. So I've got to say that right now it's going to be really something special. Akatsuki, a single round, they may manage to take the win. High five, one round, and they need this round in order for them to go into overtime. And overtime ke baad, they obviously can go for whatever they would like. So a lot of pressure on either one of these teams. बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर है. एंड इस बॉम्ब साइट में, आई मीन हैविंग अ लुक एट दिस बॉम्ब साइट, हमने एक बार पहले बॉम्ब साइट देखी है इस हाफ में, एंड तब अकात्सुकी जीत गए थे, जो आई थिंक इट वाज डॉक्टर एंड वाज इट डॉक्टर एंड इनवी. हाँ, आई थिंक इट वाज डॉक्टर एंड इनवी, जो उन्होंने 2v3 क्लच किया था एंड डिफ्यूजर को डिसेबल किया था. दैट वाज रियली गुड टुवर्ड्स द एंड. एंड उससे पहले जब हमने, दैट वाज द ओनली टाइम, हमने सिर्फ एक ही बार पहले बॉम्ब साइट देखी है. सो येट अगेन अ बॉम्ब साइट वेयर हाई फाइव, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ डिफेंसेस. उन्होंने एक भी बार डिफेंड नहीं किया है, उन्हें वापस से यहाँ पर अटैक करना है, एंड दे हैव गॉट टू मेक श्योर दैट दे सर्वाइव राइट हियर. They need to survive right here. As you can see, Doctor is putting out his Surya gadget, Surya gate as we call, onto that bathroom windows because he knows कि वहाँ पे भी एक choke point होता है. अगर आप उस point को पकड़ के रखते हैं तो शायद आपका bathroom और stellarium जो stairs है वो बच जाते हैं. And early damage की बात करें तो early damage काफी हद तक सबको मिल सकता है, और यहाँ पे मिल सकता था अथर्व एंड अरुणी को, बट स्टिल वो नहीं हुआ. एंड 2 मिनट 28 सेकेंड्स अभी तक जस्ट एक्शन फेज शुरू ही हुआ है, एंड इट्स मैच पॉइंट एंड सीरीज पॉइंट फॉर अकात्सुकी टू विन आउट दिस ग्रैंड फाइनल्स. लुक्स लाइक दे वांट टू मेक इट, बट आई डोंट थिंक सो दैट हाई फाइव विल अलाउ देम सो इजीली. एंड म्यूट जैमर्स की वजह से दे आर नॉट एबल टू ड्रोन, सो म्यूट जैमर्स इज कैचिंग आउट. और रियल लाइफ म्यूट जैमर का आवाज अभी तक आ रहा है हमको. Yeah, so right now we've got to say that high five by same roam clear के लिए जा रहे हैं, and they're still looking for it. They're still looking for that roam clear. कोई भी roamers ढूंढने के लिए. And इस bomb site में usually एक horizontal extension ही होता है. roamers के नाम पे आपको lurkers मिलेंगे, not dedicated roamers जिनकी location आपको पता है. कोई भी lurkers जैसे deathmer को हम देख सकते हैं, he's lurking all the way. solarium की stair से ऊपर आ सकते हैं, main fireplace hallway से भी flank कर सकते हैं, अगर चाहे तो किसी भी मार सकते हैं. C4 यहाँ पे toss होगा. is it going to be successful? No, he blasts the C4 लेकिन successful नहीं होगा. flashbangs आएंगे bomb site में. अथर looking to protect the bomb site. अभी सिर्फ Maverick का एक वो breach हुआ है. Thermite is ready to place his charge, and is it going to be trigged? Yes, it will be trigged. So that is the takes first it out, I trigged think. electroclaw. I thought he took out the he took out the exothermic charge. He knew that Atharva was going to take it out. So Yep. So yeah, I've got to say that right now breach हो जाएगा. A minute remaining. No one has died on either one of these teams. Ready हैं ये लोग, library side से execute करने के लिए. Everything is shaping up. Taha does get tagged. Akatsuki are right here. Taha is still going for that gunfight. Is he going to shoot the barricade? No, he's going to use his breaching round. लेकिन वो भी destroy होगा. Hussein is the first casualty by the AUG of Athar. Envy still looking for the kill. Vortex replies back by getting rid of Dr. Aruni गई. Envy knows about this kill. Can he find this kill, or can Vortex get the kill? Again, very tense right here. Smoke अपना एक और canister throw करेंगे to further delay the attackers. Run out आएगा Deathmar का, and that's going to be successful. Is this the game-winning moment? Is this the championship-winning moment? We have to wait and watch. High five amidst all the chaos and the smoke canisters. Taha gets one kill. They are ready to plant the diffuser. Which we pushes Shinra. Unfortunately, team kills. Shinra is the only person surviving. 3 seconds and Envy finishes things off. Akatsuki, ladies and gentlemen, are the winners of ROG Showdown series for Rainbow Six Siege. Yep, an absolutely madman Pradarshan from Doctor and his team, or as you can see, the champions on the screens for you, and for me, the game maker for this map would be Doctor for sure. Yeah.
I mean, what a performance from these guys. Bow down to Akatsuki. So far, पूरे के पूरे showdown series में एक ही map हारे हैं. And yeah, it was an insane performance. Atharv, Suyu, unfortunately, he could not play today. Instead of him, it was a doctor playing. But no matter who it was, man, it was a team effort. Doctor, he substituted and he really proved his worth getting all of that. हमें सारे के सारे statistics देखने को मिलेंगे. लेकिन अभी के लिए Jax, अभी सिर्फ congratulations to the lads over at Akatsuki. I mean, what a performance it has been from their side. So far, it's really been amazing to witness them, how they were playing and everything they were doing correctly in order to get that. कभी कभी हाँ थोड़े बहुत over aggressive हो रहे थे, but now all of that doesn't matter. Fine detail नहीं देखते हैं, overview tournament का देखेंगे. They are the winners, ladies and gentlemen. I want their support. If you support them, obviously hearts in the Facebook stream. If you're watching on YouTube, the same, show some love for them. If you're fans of High Five as well, don't worry, High Five aren't going home empty handed. They're still taking the 25,000 rupee cash prize for their side. But yeah, runners up, it was a great effort. I mean, कितने देख लिए हमने, कितने राउंड्स देखे, सो मेनी राउंड्स. यहाँ पे भी 7-5 जीते हमने. 48 राउंड्स देखे जैक्स, 48 मैक्सिमम रेगुलेशन राउंड्स में से हमने 47 देखे यहाँ पर. That is like the limit. How much these players have been playing for the past it's been more than 4 hours. उससे ज़्यादा हो गया यहाँ पे. It's been a lot. It's been 4 hours 30 minutes that they have been playing continuous Rainbow Six Siege, and it all works at the end for Akatsuki. वो final round, it could have gone High Five's way, लेकिन एक unfortunate team kill. 2 बार हमने team kill देखी High Five की, and दोनों के दोनों बार ऐसे crucial time पे थी, and unfortunately it just didn't end up working out for their side. But what a performance. Yeah, they've been running completely maximum performance right now. जो था दिमाग में, जो था मन में, they put everything, their heart, soul into this, and they absolutely deserve to be the champions of the Showdown series. I think one thing particularly standard out that last round में जब डेथ अमर की तरफ से वो रन आउट आया, after that a flurry of frags came out, but उसके बाद गेम फिर से टर्न हुआ. Hi-Fi replied with a couple of frags, but one team kill, and again actually Smoke was the only one remaining from Akatsuki. Time was running out, 2 players बचे हुए थे, and it was really bad luck coming out from him. And actually एक team kill जो हुआ था क्लब हाउस में हुआ था, and that too on the last round. Yeah. When I think Taha team killed, I think Hussein, it was Hussein who was team killed right there. But still, it was a really, really bad luck on the side of Hi-Fi. And I'm not blaming anybody, but still, they could have done it, and they played really well. Yeah. At least, yes, of course. And actually, Akatsuki बस एक ही मैप ड्रॉप किया है यहाँ पे पूरे सीरीज में. एंड अगर बात की हाई-फाई की तो दो मैप ड्रॉप किए हैं यहाँ पे. तो एक जो प्रेशर है वो बहुत रियल होता है. एज कास्ट एज वी आल्सो नो, बेस्ट ऑफ 5 सीरीज कितनी टायरिंग होती है. एंड as the competitive player myself, ex-competitive player, I have also known series बहुत ज़्यादा लंबी होती है. That retired at age 17. Okay, retired at 17. Yes. बहुत experience. But anyways, experience की बात करें. एक्सपीरियंस की बात करें इस गेम में, व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज टू विटनेस दिस मैच. एंड मैप वाइज स्कोर बोर्ड भी हम देख सकते हैं. डॉक्टर येट अगेन 14 kills and 11 for Atharv. Invi rhymes with Buck as well. Not the best days, but you know what? At this point, it doesn't even matter. For their team, it is cause for celebration. Their team, they have done everything correctly. They are the winners. Deathmer as well. All too good. Consistent performances all around. High Five की तरफ से भी काफी consistent हमें देखने को मिल रहा है. Look at Avidvi right now, with 11 kills. You've got Vortex as well with 10. Taha ke bhi 9 hai. Taha started off slowly, but now he gets more. Shinra Hussain also there. So I've got to say, it was great performances all over from all 10 of these players. And ek bhi baar humne substitute nahi dekha. There wasn't a single substitute that happened here. Usually hota hai that in best of 5s, especially like towards the end, jaise map number 4 and map number 5 mein jate hain, decider mein agar hum jaएं, teams do call for substitutes, but not in this case. In this case, every single player that started this game ended their journey either by win or by loss. And what a journey it has been for all of them.
So I've got to say, I'm really looking forward to seeing MVPs map wise, nahi series wise bhi sab kuch hame dekhna hai. That's going to be more and more important to see that exactly like who was like the best player overall in this grand final and overall in the entire tournament as well, all throughout their matches and all that. एक rough idea हमें वो दे सकता है. But for now, looking at this scorecard, yeah, it was great. Jax, आपका क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है कि हाईफाई की साइड से बहुत बहुत अच्छा ट्राई किया, खास करके आई बिलीव इट वाज वर्टेक्स हु टुक आउट दोज इंपैक्टफुल फ्रैग्स. आई मीन आई नो व्हेन देयर वाज जब नीचे वाला डिफेंस था, बेसमेंट वाला डिफेंस था, देन वर्टेक्स के जो दो अच्छे किल्स थे उसके वजह से काफी हद तक उनके हाथ में राउंड था. बट इन द एंड डिफ्यूजर ड्रॉप हुआ था स्नोमोबाइल के बाहर, actually breach ke bahar. So that was the main thing. And map wise, player versus player profile, the highest fragging player for Akatsuki would be Doctor. तो डॉक्टर ने अपने मरीजों का बहुत अच्छा इलाज किया है यहाँ पे. एंड 14 kills with that, 8 deaths, 2 assists, KD 1.75, not very bad. बट किल्स के लिए देखे जाए, कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पे. और अविदवी is performing since the first series of this grand final. फर्स्ट मैप से लेके अभी तक कंसिस्टेंट है, 11 kills. आई थिंक इट्स द थर्ड और सेकंड टाइम ही इज गेटिंग द एमवीपी फॉर हिज टीम. 10 death, 0 assist and 1.1 KD. So yeah, a very nice try coming out from his side. और इसके बाद हम चलेंगे ओवरऑल बहुत overall MVP की तरफ, which will be moving very shortly. But let's discuss something a bit. Just tell me, like Hi-Fi के side से क्या ऐसी कमी पड़ गई, leaving the communication or leaving the gunfights? I'm just talking about time management and utility or operator wise. आई मीन ऑपरेटर वाइज तो कोई ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी. ऑपरेटर वाइज दोनों टीम्स मेटा में ही खेल रही थी. लाइक सेम ऑपरेटर कॉम्पोजिशन हर बार देखा था हमने. लाइक हाई फाइव के सारे उसमें सारे अटैक्स में टाहा वाज प्लेइंग द एंट्री फ्रैगर, ऐश, हुसैन हैड बक, थर्माइट, मैवरिक थे, इयाना थे. बट इनफ अबाउट हाई फाइव के बारे में भी बात कर लेते हैं. विल कम बैक टू दिस टॉपिक. राइट नाउ इट इज अबाउट द MVP ऑफ दिस मैप, डॉक्टर. 14 kills, 8 deaths, 2 assists. What a KDR of 1.75. Doctor, he played many operators. He played the Jackal, he played Twitch, Capitao, Aruni khela, Cade, Vamai, Mute. I mean, he played so many, just like he did in the previous maps, जहाँ पे उन्हें वापस से MVP और वो सब मिला. And still, he absolutely had a lot of domination in this case. So again, great performance from his side, I've got to say. Tons of kills. इस वाले मैप में भी, पिछले काफी मैप्स में भी हमने देखा, he was quite consistent, and that all led to the culmination of Akatsuki winning this entire ordeal for themselves. So that was all well and good. I've got to say that right now, what a performance. But yeah, high five की तरफ से I think the main thing would be like map control. And जब भी उन्हें map control नहीं मिलता था, they did seem to falter a bit. map control फिर time pressure में बन जाता था. time pressure से आपके executions fail करते थे. And I mean, we all know, अगर execution fail कर रहे हैं, then the round is also going as a fail for you. So that's the thing. In order to get map control, वो ज़्यादा time, ज़्यादा utility, बहुत ज़्यादा सब कुछ ज़ाया कर रहे थे. And that just led to this chain of consequences, जहाँ पे एक बुरी चीज जा रही है, दूसरी बुरी हो गई, then the next, and before you know it, all 5 of your players are dead in the ground, and आपको round unfortunately कोई नहीं जिता सकता. So that was one of the cases in a few rounds here and there for the side of High Five, that they didn't get off to the best of starts, and that just made like a rolling effect, a snowball effect, जहाँ पे वो unfortunately हारते गए. But overall, मेरे को सारे players का देखना है, हारे जीते doesn't matter. I want to see the statistics of all of the players in this grand finals in of itself. तो एक बार overall statistics, overall scorecard पे नजर डालते हैं. Let's bring that up on our screens right now, and we can see Doctor with a half century, 50 kills, the only player right now with 50 kills in this entire scoreboard. Avidvi, his closest match with 46 of his own, and that was also really good. I mean, Avidvi भी कल भी काफी अच्छा शाइन कर रहे थे. Today as well, what a performance from these two guys. These two guys have been performing really well. और 46 kills for a losing team is very good. लेकिन ये होता है ना एक चीज की हर बार किल्स के बेस पे या सिर्फ एक ही मेंबर मैच नहीं जीता सकता, आपको हर एक को मेहनत इक्वली करनी पड़ती है. 36 Vortex with 36, Hussain with 30, Shinra with 21, Taha with 20. So not a very bad performance for either of the team, but ये और भी अच्छा हो सकता था, because we know
we know the players from Hi-Fi, how कितने लेवल पर खेले, कैसे खेले, experience है बहुत सारा. So it feels sad to see them like this. Yeah, absolutely. High Five gave such a good effort. पिछले मैचेस में भी जब हमने कल ने सेमीफाइनल में खेलते हुए देखा था, एवरीथिंग वाज लुकिंग सो गुड फॉर देम, बट देन अगेन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था ऑब्वियसली इन द ग्रैंड फाइनल्स एज वेल, क्योंकि 75,000 के प्राइस पूल के लिए खेल रहे थे. एंड इट वाज फॉर दैट रीजन दैट High Five in this case were not the better out of the two teams. Akatsuki took the win for themselves. But yeah, all of these players, 47 rounds जैसा हमने कहा, out of like maximum 48 rounds हो सकते थे, उसमें से 47 देखे overtime को हटाकर. Oh, it was long. This was really, really long. And these players for their sides, yeah, what a performance that they gave, I have to say. It was all too great for the side of both Akatsuki and for High Five as well, looking at their statistics and all that. But स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, वापस से दो जो हमारे एमवीपी रहे हैं इस पूरे ग्रैंड फाइनल्स के, दोनों टीम से एक एक, दैट आई बिलीव यू ऑल कैन गेस इट्स गोइंग टू बी डॉक्टर अप अगेंस्ट अविडवी. सो लेट्स ब्रिंग बोथ ऑफ दोज अप एज वेल. यहाँ पर अविडवी 46 kills, 50 kills, so close. Avidvi actually had one less death when compared to Doctor, and assists bhi the. So itna close inka KDR maintain ho raha tha. And even the operators they were playing, Avidvi was more consistent with his operators. ये जो हमने शैले का मैप देखा, उन्होंने सिर्फ दो ऑपरेटर्स खेले. डिफेंस में सिर्फ स्मोक खेला, अटैक में सिर्फ थर्माइट. उससे पहले काफी ज्यादा चेंज कर रहे थे. ही प्लेड हिब्बाना, ही प्लेड एस, स्मोक, येगर, वो सब. डॉक्टर ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग हिज ऑपरेटर्स. सो इट डजंट मैटर लाइक व्हाट ऑपरेटर्स दे हैड, इट मैटर्स मोर लाइक हाउ दे वर प्लेइंग ऑल ऑफ देम, एंड ऑब्वियसली द किल्स दे वर गेटिंग, बिकॉज yeah, these guys are the top most players and the best performing players of this game. Yup, indeed, they are the best performers of this game. तो एक चीज है कि डॉक्टर is always been playing that fragging role, जो साइड में स्पेस क्रिएट करने का जो responsibility है वो उनके हाथ में. Whereas if we look at Avidvi, as you mentioned earlier, smoke और thermite, these are not fragging operators, these are actually support operators. तो वो वही बात है कि जब आपके बाकी के team members when they are falling off, so Avidvi was the only person who was stepping up along with his team sometimes, but it not हर बार ऐसे हर बार it was not कि impactful frags मिल रहे थे, ऐसे हो रहे थे. And the overall MVP for this series, you have already guessed, half century मार दिए यहाँ पे 50 kills, 33 deaths, 9 assists, 1.52 KD. So good for a person overall with those 4 maps. Yeah, I have to say, char maps, 50 kills, average of like more than more like somewhere around like 12 kills se zyada on average on every single map. That is really a consistent statistic right there. So I've got to say that, yeah, great performance overall. We talked about his operators. We talked about how he likes to play aggressive. हाँ, कुछ instances में हुए थे. But then again, सारे Akatsuki के members, they were confident in their gunfights. कभी-कभी वो confidence, overconfidence में turn होके backfire कर जाता था. But many a times it also led to them gaining some like round winning moments and, early round advantage अपने लिए create कर सकते थे. But Jax, all of this, it concludes our ROG Showdown series. What a performance from every single team. Obviously, हम सिर्फ 4 teams की बात करते रहे, जिन teams ने semi-finals खेले, आज grand finals भी खेले, but all 22 teams participating, thank you to them for participating and obviously, grinding and proving their best. And out of those 22, one ended up winning. That was Akatsuki. Yet again, congratulations and a round of applause for them. And yeah, thanks to the teams, thanks for all the viewers as well for sticking around for yesterday and today, showing your love for your favorite teams, your players, whatever were your favorite moments. Make sure you share with all your friends and you show them whatever happened. There were certainly बहुत ज़्यादा यहाँ पे moments ऐसे weird moments, headshots, flicks, I mean क्या बोले, but yeah, there was a lot of entertainment right here. And overall it was a great tournament. So thank you to ROG Showdown and thank you to Asus, ROG, Republic of Gamers themselves for organizing the Showdown series, not just for Rainbow Six, but yeah, I think Rainbow Six is one of the final few esports titles. इससे पहले we have seen so many other esports titles. We had Apex Legends, we had Counter-Strike, we had Valorant, I think we had PUBG PC as well. There were so many esports titles and all of them were really as enjoyable as this. I had tons of fun. There were so many other new teams. So hopefully, if you're a consistent ROG watcher, you've seen other esports titles and you are interested in this game of Rainbow Six, make sure you buy it on Steam, you play it with your friends as well.
And yeah, thank you for watching. Thank you for supporting your teams. Yet again, I have to say, Republic of Gamers, I mean, they do an excellent job with their peripherals. I've got to say, Asus in general as well, with their tough gaming series as well. For me personally, it's going to be their motherboards. AMD ke to hai, but their Intel motherboards are out of the line. Whether it's, graphic cards, integrated motherboards, or it's their physical ones as well, supporting up to like 44 megahertz RAM, Gen 4 PCIe slots, unlocked processors for Intel as well that they provide in graphics. So thank you for Asus Republic of Gamers and for Intel for also powering this tournament, sponsoring and allowing everyone to host and play in this tournament. But till then, Jax, this concludes. All good things must come to an end. Ye stream bhi conclude hoti hai. So thank you everyone for watching. Hope we see you next time in another ROG Showdown series. But for now, this stream will be concluding. So take care and bye bye. Got him. Let's go.